used in cellular respiration, which is carried out by proteins of the electron transport chain in mitochondria. The flow of electrons along the electron transport chain releases energy. This helps drive hydrogen ions across the inner membrane of the mitochondria. Hydrogen ions then flow down their concentration gradient through ATP synthase, driving ATP production.
Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. When a cell is ready to divide
divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Cells derive energy from the oxidation of nutrients such as glucose. The oxidation of glucose to pyruvate occurs through a series of steps called glycolysis. The energy released during these oxidation reactions is used to form adenosine triphosphate, ATP, the energy currency of the cell. The initial steps in glycolysis are the additions of two phosphates to the glucose molecule at the expense of two molecules of ATP. The result is a 6-carbon sugar diphosphate molecule and two low-energy adenosine diphosphate molecules, or ADP. This 6-carbon sugar diphosphate molecule is then split into two 3-carbon molecules. Each of the 3-carbon molecules is converted through a series of steps to pyruvate. During these reactions, electrons are transferred to the coenzyme NAD+ to form NADH, and ATP is formed. Under aerobic conditions, the pyruvate is further oxidized to yield more ATP, and under anaerobic conditions, the pyruvate is converted into lactic acid. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made.
cell maintains its shape through a cytoskeleton. With calcium elevated around the myosin binding sites on actin are exposed, allowing interaction of the myosin cross bridges with actin. Release of the myosin cross bridge from actin requires ATP. After ATP binds, it is split to ADP and inorganic phosphate. The energy derived from this reaction is utilized to caulk the cross bridge in preparation for the power stroke. The power stroke is initiated when the myosin cross bridge binds to actin. The cycle begins anew when another ATP binds to myosin. At rest, most cross bridges are in the caulked configuration, prepared to interact with actin when the tropomyosin-troponin complex is moved away from myosin binding sites on actin by calcium ions. A prominent structure within the nucleus is the nucleolus, a non-membrane-bound structure composed of proteins and nucleic acids. Ribosomal subunits are assembled in the nucleolus, and these subunits exit the nucleus through the nuclear pores. In the cytoplasm, the subunits come together with a string of genetic code called messenger RNA. The ribosomes, messenger RNA, and other components work together to produce new protein molecules.
A vacuole is a membrane-bound organelle found in both animal and plant cells. In animal cells, vacuoles are generally small and many in number. In plant cells, only one large vacuole is present. The function of vacuole in animal cell is to sequester or remove waste products. In plant cells, vacuoles have quite a lot of functions, which include storage of proteins, salts, minerals, etc., maintaining water balance, ingestion, digestion, and excretion of certain substances. Between these two types of cells. The main difference is that eukaryotic cells have a double membrane-bound nucleus, which contains the cell's DNA. Prokaryotic cells do not have a nucleus, only a nucleoid, which is the central open part of the cell where the DNA is found. Eukaryotic cells also have other large... Do you know the differences between DNA and RNA? Let's start with the name first. DNA stands for deoxyribonucleic acid, while RNA stands for ribonucleic acid. The main difference is that DNA's sugar molecule has one less oxygen atom, hence deoxy. They also differ in their structure. DNA, as you probably know, is double-stranded, while RNA is typically single-stranded. Lastly, they differ in function. DNA is your genetic blueprint. It contains all the information about how to make you. RNA copies sections of that blueprint and shares it with your cells. Frontal, parietal, temporal, and occipital. These are the four lobes of the brain, and here are their functions. The frontal lobe helps us make decisions, move our muscles, speak, and control our emotions. The parietal lobe helps us sense touch, understand space and objects, and pay attention to our surroundings. The temporal lobe helps us hear, understand language, remember things, and recognize faces. The occipital lobe helps us see, recognize objects, and understand what we see. To recap, do you know the differences between DNA and RNA? Let's start with the name first. DNA stands for deoxyribonucleic acid, while RNA stands for ribonucleic acid. The main difference is that DNA's sugar molecule has one less oxygen atom, hence deoxy. They also differ in their structure. DNA, as you probably know, is double-stranded, while RNA is typically single-stranded. Lastly, they differ in function. DNA is your genetic blueprint. It contains all the information about how to make you. RNA copies sections of that blueprint and shares it with your cells. FSC Biology Part 2 quiz. Today's topic, port and movement. The bonds of wrist are carpal, tarsals, metacarpal. Carpal. The joint found in skull are slightly movable, movable, immovable. Immovable. These cells are located in bone tissue, chondrocyte, fibroblasts, osteocytes. Osteocytes. Chondroblasts produce bone matrix, cartilage matrix, endothelium. Cartilage matrix. Gilding joints are present between carpals and tarsals, femur and innominate vertebrae. Vertebrae. How many you got right? FSC Biology Part 2 quiz. Today's topic, port and movement. The total number of ribs in the exoskeleton is 12, 24, 26. 24. Humerus forms a ball and socket joint with clavicle, scapula, sternum. Scapula. The bones of lower arm are tibia and fibula, phalanges, radius and ulna. Radius and ulna. Which one of the following makes bone hard? Minerals, proteins, carbohydrates. Minerals. Which is not a part of exoskeleton? Sternum, femur, skull. Femur. How many you got right? FSC Biology Part 2 quiz. Today's topic, homeostasis. The efferent arteriole continues into another network of capillaries called vasa recta, peritubular capillaries, efferent arteriole. Peritubular capillaries. The reabsorption of useful material is done in proximal tubule, distal tubule, loop of Henle.
The uric acid kidney stones incidence is 70%, 15%, 10%. The non-surgical way to remove kidney stones is lithotripsy, kidney transplant, dialysis. Lithotripsy. The renal failure is also called hemodialysis, uremia, hypercalcemia. Uremia. How many you got right? Used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying the system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living.
survive without oxygen has been discovered by scientists. The 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐳𝐈, a tiny jellyfish-like parasite that infects salmon, has evolved to live entirely without oxygen dependency, marking a significant shift in our comprehension of multicellular life. This organism, belonging to the same phylum as corals and anemones, has lost its mitochondrial genome, the cellular component responsible for oxygen-based energy production in most life forms. The parasite's unique adaptation allows it to thrive in the oxygen-poor environment of its host's tissue by simplifying its genetic makeup and developing alternative energy-producing mechanisms. Researchers used advanced sequencing and microscopy techniques to uncover this extraordinary evolutionary feat. This discovery challenges our understanding of what it means to be an animal and opens up new possibilities in the search for extraterrestrial life. It may also lead to the identification of more oxygen-free animals and potentially even stranger modes of existence. While the exact mechanisms by which 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐳𝐈 produces energy remain unclear, scientists speculate that it may absorb pre-processed nutrients from its host. This remarkable organism not only challenges our preconceptions about animal life, but also showcases the incredible adaptability of living beings in extreme conditions, potentially informing our search for life in oxygen-poor environments beyond Earth. Wolf spiders are remarkable mothers. Unlike most spiders that protect their eggs with silk coverings, female wolf spiders carry their egg sacs wherever they go. Upon hatching, the baby spiders instinctively climb onto their mother's back, where they remain for several weeks until they can survive on their own. During this period, if any spiderling falls off, the mother waits for it to climb back. If a female wolf spider loses her egg sac, she will desperately search for it, and might even adopt an unrelated egg sac due to its remarkable maternal drive. Wolf spiders are solitary parents as the males leave after mating, often to avoid being eaten by the female. Unlike some other spider species that eat their mothers, wolf spider babies do not harm their mother. Instead, they disperse once they are self-sufficient. A common mouth bacteria called Fusobacterium has been found to kill cancer cells in the head and neck. This discovery has stunned scientists and offers new hope for treating head and neck squamous cell carcinoma, which has seen little advancement in treatment options in recent years. The team analyzed data from 155 head and neck cancer patients and found that those with higher levels of Fusobacterium had a significantly better prognosis, with a 65% increase in survival chances. Laboratory experiments showed that when the bacteria were left in a petri dish with cancer cells for a few days, 70 to 90% of the cancer disappeared, as the bacteria released toxic molecules that effectively destroyed the tumor. The researchers expressed their amazement at the bacteria's ability to quickly kill cancer cells, even in very low quantities. Initially, they were expecting Fusobacterium to accelerate cancer growth in the head and neck, as it does in the bowels, but instead discovered its potential as a groundbreaking cure. This unexpected finding has opened up new avenues for exploring the use of bacteria in cancer treatment, suggesting that bacteria supporting cancer growth in one area of the body might prove beneficial in treating cancer in another. While the research is still in its early stages, the team is eager to continue studying how these findings could impact patient outcomes for head and neck cancer and potentially other types of cancer. Microplastics detected in artery plaques have been linked to an increased risk of cardiovascular events. In the study, researchers examined plaques removed from the clogged arteries of patients undergoing a procedure to prevent strokes and found that nearly 60% contained microplastics. Patients with these microplastics in their plaques were 4.5 times more likely to experience a stroke, heart attack, or death within 34 months compared to those without detectable microplastics. The researchers observed plastic fragments, including polyethylene and PVC, within immune cells and fatty deposits in the artery walls. While the study cannot conclusively prove that microplastics directly cause these cardiovascular events, the findings raise significant concerns about their potential impact on heart health. This is particularly worrisome considering the widespread presence of microplastics in our environment and their ability to infiltrate various organs. Microplastics, tiny plastic particles smaller than 5 millimeters, can enter the human body through various routes, including ingestion, inhalation,
and even skin contact. These particles have been found in numerous food sources, drinking water, and the air we breathe. Once inside the body, they can travel through the bloodstream and accumulate in organs, including the heart and blood vessels. The presence of microplastics in artery plaques suggests that they may contribute to the development and progression of atherosclerosis, a condition characterized by the buildup of fats, cholesterol, and other substances in the artery wall. Researchers developed a new type of antibiotic called a macrolone that could revolutionize the fight against antibiotic resistance. The researchers estimate that this new antibiotic would make it 100 million times harder for bacteria to evolve resistance compared to traditional antibiotics. This innovative drug combines the mechanisms of two existing antibiotic classes, macrolides and quinolones, to simultaneously target two essential functions in bacteria: protein synthesis and DNA synthesis. This dual-action approach makes it incredibly difficult for bacteria to develop resistance, as it would require simultaneous mutations in both target areas. The researchers achieved this by creating macrolones that bind tightly to bacterial ribosomes, preventing protein synthesis, and also interfere with DNA replication, hindering bacterial growth. One macrolone, named MCX-128, showed exceptional promise by effectively inhibiting both functions at its lowest effective dose. This dual-action capability makes it nearly impossible for bacteria to develop resistance through simple genetic mutations. This breakthrough discovery offers renewed hope in the ongoing battle against antibiotic-resistant superbugs. The rise in antibiotic resistance has become a significant global health concern, with more bacterial infections becoming harder to treat due to the diminishing effectiveness of existing antibiotics. This alarming trend is driven by overuse and misuse of antibiotics, leading to the emergence of drug-resistant strains that pose a serious threat to public health. Wildfires can transport potentially harmful microorganisms across long distances in wildfire smoke. Scientists discovered that the massive smoke plumes generated by these fires can carry living bacteria and fungi far beyond the fire's immediate vicinity. This phenomenon, known as pyroaerobiology, is raising concerns about the spread of pathogens and their potential impact on human health and ecosystems. Of particular concern are fungi, which can cause slow-developing internal infections that are difficult to diagnose and treat. These include valley fever, a serious respiratory illness caused by fungi found in dry western soils. Studies have shown that smoke plumes can contain a diverse array of viable microbes, with the composition varying based on factors such as fire location, intensity, and fuel type. This microbial cargo can travel hundreds of miles, potentially introducing new pathogens to areas far from the fire's origin. The health implications of this phenomenon are significant, especially for vulnerable populations such as immunocompromised individuals and firefighters on the front lines. Researchers have already documented increased fungal infections in hospital patients following major wildfires, and there's growing evidence linking smoke exposure to various health problems. Beyond human health concerns, the long-distance transport of microorganisms via wildfire smoke could have profound ecological consequences. As these organisms are deposited in new environments, they may compete with native species for resources, potentially disrupting local ecosystems and contributing to biodiversity loss. Scientists engineered a virus that can eliminate cancer cells. The researchers utilized a weakened version of the lymphocytic choriomeningitis virus. This innovative method was effective in eliminating tumors and enhancing survival rates in mice, even those with compromised immune systems. Apart from destroying existing tumors, the attenuated virus has demonstrated a remarkable ability in strengthening the immune system, enhancing its capacity to prevent the formation of new tumors in the future. This remarkable phenomenon, known as trained immunity, shows the potential of this therapeutic approach to not only treat cancer, but also provide long-term protection against its recurrence. This discovery opens up new possibilities for safer and more effective cancer treatment, potentially benefiting a wider range of patients. The research team is now focusing on testing this therapy in dogs with sarcoma, with the ultimate goal of conducting human clinical trials. Engineered viruses offer a promising avenue in the battle against cancer. Their unique ability to selectively target and destroy cancer cells while leaving healthy cells unharmed makes them a powerful tool. They can also stimulate the immune system to recognize and combat cancer cells more effectively, providing both immediate treatment and long-term protection against recurrence. This dual action, combined with the potential for customization and relatively low toxicity compared to traditional cancer treatments, makes engineered viruses a compelling and innovative approach in the ongoing quest for more effective cancer therapies.
Spider silk is stronger than steel and tougher than Kevlar. A thread in a spider web is just 0.003 millimeters across, which is more than 20 times thinner than human hair. So, what makes spider silk so strong? A single spider silk strand contains millions of tightly aligned protein molecules. Each strand is made up of thousands of tiny nanostrands that work together in harmony to create a material that's nearly indestructible. With all of these amazing properties combined, spider silk's tensile strength is off the charts. Breaking a strand would require a lot of force. Some scientists speculate that if we could reproduce dragline silk that's 18.6 miles long and as thick as a pencil, we could create a material strong enough to intercept a plane mid-flight. Not all spider silk is the same, and some types of silk are stronger than others. For example, Darwin's bark spider produces silk that is considered to be the strongest of any known biological material. The silk produced by this spider is more than 10 times stronger than Kevlar, which is a high-strength synthetic fiber used in body armor and other applications. Scientists are working to create a synthetic version of spider silk. A team of researchers at Cambridge University has managed to weave a web of lab-made fibers created from a material called a hydrogel, which is 98% water and 2% silica and cellulose. The potential applications for this new wonder material are vast. Imagine parachutes that are more resistant to wear and tear, or bulletproof jackets that are even tougher than the current ones, or helmets that can withstand even the most brutal impacts. The possibilities are endless. An octopus mother can guard its eggs for 4.5 years. Scientists discovered a deep-sea octopus called Granelodon boreopacifica, which guards its eggs longer than any other animal on the planet. After laying eggs, female octopuses do nothing but protect and take care of their eggs. Their brains shut down, except for the optic glands, which remain functional. Without these glands, female octopuses would abandon their eggs and resume feeding. The mothers then remain stationary for months to years, depending on the species of octopus. They show no interest in food, even when it's offered to them. Their skin color turns ghostly white from the lack of food. Biologists believe that this behavior is meant to protect their eggs from predators. Octopus mothers are known to lay eggs only once in their lives. The mothers usually die soon after the eggs hatch, which ensures that the mother won't consume her young. The world's first octopus farm is planned to be built in Spain's Canary Islands, and it's expected to raise around 1 million octopuses a year for food consumption. However, scientists have expressed deep concerns over the plan to build this farm, citing worries over the welfare of the creatures, which are well known for their high level of intelligence. Around 350,000 tons of octopus are caught each year, which is over 10 times the number of octopuses caught in 1950, and this increase in fishing activity is putting significant pressure on octopus populations around the world. A recent study found strong evidence that octopuses feel and respond to pain in a similar way to mammals. Despite having a fundamentally different nervous system, cephalopods have shown characteristics indicating they can experience negative emotional states. These experiences can lead to lasting changes that affect them for a long term. When a bee is exposed to pesticides, it can experience a range of detrimental effects that impact both individual bees and entire colonies. Commonly used pesticides, particularly neonicotinoids, can interfere with a bee's nervous system, affecting its ability to navigate, forage, and communicate with other bees. Even at sublethal doses, pesticides can impair a bee's learning and memory, reducing its efficiency in collecting pollen and nectar. This not only affects the individual bee's survival, but also the overall health and productivity of the colony. Exposure can occur through direct contact with pesticide-treated plants, contaminated pollen and nectar, or pesticide drift in the air. In severe cases, pesticides can cause immediate death, while chronic exposure may lead to long-term health issues, reduced lifespan, and weakened immune systems, making bees more susceptible to diseases and parasites. Pesticides can also affect bee reproduction, potentially causing queens to lay fewer eggs or produce less viable offspring. The impact extends beyond individual bees to the entire ecosystem, as bees play a crucial role in pollination. Colony collapse disorder, a phenomenon where worker bees abruptly disappear from a hive, has been linked to pesticide exposure among other factors. Pesticides can accumulate in beehives, contaminating honey and wax, which may have further consequences for bee health and potentially affect humans consuming these products. The severity of these effects depends on factors such as the type and concentration of the pesticide, duration of exposure, and the bee's life stage.
Scientists successfully transferred a memory from one snail to another. This breakthrough was accomplished by repeatedly exposing one snail to electric shocks to create a heightened reflex response. RNA extracted from this trained snail was then injected into an untrained snail, which subsequently exhibited the same enhanced reflex. In other words, the untrained snails were able to remember something that never happened to them. This experiment showed simple nervous systems, making them valuable models for understanding fundamental memory mechanisms that are evolutionarily relevant to humans. While far from the realms of memory transplantation depicted in popular culture, this discovery carries significant implications for human health. By identifying the RNA responsible for memory alterations, scientists could potentially develop novel treatments for memory disorders like dementia, Alzheimer's, and PTSD. This research challenges the prevailing view that memory is solely stored in synaptic connections, opening new avenues for understanding the complexities of memory formation and storage within the nervous system. While the idea of direct memory transfer through genes remains largely unproven, recent research suggests a potential link through RNA. Some studies have shown that RNA molecules can transfer certain learned behaviors between organisms, raising the possibility that RNA might play a role in the transmission of ancestral experiences. However, the exact mechanisms and extent of RNA's involvement in memory and inheritance remain a subject of ongoing research and scientific inquiry. Scorpion venom is the most expensive liquid on Earth, costing more than $38 million per gallon. It's even more expensive than Thailand's king cobra venom, which costs around $153,000 a gallon. Scorpion venom contains 5 million unstudied compounds. This is why it's called the cocktail of bioactive compounds. Scorpion venom is useful in various medical applications. Proteins from its toxin showed antimicrobial, antimalarial, and anti-cancer activity. Researchers are also looking into using scorpion venom as a painkiller. A peptide from scorpion venom can suppress immune responses, allowing it to be used in the treatment of autoimmune diseases. Unfortunately, the scorpion produces just 2 milligrams of venom at a time, so it's necessary to make synthetic versions of these venoms. Otherwise, there simply won't be enough to lower the cost, and no one will be able to afford the drugs. Honeybee venom can rapidly kill aggressive breast cancer cells. Scientists found that the venom was extremely effective in reducing tumor growth in animal models. The venom managed to kill cancer cells without harming normal healthy cells. Scientists discovered that bee venom contains a cancer-killing component called melittin. The researchers managed to reproduce the melittin synthetically in the lab and found it had most of the anti-cancer effects. Melittin was able to kill cancer cells within just 60 minutes. This component enters the surface of the cell or the plasma membrane and forms holes or pores, causing the cell to die. Scientists also found that melittin was jamming the main messaging or signaling pathways that allow cancer cells to communicate with each other in order to replicate and grow. When combined with chemotherapy drugs, melittin was found to be more effective at killing tumors. The holes that were created by melittin on the surface of cancer cells allowed chemotherapy drugs to enter the target cells. As a result, it worked very efficiently in reducing tumor growth in mice. Honey never spoils. It can last thousands of years and still be edible. Honey has a very low water content, typically less than 18%. This makes it difficult for bacteria and other microorganisms to grow, as they require a certain amount of water to survive. Honey is high in sugar, which also inhibits the growth of microorganisms. The high sugar content creates an environment that is too concentrated for most bacteria and other microorganisms to survive. Honey is naturally acidic, with a pH range of 3.2 to 4.5. This acidity also helps to inhibit the growth of microorganisms. Bees add enzymes to honey as they process it, which help to break down the sugars and create hydrogen peroxide. This hydrogen peroxide also acts as a natural preservative, inhibiting the growth of bacteria and other microorganisms. It is important to note that honey can eventually spoil if it is exposed to moisture or other contaminants, so it is important to store it properly in a sealed container in a cool, dry place.
Quantum entanglement within the brain might generate our consciousness, according to a new study. While the concept may seem far-fetched at first, researchers at Shanghai University have developed mathematical models suggesting that certain fatty structures surrounding nerve cells could create an environment conducive to the entanglement of photons. This entanglement, in turn, could potentially explain the synchronized activity of millions of neurons that are believed to be central to consciousness. The study highlights the role of myelin, a fatty material that insulates nerve cell axons. The researchers propose that myelin sheaths could act as cylindrical cavities, facilitating the spontaneous emission of photons from vibrational modes and generating a significant number of entangled photon pairs. These entangled photons move through the brain's complex biochemical environment and might then drive correlations between processes crucial for the brain's synchronization and information processing capabilities. The idea of quantum entanglement playing a role in consciousness is not entirely new. Renowned physicist Roger Penrose and anesthesiologist Stuart Hameroff first put forth this controversial concept in the 1990s with their orchestrated objective reduction model of consciousness. While this model has faced its share of criticism, the new study offers fresh evidence to support the notion that quantum phenomena might indeed be at play within the brain. Further research is needed to fully understand the role of quantum entanglement in our brain's processing power. This is how some mosquitoes lay their eggs. The eggs are laid together on the surface of stagnant water in an oval-shaped raft. These eggs are highly resilient, capable of surviving dry conditions for months until they come into contact with water, triggering the hatching process. Egg rafts usually consist of 150 to 300 eggs and float on the water surface until the larvae hatch and emerge. Once laid, the eggs require anywhere from a few days to several weeks to hatch, depending on environmental conditions such as temperature and humidity. The eggs hatch into larvae, often called wrigglers due to their jerky movements in the water as they feed on organic debris and microorganisms. The larvae continue their development underwater, undergoing several stages of growth until they transform into adult mosquitoes. Luckily for us, not all of them make it into the adult stage. Some of them are eaten by dragonflies, fish, turtles, and frogs. Ticks, which can transmit Lyme disease, have evolved specialized mouths covered in hooks that allow them to dig into your skin and stay attached for days, feeding on your blood. Their two sets of hooked hands pull the skin aside, allowing the tick to insert a long, stubby mouth part covered in backward-facing hooks, anchoring them securely. Ticks generally need 24 to 48 hours of feeding before they can transmit infections like Lyme disease, making early removal essential. If a tick ingests a blood-borne pathogen during one of these meals, it can transfer the infection to a new host when feeding in the next stage of its life cycle. They require blood meals to progress through their life stages, from egg to larva, nymph, and finally adult. Consuming strawberries daily for 4 weeks could reduce the risk of cardiovascular disease by up to 8 times, according to a new study. The study revealed that adding just 1 cup of strawberries to one's daily diet could yield noticeable improvements in cardiovascular health. Strawberries are not only popular for their taste, but also pack a nutritional punch. A single serving of 8 strawberries provides the daily recommended value of vitamin C and offers a variety of other nutrients and beneficial compounds. Strawberries can help lower cholesterol and triglyceride levels, both of which are major contributors to heart disease. Their fiber content aids in maintaining healthy blood sugar levels, making them a suitable choice for individuals with diabetes or those aiming to manage their blood sugar. Previous studies have shown that regular consumption of strawberries can enhance brain function, potentially slowing cognitive decline and reducing the risk of Alzheimer's disease. Their high vitamin C content strengthens the immune system by increasing the production of T cells and B cells, which are crucial for fighting infections. Strawberries are abundant in antioxidants, particularly anthocyanin, which gives them their vibrant red color. These antioxidants protect cells from damage caused by harmful free radicals, contributing to overall health and potentially slowing down the aging process.
Wildfires can transport potentially harmful microorganisms across long distances in wildfire smoke. Scientists discovered that the massive smoke plumes generated by these fires can carry living bacteria and fungi far beyond the fire's immediate vicinity. This phenomenon, known as pyroaerobiology, is raising concerns about the spread of pathogens and their potential impact on human health and ecosystems. Of particular concern are fungi, which can cause slow-developing internal infections that are difficult to diagnose and treat. These include valley fever, a serious respiratory illness caused by fungi found in dry western soils. Studies have shown that smoke plumes can contain a diverse array of viable microbes, with the composition varying based on factors such as fire location, intensity, and fuel type. This microbial cargo can travel hundreds of miles, potentially introducing new pathogens to areas far from the fire's origin. The health implications of this phenomenon are significant, especially for vulnerable populations such as immunocompromised individuals and firefighters on the front lines. Researchers have already documented increased fungal infections in hospital patients following major wildfires, and there's growing evidence linking smoke exposure to various health problems. Beyond human health concerns, the long-distance transport of microorganisms via wildfire smoke could have profound ecological consequences. As these organisms are deposited in new environments, they may compete with native species for resources, potentially disrupting local ecosystems and contributing to biodiversity loss. How much breathable oxygen is available on Earth? Is it possible to run out of breathable air if we produce too much carbon dioxide? Despite the increasing use of renewable energy, the demand for fossil fuels keeps growing as humanity consumes more and more. When these fossil fuels are burned, molecular oxygen is utilized to break carbon-hydrogen bonds and release energy through a process known as combustion. As a result of this reaction, carbon dioxide is formed, reducing the amount of oxygen in the atmosphere. However, despite this reduction, there is no immediate risk of depleting the atmospheric oxygen supply. Nitrogen makes up the majority of the gases in the atmosphere, accounting for about 78%, while molecular oxygen, the type essential for breathing, represents approximately 20.94%. Other gases, such as water vapor, argon, and hydrogen, make up the remaining 1%, with CO2 constituting just 0.04%. Given the relatively abundant presence of oxygen, experts assure that carbon emissions are not expected to diminish our oxygen supply. Even with the combustion of an additional 1,000 billion tons of fossil fuels, the oxygen in the atmosphere would only decrease to 20.88%. The environmental repercussions of such actions, including increased particulate pollution and higher temperatures, would far outweigh the concerns related to oxygen depletion. Some tumors can grow their own teeth, eyes, and hairs. These tumors are known as teratoma, and they are derived from germ cells that can develop into any type of body tissue. As a result, these tumors can contain a variety of different tissue types, including hair, muscle, bone, and even teeth and eyes. Teeth found in teratomas can be fully formed, resembling normal teeth in structure, though they are often malformed. The eye tissue found in some teratomas can include some deformed basic structures like retina, iris, or cornea, though these are typically not functional. The occurrence of such complex structures within a tumor reflects the extraordinary potential of germ cells. In normal embryonic development, these cells differentiate into various specialized cells that make up the human body. However, in teratomas, this differentiation process becomes disordered, leading to the formation of various tissue types in a single tumor. The presence of teeth and eye tissue can present challenges in terms of treatment and management of these tumors. Teratomas can be benign or malignant and may occur in various parts of the body, including the ovaries, testes, and rarely other areas like the brain. Their treatment depends on the location, size, and stage of the tumor and may involve surgical removal and, in some cases, chemotherapy or radiation therapy. There are two types of teratomas: mature teratomas, which are generally benign and most common during reproductive years, and immature teratoma, which are cancerous and predominantly found in children. An organ believed to be useless by doctors might actually fight cancer. The thymus gland, which is a small fatty organ behind the sternum, is often removed by doctors due to the assumption of its useless in adult life. However, a recent study found that adults who had their thymus removed faced an increased risk of death from various causes and were more likely to develop cancer. While the study's observational nature doesn't confirm the thymus removal as the direct cause of these risks, it raises concern
concerns about the gland's importance. In children, the thymus is essential for immune system development, particularly in generating T cells which fight germs and disease. Children who had their thymus removed show weaker responses to vaccines. Although the thymus reduces its T cell production and shrinks by puberty, its removal during cardiothoracic surgery for conditions like heart disease or thymus cancer was previously considered harmless. According to the study, patients who had their thymus removed were nearly twice as likely to die within 5 years and had a doubled risk of developing cancer, often more aggressive and recurring compared to those who retained their thymus. The exact reasons for these associations are unclear, but researchers speculate that thymus removal disrupts the adult immune system's functioning. Patients who had their thymus gland removed also showed less diverse T cell receptors, potentially contributing to cancer or autoimmune diseases post-surgery. The study challenges the notion that the thymus gland isn't necessary for long-term health. Colon cancer is affecting more younger men and women than ever before. A recent report reveals a rise in colorectal cancer among younger adults, particularly those in their 30s and 40s. Previously, the disease mostly affected the elderly. However, it has recently emerged as the deadliest cancer for men under 50 and the second deadliest for women in the same age bracket, surpassing previous leading causes. While the percentage of new cancer cases in those 65 and older has slightly decreased, diagnoses in adults aged 50 to 64 have risen. It's still unclear why this is happening, but some researchers attribute it to obesity rates, sedentary lifestyles, and poor diets. Colon or colorectal cancer is a type of cancer that begins in the large intestine, which is the final part of the digestive tract. The disease usually starts as small, non-cancerous clumps of cells known as polyps that form inside the colon. Over time, some of these polyps can transform into colon cancers. Polyps are often small and produce few symptoms, which is why doctors recommend regular screening tests to detect and remove them before they develop into cancer. Many individuals with colon cancer do not experience symptoms in the early stages. When symptoms do occur, they can include a persistent change in bowel habits, such as diarrhea or constipation, a change in stool consistency, rectal bleeding, abdominal discomfort, fatigue, and unexplained weight loss. Early detection and treatment of colorectal cancer can prevent death. Cancer cells can evade chemotherapy by going dormant, and the cells would enter a state of active hibernation that enables them to survive the stress induced by aggressive treatments. This is why some people experience cancer more than once. For years, cancer researchers have studied how tumors are able to return after their complete disappearance by chemotherapy. One theory suggests that this happens because not all cells within a tumor are the same at the genetic level. This is called tumor heterogeneity, which involves a small subset of cells that are able to resist treatment and begin growing again. Another theory suggests that tumor stem cells regenerate a tumor after chemotherapy has been given. The study was conducted in both mouse models and organoids made from patient samples of acute myeloid leukemia tumors, also known as AML. In the study, the researchers found that when AML cells were exposed to chemotherapy, a group of the cells went into a state of hibernation. They looked similar to cells that have undergone an injury or in an inflammatory state and need to promote wound healing with the help of immune cells. Further research revealed that this inflammatory state was caused by a protein called ATR. This suggests that blocking ATR could prevent cancer cells from adopting this condition. Researchers tested this hypothesis in the lab. They confirmed that giving leukemia cells an ATR inhibitor before chemotherapy prevented them from entering hibernation. This allows chemotherapy to kill all the cells. Fasting promotes your stem cells to fix damaged old immune systems. One of the side effects of chemotherapy is damaging the immune system. However, a recent study showed that cycles of prolonged fasting not only protect against chemotherapy immunosuppression, but also induce immune system regeneration. Prolonged fasting can shift stem cells from a dormant state to a state of self-renewal. When you fast for a long period of time, your body attempts to save energy. One of the ways your body saves energy during fasting is by recycling white blood cells that are not needed, especially those that could be damaged. As a result, your stem cells are activated to produce new, healthier white blood cells, which replace the old or damaged ones. White blood cells are part of the immune system and play a vital role in fighting infections and various illnesses. Researchers are now exploring the possibility of using fasting to prevent cancer and enhance chemotherapy effectiveness.
diabetes. Fasting can reduce glucose levels in the blood, which starves cancer cells and makes it harder for them to grow. This makes them more vulnerable to chemotherapy. It also reduces the levels of insulin growth factor, IGF-1, which is a biomarker linked with increased cancer risk. Apart from that, it enhances autophagy, a cellular cleaning process that helps your body get rid of damaged or unnecessary components to maintain cellular health and function. Fasting can improve blood sugar control and reduce insulin resistance, thus lowering the risk of type 2 diabetes and metabolic syndrome by enhancing insulin sensitivity and stabilizing blood sugar levels. It is also associated with fighting chronic inflammation, a key factor in several diseases, by decreasing inflammation markers like C-reactive protein, which could contribute to better overall health and reduced heart disease risk. Fasting has been shown to positively affect blood pressure, triglycerides, and cholesterol levels, thereby potentially reducing the risk of coronary heart disease. Animal studies suggest fasting may boost brain function, enhance cognitive performance, and offer protection against neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's. Though more human studies are needed to confirm these effects, weight loss is another significant benefit, with fasting leading to reduced body weight and fat by limiting calorie intake and boosting metabolism. This reduces the risk of obesity-related illnesses such as coronary heart disease, stroke, and cardiovascular death and diabetes. On top of that, fasting has been found to increase human growth hormone levels, which are vital for growth, metabolism, weight loss, and muscle strength. It also plays a role in extending longevity and improving gut microbiome diversity, potentially delaying aging and disease onset. Various fasting methods exist, offering flexibility to fit different lifestyles, from water and juice fasts to intermittent and partial fasting. However, fasting may not be suitable for everyone, especially those with underlying health conditions like diabetes, and consulting with a healthcare provider is recommended to ensure safety and maximize health benefits. Scientists have cracked the mystery of the spiral honeycombs built by tropical stingless bees. Bees from the genus Tetragonula construct intricate structures from hexagonal beeswax cells, which can reach up to 20 levels high. But how do these diligent bees create such intricate structures without any blueprints? It turns out they are mathematical geniuses, and their building prowess can be explained by a fascinating connection to crystals. A recent study revealed that the same mathematical model governing crystal growth also governs the formation of these awe-inspiring hives. Each little worker bee unwittingly follows a set of simple rules, transforming the hive into an artistic masterpiece. Like skilled engineers, they utilize hexagonal building blocks, the most efficient use of wax, to fit snugly together. Computer modeling showed that these bees' natural instincts mimic the same patterns they create in nature. Curiously, the spiral pattern can also be found in mother-of-pearl mollusks, pointing to an unexpected similarity in nature's design. The bees' exquisite architectural abilities may be rooted in their genetic code, shaping their unique hive patterns among the 31 species of Tetragonula bees found in Oceania. While the precise purpose of the spiral shape remains unknown, speculations range from improved airflow in the hive to assisting the queen bee in navigating her domain. The Xerces blue butterfly was the first insect species in the U.S. to go extinct due to human activities. The species disappeared in 1941, only a century after being described by biologists, because of livestock grazing and urban development that destroyed its habitat. For years, scientists debated whether the Xerces blue was a separate species or just a population of the silvery blue butterfly. Recently, a group of researchers settled the debate using genetic techniques and a 93-year-old museum specimen from the Field Museum in Chicago. They confirmed that the Xerces blue was indeed its own distinct species and the first insect erased by humans. The study highlights the importance of collecting and safeguarding specimens for future research. Even though the butterfly is extinct, genetic analysis was possible from the pinned specimen in the museum collection. While the confirmation of the butterfly's distinction is significant, some researchers are now contemplating the idea of resurrecting the Xerces blue through cloning and genetic tools. However, researchers believe it is crucial to focus on conserving and protecting existing species rather than attempting to bring back extinct ones. The story of the Xerces blue serves as a poignant reminder of the impact of human actions on biodiversity and the importance of preserving and safeguarding the natural world. Dogs can tell the difference between human languages and know if you are talking nonsense. It is possible that tens of thousands of years of living with humans have made dogs better language listeners. A recent study has found that dog brains can detect speech and show different activity patterns to familiar and unfamiliar
unfamiliar languages. Researchers used brain imaging to demonstrate for the first time that a non-human brain can differentiate two languages. For the study, 18 dogs were trained to lay motionless in a brain scanner. Researchers played them speech excerpts from a story in Spanish and Hungarian. All dogs had heard only one of the two languages from their owners. This allowed researchers to compare a highly familiar language to a completely unfamiliar one. They also made the dogs listen to scrambled versions of these excerpts, which sound completely unnatural. This allowed them to test whether dogs detect the difference between speech and non-speech at all. The team compared brain responses to speech and non-speech and found distinct activity patterns in dogs' primary auditory cortex. The mechanism underlying this speech detection ability may be different from speech sensitivity in humans. Human brains are specially tuned to speech, while dog brains may simply detect the naturalness of the sound. Interestingly, the older the dog was, the better their brain distinguished between the familiar and the unfamiliar language.
What is the main function of cerebellum? The correct option is balancing. Which part of the brain control body temperature and hunger? The correct option is hypothalamus. What is the purpose of alveoli in the lung? The correct option is gaseous exchange. What is the chemical name for the table salt? The correct option is sodium chloride. Which blood type is considered the universal? The correct option is O negative. What is the smallest unit of time? Correct option is A. Only good biology student get pipe out of pipe. Are you one of them? Try to answer this question and write your score in comment section. What is the pH value range of correct option is D. Which one is the longest bone in human? Correct option is fluid fixation process. Option is it. How many chromosomes are found in pencil? The option is 168. What is the rarest human blood type? The correct option is AB negative. What is known as the powerhouse of the cell? The correct option is mitochondria. What is the most common element in human body? The correct option is oxygen. What is the study of what life form? The correct option is plant. What is the human body largest organ? The correct option is A. Researchers developed a new type of antibiotic called a macrolone that could revolutionize the fight against antibiotic resistance. The researchers estimate that this new antibiotic would make it 100 million times harder for bacteria to evolve resistance compared to traditional antibiotics. This innovative drug combines the mechanisms of two existing antibiotic classes, macrolides and quinolones, to simultaneously target two essential functions in bacteria, protein synthesis and DNA synthesis. This dual-action approach makes it incredibly difficult for bacteria to develop resistance, as it would require simultaneous mutations in both target areas. The researchers achieved this by creating macrolones that bind tightly to bacterial ribosomes, preventing protein synthesis, and also interfere with DNA replication, hindering bacterial growth. One macrolone, named MCX-128, showed exceptional promise by effectively inhibiting both functions at its lowest effective dose. This dual-action capability makes
it nearly impossible for bacteria to develop resistance through simple genetic mutations. This breakthrough discovery offers renewed hope in the ongoing battle against antibiotic-resistant superbugs. The rise in antibiotic resistance has become a significant global health concern, with more bacterial infections becoming harder to treat due to the diminishing effectiveness of existing antibiotics. This alarming trend is driven by overuse and misuse of antibiotics, leading to the emergence of drug-resistant strains that pose a serious threat to public health.
Have you ever wondered how your brain sends signals throughout your body? It all comes down to neurons. Today we're going to break down the structure of a neuron and how it works. Neurons are specialized cells that transmit information through electrical and chemical signals. They have three main parts: the cell body, the dendrites, and the axon. The cell body, also called the soma, is the neuron's control center. It contains the nucleus, which holds the cell's DNA, and is responsible for maintaining the health and function of the neuron. Extending from the cell body are dendrites, branch-like structures that receive signals from other neurons. Think of them as the neuron's antennae picking up incoming messages and passing them to the cell body. On the other side of the cell body is the axon, a long thread-like structure that carries electrical signals away from the neuron to other cells. At the end of the axon are axon terminals, which release chemicals called neurotransmitters to communicate with neighboring neurons, muscles, or glands. The gap between neurons is called the synapse, where electrical impulses are converted into chemical signals that travel from one neuron to the next. So in short, the neuron structure is perfectly designed to receive, process, and send signals, making it the fundamental building block of the nervous system. Got more questions about the brain or other parts of the body? Drop a comment. Ever wonder why plants are green? It's all thanks to chlorophyll. Today, let's explore the role of chlorophyll in plants and why it's so important. Chlorophyll is a green pigment found in the chloroplasts of plant cells. Its main job, capturing light energy from the sun. But what makes this so crucial is its role in photosynthesis, the process by which plants make their own food. When sunlight hits the leaves of a plant, chlorophyll absorbs the light, specifically the blue and red wavelengths. It doesn't absorb much green light, which is why plants appear green to us. Once chlorophyll absorbs this energy, it powers the next steps of photosynthesis. In the first stage, chlorophyll uses the sun's energy to split water molecules into oxygen and hydrogen. The oxygen is released into the air, while the hydrogen is used in the next phase of photosynthesis. In the second stage, the plant uses that stored energy to convert carbon dioxide from the air into glucose, which is food for the plant. In short, without chlorophyll, plants wouldn't be able to create the energy they need to grow, and life on Earth would look very different. Got more questions about plant life or other scientific wonders? Drop a comment and I'll explain it all. How duodenum works. The duodenum is the first part of the small intestine that receives chyme from the stomach and mixes it with bile and pancreatic juices for digestion. It neutralizes stomach acid and begins the absorption of nutrients. Additionally, it secretes hormones that regulate digestive processes and gastric emptying. Science Hub. How ileum works. The ileum is the final section of the small intestine, connecting to the cecum of the large intestine. It absorbs remaining nutrients, particularly
Vitamin B12 and bile salts, not absorbed in earlier sections of the intestine. It also plays a role in immune function through Peyer's patches, which monitor intestinal bacteria. Additionally, the ileum helps recycle bile salts back to the liver for reuse and digestion. How jejunum works. The jejunum is the second section of the small intestine, located between the duodenum and the ileum. This part of small intestine primarily absorbs nutrients, including carbohydrates, proteins, and vitamins, from digested food. Its extensive surface area, due to folds and villi, facilitates efficient nutrient uptake. Additionally, it plays a role in the absorption of water and electrolytes.
Polyalthia longifolia, commonly known as the Indian mass tree or false ashoka, is an evergreen tree native to India and Sri Lanka. It has a tall, slender shape, often resembling a column, with drooping, shiny, dark green leaves that give it a graceful appearance. This tree can grow up to 10-15 meters in height, making it popular for avenues, landscaping, and ornamental planting in gardens. It produces small, Polyalthia longifolia, thrives Easter-shaped greenish-yellow flowers that bloom in spring. It is valued for its ability to reduce noise pollution, improve air quality by absorbing pollutants. It also holds cultural significance in South Asia, often planted around temples and homes, has several traditional medicinal uses, especially in Ayurvedic medicine. Like antimicrobial, anti-inflammatory, diabetic, and cancer, here is its taxonomic position kingdom: Plantae clade, Angiosperms class, Magnoliopsida, order, Magnoliolalas family, Annanacea genus, Polyalthia longifolia. Dear students, this is Sapodilla plant. The scientific name is Manilkara zapota, and commonly it is known as chiku in Pakistan and India. Here is the taxonomic position of the Sapodilla chiku plant. The kingdom is Plantae phylum, Spermatophyta, subphylum, Angiospermic class, Dicotyledoneclide, Eudicots order, Ericalis, Ebenalis family. Sapotaceae genus, Manilkara, and species is Manilkara zapota. It is a tropical evergreen tree native to southern Mexico, Central America, and the Caribbean. It grows well in warm climates and reaches up to 20-30 meters in height, with a dense, round canopy. Sapodilla fruits are small, brown and round, with sweet, grainy, brownish flesh similar in flavor to caramel or pear. Its leaves are glossy and dark green, while its bark exudes a white latex called chicle, historically used to make chewing gum. Flowers produce in leaf axis near tips of young or mature shoots.
Sapodilla is rich in vitamins A, C, and dietary fiber, promoting digestive health. Here are medicinal uses like it helps in digestive aid, anti-inflammatory, boosts immunity, promotes skin health, respiratory relief, blood pressure regulation, bone strength. If we talk about plant type, it has broad leaves, seed propagated, perennial, and woody tree. This is Sapodilla plant. The scientific name is 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐇𝐮𝐻 and commonly it is known as 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐢𝐞 in Pakistan and India. Here is the taxonomic position of the Sapodilla 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐽 plant. The kingdom is Plantaephyllum, Spermatophyta, subphylum, Angiospermic class, Dicotyledoneclide, Eudicots order, Ericalis, Ebenalis family. Sapotaceae genus, Manilkara and species is Manilkara, zapota. It is a tropical evergreen tree native to southern Mexico, Central America, and the Caribbean. It grows well in warm climates and reaches up to 20-30 meters in height, with a dense, round canopy. Sapodilla fruits are small, brown and round with sweet, grainy, brownish flesh similar in flavor to caramel or pear. Its leaves are glossy and dark green, while its bark exudes a white latex called chicle, historically used to make chewing gum. Flowers produce in leaf axis near tips of young or mature shoots. Sapodilla is rich in vitamins A, C, and dietary fiber, promoting digestive health. Here are medicinal uses like it helps in digestive aid, anti-inflammatory, boosts immunity, promotes skin health, respiratory relief, blood pressure regulation, bone strength. If we talk about plant type, it has broad leaves, seed propagated, perennial, and woody tree. This is monstrose cactus. Apparently is a large shrubby or tree-like cactus with many upright, branched, and irregularly ribbed stems that give it a fascinating sculptural quality. This unusual cactus can grow up to 15 feet. It is also known as night-blooming Sirius cactus. This member of the cactus family produces large, cream-colored to white flowers that only open for one time. If we talk about its requirements, full sun to partial shade with bright light is required. Water thoroughly during the active growth phase. Allow the soil to dry between watering, minimal watering. During winter, well-drained soil having an abundance of sand is required. Thank you for watching, and don't forget to subscribe. Science Hub for more information about plants. Question number 1. The liver's functions are required for option A, thermoregulation, option B, osmoregulation, option C, homeostasis, option D, all above are correct. The right answer is option D. Reason and justification is because the liver is responsible for maintaining the balance of ions and their concentrations within our bodies. As a result, it is required for homeostasis, thermoregulation, and osmoregulation. Question number 2. During the catabolism of amino acids, when the amino group is released, the process is known as option A, deamination, option B,
hydrolysis option C, hydration option D, ammunition. The right answer is option A, deamination. Reason and justification is because the amino group is removed during the breakdown of amino acids, usually through a reaction known as deamination. Question number 3. The only treatment for uremia is dialysis. Option A, dialysis. Option B, lithotripsy. Option C, lungs transplantation. Option D, transplantation. The right answer is option D, transplantation. Reason and justification is because renal replacement therapy is the most effective treatment for uremia. Question number 4. This type of nephron is the most efficient at conserving body water. Option A, nephrons in the juxtamedullary region. Option B, cortical nephrons. Option C, both A and B are true. Option D, serotinal nephrons. The right answer is option A, nephrons in the juxtamedullary region. The juxtamedullary nephron's primary job is to concentrate or dilute urine. More water absorption by the vasa recta may result in more concentrated urine, whilst less water reabsorption may result in diluted urine. Question number 5. Which of the following is responsible for concentrated urine production? Option A, proximal tubule. Option B, cortical nephrons. Option C, distal tubule. Option D, juxtamedullary nephron. The right answer is option D, juxtamedullary nephron. Explanation. The production of concentrated urine is controlled by the juxtamedullary nephron. Question number 6. Even in the presence of ADH, which nephron segment is not permeable to water? Option A, collecting duct. Option B, the Henle loop's descending limb. Option C, ascending limb of Henle's loop. Option D, a combination of B and C. The right answer is option C, ascending limb of Henle's loop. Explanation. Option C is correct because the ascending limb of the Henle loop is water impermeable. Question number 7. The process of leaves falling, which assists the plant in getting rid of accumulated wastes, is referred to as option A, ebony. Option B, make a sacrifice. Option C, excretophore. Option D, excretophore, assistance. The right answer is option C, excretophore. Answer C, explanation. Option C is correct because an excretophore is a plant cell that aids in the diffusion of waste matter from the body. Question number 8. The action of an enzyme promotes active sodium uptake. This enzyme's name is option A, an increase in adrenaline. Option B, aldosterone. Option C, cortisol. Option D, antidiuretic. The right answer is option B, aldosterone. Explanation. Aldosterone increases sodium reabsorption from the filtrate into the circulation by regulating the expression and activity of the epithelial sodium channel, 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐳. As a result, option B is correct. Question number 9. Dogs' respiratory tracts have specialized evaporative movement. Option A, woofing. Option B, panting. Option C, licking. Option D, sighing. The right answer is option B, panting. In dogs exposed to heat and/or exercise, panting is the primary method of evaporative movement. Question number 10. Which claim about homeostasis is false? Option A. As a result, the internal environment's fluctuations are extremely limited in comparison to those of the external environment. Option B. Homeostatic activities are regulated by a specific control system. Option C. Despite large changes in the external environment, homeostatic mechanisms maintain a constant internal environment. Option D, all the preceding. The right answer is option C. Explanation. Despite large changes in the external environment, homeostatic
homeostatic mechanisms keep the internal environment stable. As a result, internal environment fluctuations are extremely limited in comparison to Question number 1. The liver's functions are required for option A, thermoregulation, option B, osmoregulation, option C, homeostasis, option D, all above are correct. The right answer is option D. Reason and justification is because the liver is responsible for maintaining the balance of ions and their concentrations within our bodies. As a result, it is required for homeostasis, thermoregulation, and osmoregulation. Question number 2. During the catabolism of amino acids, when the amino group is released, the process is known as option A, deamination, option B, hydrolysis, option C, hydration, option D, ammunition. The right answer is option A, deamination. Reason and justification is because the amino group is removed during the breakdown of amino acids, usually through a reaction known as deamination. Question number 3. The only treatment for uremia is dialysis. Option A, dialysis, option B, lithotripsy, option C, lungs transplantation, option D, transplantation. The right answer is option D, transplantation. Reason and justification is because renal replacement therapy is the most effective treatment for uremia. Question number 4. This type of nephron is the most efficient at conserving body water. Option A, nephrons in the juxtamedullary region. Option B, cortical nephrons. Option C, both A and B are true. Option D, serotinal nephrons. The right answer is option A, nephrons in the juxtamedullary region. The juxtamedullary nephron's primary job is to concentrate or dilute urine. More water absorption by the vasa recta may result in more concentrated urine, whilst less water reabsorption may result in diluted urine. Question number 5. Which of the following is responsible for concentrated urine production? Option A, proximal tubule. Option B, cortical nephrons. Option C, distal tubule. Option D, juxtamedullary nephron. The right answer is option D, juxtamedullary nephron. Explanation. The production of concentrated urine is controlled by the juxtamedullary nephron. Thank you for watching. Stay tuned to Science Hub and subscribe the channel for more educational. Question number 11. Homeostasis is best described by which of the following statements? Option A, maintaining a stable and unaltered state of the body. Option B, stable equilibrium. Option C, keeping the internal environment near constant. Option D, changing the external environment to meet the body's requirements. The right answer is option A, maintaining a stable and unaltered state of the body. Reason and justification of the answer is the process through which the body maintains a nearly consistent internal environment is known as homeostasis. This is not the same as keeping the body in a constant and unchanged state. For example, when we exercise, our heart rate must rise. Homeostasis exists in all living creatures, whether unicellular or multicellular. Question number 12. Which of the following characteristics of a system is most likely to result in a stable homeostatic system? Option A, unfavorable feedback. Option B, positive reaction. Option C, redundancy is a term that refers to a situation in which. Option D, complicatedness. The right answer is option A, unfavorable feedback. Explanation. Negative feedback is common in homeostatic mechanisms and aids in the maintenance of stable systems. Although homeostatic systems are frequently complex and redundant, positive feedback is uncommon because it tends to produce unstable systems. Question number 13. Which of the following drug classes is not expected to lower blood pressure? Option A, agonists of the adrenoceptor. Option B,
angiotensin converting enzyme, ACE inhibitors. Option C, antagonists of angiotensin 2. Option D, anti-aldosterone drugs. The right answer is option A, agonists of the adrenoceptor. Explanation: blood pressure is reduced by adrenoceptor antagonists. Adrenoceptor agonists are thought to raise blood pressure. Question number 14. Which of the following hypertension statements is false? Option A, hypertension is a medical term that refers to high blood pressure. Option B, headaches and dizziness are common symptoms of high blood pressure. Option C, lifestyle changes can help manage hypertension in some cases. Option D, hypertension raises the chances of a heart attack or stroke. The right answer is option D. Hypertension raises the chances of a heart attack or stroke. Explanation: high blood pressure, hypertension, raises the risk of heart attacks and strokes. However, because hypertension is usually symptomless, many people are unaware that they have it. Question number 15. Which of the following statements about glucose is incorrect? Option A, glucose is a sugar that is made up of monosaccharides. Option B, both aerobic and anaerobic metabolism can metabolize glucose. Option C, a normal blood glucose level is between 4 and 7 millimoles per liter. Option D, hypoglycemia refers to a high blood glucose level. The right answer is option D. Hypoglycemia refers to a high blood glucose level. Question number 16. Which of the following strategies will not help you return to a normal body temperature if you have a high body temperature? Option A, thermogenesis without shivering. Option B, excessive sweating. Option C, skin hair flattening. Option D, blood flow redistribution to the periphery. The right answer is option A, thermogenesis without shivering. Explanation: thermogenesis without shivering is a technique for raising body temperature without shivering. All the other methods listed lower body temperature. Question number 17. In calcium homeostasis, which of the following hormones is not important? Option A, calcitonin. Option B, thyroid hormone. Option C, cholecalciferol 1, 25-dihydroxy. Option D, glucagon. The right answer is option D, glucagon. Thank you for watching. Stay tuned to Science Hub and subscribe to the channel for more educational content. A jaguar recently found in Islamabad, Margalla Hills. Jaguars are the third largest cat in the world and can weigh over 300 pounds. Jaguars are mighty cats, most easily recognized by the bold rosettes generously spotted across their tawny-colored coats. They have thick, stocky legs and short, round ears. The jaguar has the strongest of all the felines. If we talk about their habitat, they can live in tropical rainforests, arid areas, coastal mangroves, lowland river valleys, grasslands, mixed conifer forests. Jaguars are strong swimmers and prefer to live near water. They spend most of their time on the ground, using their padded paws to move silently through the forest floor. Jaguars are near threatened by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Habitat loss and fragmentation, trophy hunting, and the illegal trade in body parts have reduced the jaguar's geographic range and population. They are under threat due to some interactions as habitat loss, poaching, human conflict, retaliatory killings, prey destruction. Strategies should be implemented to save them, as by reducing deforestation, supporting protecting areas law enforcement, by creating alternatives for communities that use forest products, and tourism. Thank you for watching, and don't forget to subscribe to Science Hub for more information. Today, we are going to discuss about fog. Fog is a visible aerosol, a weather condition in which very small drops of water come together to form a thick cloud close to the land or sea, making it difficult to see.
In Pakistan, fog is common during the winter months from December to February. But nowadays, due to climate change, it's on peak even in November also, and government is taking actions to close the institutes and making initiatives to shift the systems online to prevent the public from its harmful effects. What causes fog to form? Warm air, moist air blows in from the south, and if there is snow or cool moisture on the ground, it will come in contact with the warm, moist winds. This contact between the air and ground will cause the air blowing in to become cool. Then dew point rises and creates high humidity and forms fog. How fog is formed? Fog forms when water vapor in the air condenses around particles like dust or salt. According to latest research by Science Hub, we mention here the 10 foggiest places in the world. Number 1, Hamilton in New Zealand. Number 2, Point Reyes in California. Number 3, Cape Disappointment in Washington. Number 4, San Francisco in California. Number 5, Mistake Island in Maine. Number 6, Namib Desert in Africa. Number 7, Swiss Plateau in Switzerland. Number 8, P Valley in Italy. Number 9, Atacama Coast in Chile. Number 10, Grand Banks in Newfoundland. Types of fog. There are several types of fogs, like number 1 is precipitation fog. Number 2, advection fog. Number 3, steam fog. Number 4, upslope fog. Number 5, radiation fog. Number 6, ice fog. Number 7, cold climate fog. Precipitation fog forms when warm rain falls through cold air, causing the water from the raindrops to evaporate and raise the dew point. This type of fog is common with warm fronts, but can also occur with cold fronts that aren't moving too fast. Invection fog forms when moist air moves over cooler ground or water and is most common along the coast. Steam fog forms when cold, dry air moves over warm water and is common during cold weather months. Upslope fog forms when moist, stable air moves up along terrain, cooling. It can extend hundreds of feet above surrounding terrain. Radiation fog forms on clear, calm nights when the warm ground radiates its heat away quickly. Ice fog, also known as frozen fog, frost fog, frost flakes, air core, rime fog, or pogonip. Freezing fog or ice fog forms when water droplets remain in the liquid state in contact with the surface upon which they can freeze. The last one is cold climate fog. Forms when temperatures drop well below freezing. Thank you for watching, and don't forget to subscribe. Science Hub for more information. नहीं होना चाहिए जिनके कम नंबर आए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वो स्टूडेंट खास तौर पे जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो अगर ये सोच लें चूंकि मेरे अच्छे नंबर हैं इस वजह से एफएससी में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और एक बात उन्होंने जहन में ये रखनी है, बल्कि वो ज्यादा मुश्किल के अंदर है, लेकिन लाइक स्टूडेंट है, वालिदैन उससे ज्यादा तो वो कोई नहीं करते। लेकिन एक जिसके 9-10 में 490 प्लस मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है, 95%, 98%, अब उसके वालिदैन की उम्मीदें उससे बहुत ज्यादा जुड़ी और अगर वो मेहनत नहीं करता और एफएससी में खुदा ना खास उसके नंबर कम आते हैं, तो मैं अक्सर बात कहता हूँ कि उम्मीदों के टूटने का दुख इंसान को बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ जो अगला लेवल है, नंबर आए, वो अपने आप को मजीद बेहतर करके अपने आप को प्रूव कर सकता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको भी मेहनत करना पड़ेगी। मुसलसल मेहनत करने से ही इंसान कामयाब होता है। और दूसरा, जब भी हम एफएससी स्टार्ट करेंगे तो एफएससी के अंदर आपने दो बातें जहन में रखी। पहली बात कि एफएससी में सिर्फ एफएससी के पेपर नहीं देने,
बल्कि एफएससी के साथ साथ आपके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसको एंट्री टेस्ट कहते हैं, क्योंकि 90% जो स्टूडेंट एफएससी के अंदर इंटर होता है उसका मकसद होता है कि उसने डॉक्टर बनना है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को एफएससी के अंदर प्री मेडिकल के अंदर इंटर करवा रहे हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश होती है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। तो एफएससी एक बहुत कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग हार्ड वर्किंग एग्जाम है, और उसके बाद एंट्री टेस्ट भी बहुत हार्ड वर्किंग रिक्वायर करता है। तो दोनों इम्तिहान बहुत बड़े हैं और यही आपकी सिमत भी तय करेंगे अपने फ्यूचर में क्या बनना है। ये जो 2 साल है ये इंतहाई क्रूशल साल कहा जाता है इनको, क्योंकि इन 2 सालों की बुनियाद पे आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, अच्छी फील्ड में एडमिशन होगा, और वही आपका फ्यूचर तय करेंगे। तो काइंडली डियर स्टूडेंट, आपने इन 2 सालों को ज़ाया नहीं करना। और मेरा ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लेक्चर बनाने का मकसद ही ये है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मेहनत करना चाहते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा किसी बिना के ऊपर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हैं लेकिन चूंकि उनकी बेस इतनी मजबूत नहीं होती, इस वजह से वो उन टॉपर स्टूडेंट के साथ जो एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा सा पीछे रह गए। हालांकि वो मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन चूंकि 9-10 में किसी भी वजह से उनकी बेस नहीं बनी होती, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो ख़ास तौर पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मेरा लेक्चर बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं अपने इस मुल्क के स्टूडेंट की हेल्प करूं, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट की जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन वो किसी बिना पे मेहनत नहीं कर पा रहे होते। जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट होता है उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती। अच्छा, दूसरे उन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जो उर्दू मीडियम से आए होते हैं। उर्दू मीडियम से आने वाले स्टूडेंट जब पहली दफ़ा इंग्लिश का बायो में लेक्चर सुनते हैं या केमिस्ट्री का सुनते हैं या फिजिक्स का सुनते हैं तो उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उनका टोटली मीडियम उर्दू होता है। तो वो इंग्लिश में आते हैं तो उनको 3-4 महीने समझ ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, खैर अब तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में आ गया, लेकिन काफ़ी सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं जिनके 9 में 95% 98% तक मार्क्स होते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम के बिहाफ पे वो मेहनत भी करते हैं लेकिन वो पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ मेरा जो लेक्चर देने का स्टाइल वो भी ये होगा कि मैं हर उस स्टूडेंट की हेल्प करूं जो बहुत कम नंबर के साथ, जिसने 9th और 10th, और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम से आए हैं, उनके लिए उम्मीद है कि मेरे जो लेक्चर है वो बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि मेरा जो यहाँ लेक्चर देने का स्टाइल है वो थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट इस अंदाज में है। बाकी लेक्चर के अंदाज में डिलीवर करेंगे और मेरी कोशिश होगी मैं आपको लेक्चर भी दूं और साथ जो वर्डिंग बुक में लिखी हुई है उसको भी ट्रांसलेट करके बताऊं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि अक्सर लेक्चर तो समझ में आ जाता है लेकिन बुक की वर्डिंग बाद से इतनी मुश्किल होती है। एक नॉर्मल स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम से आया होता, इवन बाद दफा जो टॉपर स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है, उसको भी उस वर्डिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। इस वजह से मेरी कोशिश होगी मैं जो आपको लेक्चर डिलीवर करूँ उसके अंदर दोनों चीज़ें पाई जाए। मैं आपको पूरा टॉपिक समझाने की भी कोशिश करूंगा और हर लफ्ज और हर लाइन का हो सकता है मैं ट्रांसलेशन भी आपको करके बताऊं ताकि हर वो स्टूडेंट जो मेरे लेक्चर सुने उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मेरे लेक्चर सुनने के बाद जब वो अपनी बायोलॉजी की बुक को पढ़े तो उसको बड़ा आसान लगे कि सर ने तो ये सारा कुछ समझा दिया है अपने लेक्चर के अंदर। जो मुश्किल लफ्ज़ के मानी है उनको भी एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको यानी याद करने में और ख़ासतौर पर वो स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम से है उनको याद करने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि एफएससी बहुत मेहनत इसमें चाहिए होती है, क्योंकि आगे जो आपने डॉक्टरी का ख्वाब देख रखा है उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन में आपके सामने हज़ारों स्टूडेंट होते हैं और चंद हज़ार सीटें होती हैं, चंद हज़ार। जैसे पिछले साल 2018 के अंदर तकरीबन 60,000 जो स्टूडेंट है वो ऑलमोस्ट अपीयर हुए थे और सिलेक्शन कितने की होनी होती है, तकरीबन 3,500 स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है। तो इतने बड़े स्टूडेंट के साथ आपने compete करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरी है।
और मेहनत ही करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन आप देखें जो हमारे मुल्क के अंदर वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। एक एक जॉब, एक एक जो सीट होती है उसके ऊपर हज़ारों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो जितनी मेहनत करेंगे, अल्लाह ने मेहनत का हुक्म भी दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करने वाले को पसंद भी किया है, और दुनिया भी मेहनत करने वाले को पसंद करती है। एक इंसान जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अयाशी के अंदर अपने वालिदैन के पैसे उड़ा दे तो सारी दुनिया ये कहेगी कि ये अयाशी के अंदर ये अपने बाप की जो कमाई है उसको गंवा रहा है। लेकिन अगर वही मेहनत करके अपने वालिदैन के जो कारोबार को मजीद आगे बढ़ाए तो फिर सारी दुनिया उसकी तारीफ करेगी। तो चाहे वो अमीर है, गरीब है, हर शख्स जो मेहनत करता है उसको कदर की निगाह से देखा जाता है। बल्कि एक बड़ी मशहूर कहावत है, उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कुछ बनो चाहे देर से बनो, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान तबीयत की बजाय हैसियत पूछना शुरू कर देता है। जैसे पहले दोस्त मिलते हैं, पूछते हैं भाई तेरा क्या हाल चाल है, कुछ अरसे बाद मिलते हैं, पूछना शुरू कर दे भाई क्या कर रहे हो। अगर 2-3 साल कुछ ना करें तो वो ताने देना शुरू कर देते हैं, भाई कुछ तो कर लिया करो। तो ये जो तानों से बचना, लोगों के सामने वो कहते हैं ना सर उठा के जीना, ये उसी वक्त पॉसिबल है जिस वक्त आप लोग मेहनत करें। तो ये 2 साल आपके पास एक बहुत बड़ा गोल्डन कहते हैं ना सोने की चिड़िया है, जिसको आप यूटिलाइज करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो बायोलॉजी अगर देखा जाए, आपकी जो डॉक्टरी की ख्वाहिश है उसके अंदर जो बायोलॉजी का रोल है ये 70% है, क्योंकि आपका जो MD कैट है उसमें ज़्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। और जब आपकी बायोलॉजी का सब्जेक्ट अच्छा होगा तो आपके लिए मेडिकल का पहला साल भी अच्छा होगा। तो वो स्टूडेंट जिनकी ख्वाहिश है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है तो उनको सोच समझ के FSC को अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, FSC के लिहाज से भी और NT टेस्ट के लिहाज से भी। तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे FSC फर्स्ट ईयर की बुक। थोड़ा सा मैं इसको आप यहाँ थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। हमारे पास इस वक्त जो एग्ज़ाम का सिनेरियो है उसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आता है पेपर। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर MCQs पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से जब हम अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे तो हम ज़्यादातर सब्जेक्टिव के लिहाज से बातें कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको MCQs भी बताता रहूं कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ये MCQs बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपने जहन नशीन करना है, और साथ के साथ शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर भी निशान लगवाता जाऊं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताता जाऊं भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप साथ के साथ तैयारी करते जाए। अच्छा, आपने एक बात और जहन में रखनी है, जब भी आप लोग लेक्चर सुने, एक तो कोशिश करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लेक्चर सुने तो आपने क्या करना है, तकरीबन 200-250 रुपए की एक अच्छी सी हैंड फ्री खरीदनी है और उसके ज़रिए से मेरे जितने भी ऑनलाइन लेक्चर है उसको सुना जाए। उसकी वजह यह है कि जब आप हैंड फ्री लगा के सुनेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी और आवाज़ भी क्लियर आ जाएगी, और साथ के साथ अपने साथ एक पेंसिल रखनी है, एक नोटबुक रखनी है, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मुश्किल वर्ड्स हैं, जो भी बताए जाए लेक्चर के दौरान, उनको आप लोग लिख लें। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक्स है, ये सबसे ज़्यादा लेंथी सिलेबस है FSC का, इसमें 14 चैप्टर्स आते हैं, एक बहुत लेंथी सिलेबस है। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है कि मैं इन 14 चैप्टर्स के सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँ, लेकिन एक इरादा किया है, बस आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरे इस इरादे को मुकम्मल करे और बखूबी मुकम्मल करे, और जो यहाँ लेक्चर दिए जाएँ मुझे इस अंदाज में देने की तौफीक दे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर FSC प्री मेडिकल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मेडिकल की फील्ड से पहले का एग्जाम सिलेबस है। फर्स्ट ईयर FSC कहते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस, इसमें हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फैकल्टी ऑफ साइंस को। तो FSC के अंदर सबसे ज़्यादा
फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये भी साइंस के सब्जेक्ट, इनसे ज़्यादा लेंथी सिलेबस बायो का है, लेकिन समझना बायो को थोड़ा सा आसान होता है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली होती हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा तरीका भी बता चला जाऊंगा। आप जितनी ज़्यादा उन लेक्चर में हेडिंग्स इस्तेमाल करेंगे, आप मेरे लेक्चर को देखेंगे तो एक लेक्चर को मैंने काफ़ी छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया होगा ताकि आप लोगों को बड़ा समझने में आसानी हो। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको ये लिखना भी आसान होगा, याद करना भी आसान होगा, लिखना भी आसान। और जितना ज़्यादा हेडिंग इस्तेमाल करेंगे पेपर में, उतना पेपर चेक पढ़ने वाले को भी, पेपर चेक करने वाले को भी आसान होगा। तो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के फील्ड्स क्या हैं, बायोलॉजी के लेवल्स क्या हैं, बायोलॉजी का इंसानियत के लिए क्या रोल है। तो ये 4-5 टॉपिक है जिसमें ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अभी से हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शंस। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक ने तो बायोलॉजी से स्टार्ट किया है, मैं आपको 2 डेफिनेशंस एक्स्ट्रा बता देता हूं जो इस डेफिनेशन को समझने में मजीद हेल्प करेंगी। तो वो क्या है? साइंस। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि जो बुक में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, अगर वो साइंटिफिक वर्ड है, मैं साथ के साथ उसकी डेफिनेशन भी बताता चला जाऊं ताकि आप उसको एग्जैक्टली याद करें। तो साइंस क्या है? तो हम कहते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी को कहा जाता है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ लिविंग। तो पहले देखना साइंस क्या है। तो साइंस उस स्टडी को कहा जाता है जिसमें काम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। पहला काम चीजों पे गौर व फिक्र करना, चीजों को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक सेब का जो दरख्त है उससे सेब गिरा। उसके गिरते हुए सेब को देख के उसने उसको ऑब्जर्व किया और वहां से ग्रेविटेशनल लॉज बना दिए। तो लुईस पाश्चर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसका कहना ये है कि नेचर हर शख्स को ऑब्जर्वेशन के जरिए से एक चांस देती है, कि हर शख्स ऑब्जर्वेशन के जरिए से एक चांस हासिल करता है नेचर की तरफ से। और जो मेहनत करने वाले होते हैं, जो गौर व फिक्र करने वाले होते हैं, ठीक है, जो सोचो विचार करने वाले होते हैं, वो उस चांस को तारीख बना देते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी साइंस के अंदर जो डिस्कवरी हुई है वो चांस बेस हुई है कि लोगों ने ऑब्जर्वेशन की, उस ऑब्जर्वेशन को जब मजीद समझा तो उन्होंने एक तारीख रकम कर दी। तो साइंस में हमेशा काम गौर व फिक्र से स्टार्ट होता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो जिसके अंदर ये सलाहियत पैदा होगी वो चीज़ों पे गौर व फिक्र करना है, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान। अगर स्टूडेंट को ले, अगर स्टूडेंट हर लाइन पे गौर करना शुरू कर दे, हर लफ्ज़ पे गौर करना शुरू कर दे कि ये लफ्ज़ क्या कहता है, ये लाइन क्या कहती है, तो ऑटोमेटिकली उस जैसे कंसेप्चुअल स्टूडेंट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और वो कामयाब स्टूडेंट कहलाता है। अगर हम कुरान पाक में गौर व फिक्र करना शुरू कर दें तो अल्लाह को पा सकते हैं। तो गौर व फिक्र करना ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी का प्यार है। तो ये स्टडी हमेशा ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। तो बाकी स्टडी और साइंस में ये फर्क है कि ऑब्जर्वेशन के बाद फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, कि उन ऑब्जर्वेशन को फिर परखा जाता है एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे। फिर एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म होंगे उनके बाद जो रिजल्ट्स निकलेंगे, कंक्लूजन और विथड्रॉन्स, उसके जरिए से हम नेचर को समझेंगे, उसके जरिए से नेचर को समझा जाएगा। तो ये साइंस में 3-4 लाइनें आपने याद रखनी है। पहला, ऑब्जर्वेशन से काम स्टार्ट होगा, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे, फिर उसके नताइज निकलेंगे, फिर वो नताइज नेचर को समझने में हेल्प करेंगे। तो साइंस का लफ्जी मतलब क्या है? नॉलेज। और मैं तो इसको थोड़ा सा इजाफी तौर पे कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। नॉलेज तो और भी हो सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, क्योंकि अगर ऐसा नॉलेज जिसमें एक्सपेरिमेंट ना हो वो फिर आर्ट्स का नॉलेज बन जाता है। अच्छा, नेचर क्या है? हमने कहा कि साइंस से हम नेचर को समझते हैं। तो नेचर बेसिकली इसका अगर लफ्जी मतलब देखें तो ये असली हालत, इसके लफ्जी मतलब है असली हालत। या जैसे आपने अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं कि ये इसका नेचुरल कलर है। बाद दफे ब्यूटी पार्लर पे जाके वो अपना कलर चेंज करवा देते हैं, अच्छे खासे जो काले होते हैं वो भी 15-20 हज़ार रुपये दे के वो बिल्कुल यानी सफ़ेद हो चुके होते हैं, लेकिन हम उसको नेचुरल कलर देते हैं।
उसका नेचुरल कलर क्या है। इसी तरह आपने आंसर सुनोगा नेचुरल स्माइल, आर्टिफिशियल स्माइल, ये उसकी असली मुस्कुराहट है। तो साइंस में इस वर्ड को क्यों इस्तेमाल किया गया? हर वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अपनी असली हालत पर मौजूद हो वो नेचर कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज इंसान ने उसको बदल दिया है या इंसान ने उसको बनाया है तो वो क्या नेचुरल नहीं होगी? या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसान ने मुदाखलत की हो तो वो भी नेचुरल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसान नहीं बना सकते। जैसे कुरान में एक बहुत बड़ा दावा किया गया था जब कुरान नाजिल हुआ कि ये जो काफिर लोग हैं ये तो एक मक्खी नहीं बना सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते। और फिर अल्लाह ताला ने उसको मजीद उस दावे को हल्का कर दिया कि ये मक्खी नहीं बल्कि मक्खी अगर कुछ उनसे जाके उनके हाथ से छीन के ले जाए वो उसको नहीं वापस छीन सकते। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जानदार को इंसान नहीं बना सकता, तो ये नेचुरल होते हैं ज्यादातर। या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको जिसमें इंसान ने मुदाखलत ना की हो वो नेचर कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशन हैं जो आपके बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मेंशन यहाँ की गई है, तो आपने इनको जहन में रखना है। इससे बायोलॉजी की डेफिनेशन समझना आसान होगी। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी की वो साइंस की वो ब्रांच जो लिविंग थिंग्स को स्टडी करती है वो बायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, आगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी के सारी नेचर को समझने में हेल्प करती हैं। तो जिस तरह बायोलॉजी भी साइंस की फील्ड है तो ये भी नेचर को समझने में हेल्प करेगी। लाइक अदर साइंसेस इट इज वे टू अंडरस्टैंड द नेचर। उसके बाद वर्ड बायोलॉजी आया कहाँ से? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जिसने 9th 10th की होती है, चाहे उसके बायो में सप्ली ही क्यों ना हो, उसको भी ये बात पता है। ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। तो सबसे आसान डेफिनेशन सारे साइंस सब्जेक्ट में जो एक आम बंदे को भी बार दफा पता होती है वो बायो की है। लफ्जी मतलब क्या है बायोलॉजी का? हमने कहा कि 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोस एंड लोगोस। तो इसका लफ्जी लिटरल मीनिंग का मतलब है, उसका लफ्जी मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपने ये 4 पॉइंट लाजमी लिखने हैं। बायोलॉजी को डिफाइन करने, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, वर्ड बायोलॉजी कहाँ से आया और उसका लफ्जी मतलब क्या है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट कौन होता है? वो शख्स जो बायोलॉजी को स्टडी करता है वो क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो बायोलॉजिस्ट करते क्या है? ये लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, नेचर के लिविंग पार्ट को स्टडी। अच्छा, मजे की बात देखो, ये नॉन लिविंग पार्ट को भी स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग पार्ट को भी स्टडी करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग पार्ट, सब नॉन लिविंग पार्ट्स को स्टडी नहीं करेंगे, सारी नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी नहीं करेंगे। तो ये कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे? अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये कोई आपसे पूछे कि हम कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स बायो में स्टडी, आप उससे पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, तो एसी, कोई शख्स आके कहे क्या एसी को बायो में स्टडी करेंगे? तो मेरा सवाल उससे ये होगा कि अगर दुनिया से एसी खत्म हो जाए क्या दुनिया से इंसान मर जाएंगे? तो वो फौरन जवाब देकर नहीं मरे। तो मैंने कहा मैं फिर उसको यही जवाब दूंगा कि जब किसी चीज के खत्म होने से अगर लाइफ खत्म ना हो तो उसको बायोलॉजी में स्टडी नहीं किया जाता। तो देख लें, अगर दुनिया से पानी खत्म हो जाए तो जाहिर बात लाइफ खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब है बायोलॉजी में पानी को स्टडी किया जाएगा। अगर दुनिया से ऑक्सीजन खत्म हो जाए लाइफ खत्म हो जाती, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए लाइफ खत्म हो जाती। तो ये सारी चीजें, सूरज की रोशनी खत्म हो जाए लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, बाज़ दफा ये तो वो चीजें जो लाइफ के लिए जरूरी हैं, बाज़ दफा ऐसी चीजें भी बायोलॉजी में पढ़ी जाती हैं जिनके मौजूद होने से लाइफ खतरे में पड़ जाती है। जैसे दुनिया में अगर धुआं ज्यादा हो जाए, अब धुएं के ज्यादा होने से लाइफ खतरे में पड़ सकती है, तो धुएं को भी स्टडी करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर वो चीज जिसके मौजूद होने से लाइफ मौजूद रहे उसको बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा, और हर वो चीज जिसके मौजूद होने से लाइफ के खत्म होने के चांसेस हों उसको भी पढ़ा जाएगा। यानी हर यूजफुल थिंग, हर हार्मफुल थिंग्स जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है, सिर्फ उस नेचुरल पार्ट
नेचुरल पार्ट के उस नॉन लिविंग पार्ट को डिस्कस करेंगे, विच इफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनिमल, जो किसी भी अंदाज में लिविंग थिंग्स को मुतासिर कर रहा है। तो बहरहाल बायोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले उनको समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस्म के, उनमें क्या क्या हो रहा है। जब उनको समझ में आती है फिर वो लोगों को के सामने एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इस प्रोसेस को ऐसे समझा है, और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जो उनकी समझ में आई या जो लोगों से फीडबैक मिला। इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठी करना, और उसको फिर रिसर्च पेपर की शक्ल में पब्लिश कर देते हैं। तो स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना है। तो उनकी कोशिश होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझें, उसको एक्सप्लेन करें, और जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है उसको फिर बुक की शक्ल में वो डिस्क्राइब करते हैं। उसी बुक को फिर हम पढ़ते हैं तक, और ये सारा काम वो किससे रिलेटेड करते हैं, जो दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसी तरह का हमारा स्टाइल होगा कि हम बुक की तकरीबन हर लाइन को डिस्कस करेंगे, हर लफ्ज़ को डिस्कस करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट जो बहुत ही वीक हैं, खासतौर पे वो जिसमें बार जो उर्दू मीडियम से आए हैं, या वो इवन टॉपर स्टूडेंट जिनको बार दफ़ा लाइनों की समझ नहीं आ रही होती, उनको इस लेक्चर के बाद हर चीज़ समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा वो इसकी कंटिन्यूटी होगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसका टाइटल है ऑस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। तो पहले लेक्चर में हम थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ नेचर। ये 4 डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी लेक्चर दिया जा रहा हो अपने कॉपी पेंसिल अपने साथ रखनी है, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाद दफ़ा हम लेक्चर में बता देते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ये आपने साथ के साथ नोट करते चले जाना है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जब आप लोग प्रिपेयर करें इस चैप्टर को, इस बायोलॉजी के टॉपिक को। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ऑस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी क्या है। ऑस्पेक्ट से क्या मुराद है? वैसे लफ्ज़ उर्दू में इसका तर्जुमा पहलू, कि बायोलॉजी के अंदर हम किन किन बातों को स्टडी करते हैं। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी की डेफिनेशन हमने की थी कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हैं जो बायोलॉजी में स्टडी नहीं किया। ये नहीं कि बायोलॉजी लाइफ से रिलेटेड हर बात को स्टडी करेगी, नहीं, कुछ बायोलॉजी का दायरा कार है, उन दायरा कार में जो चीज़ें आती हैं लाइफ से रिलेटेड वो तो बायोलॉजी स्टडी करेगी, लेकिन अगर उस दायरे कार से बाहर की चीजें हैं तो फिर वो स्टडी नहीं करेगी। तो बट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, के लाइफ के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं, हालांकि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, लेकिन लाइफ के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के दायरे कार के अंदर नहीं आते। जैसे हमसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे, हम बायोलॉजिस्ट हैं, हमसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का मतलब क्या है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका जवाब बायोलॉजी नहीं दे सकती। एंड व्हाई देयर शुड बी लाइफ, और जिंदगी का वजूद क्यों है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो ही नहीं सकते। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपको देखने के लिए आंखें ही क्यों दी गई, हालांकि ये क्वेश्चन तो बस बनता है, आपको सुनने के लिए कान ही क्यों दिए गए, आप जिंदा क्यों हो। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, लेकिन आप कह सकते हैं बायोलॉजी के दायरे कार की चीज़ें नहीं है। ये बायोलॉजी ज़्यादातर हमारे पास किन चीज़ों को फोकस करती है कि बायोलॉजी मेनली डील्स हाउ लाइफ वर्क, जिंदगी काम कैसे करती है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि हमें आँख देखने के लिए आंखें ही क्यों दी है, तो हम सिर्फ ये बात डिस्कस करेंगे आंखें काम कैसे करती है, देखती कैसे हैं। हमें सोचने के लिए दिमाग ही क्यों दिया है, तो हम डिस्कस ये करेंगे दिमाग में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है। इसी तरह हम ये नहीं डिस्कस करेंगे हमें सुनने के लिए कान ही क्यों दिया है, हम डिस्कस ये करेंगे कान सुनते कैसे हैं। तो जिंदगी चलती कैसे है,
जिंदगी का अमल जारी व सारी कैसे है, जिंदगी को जिंदा कैसे रखना है, जिंदगी के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है, तो ये चीजें बायोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन के व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ के जिंदगी क्या है, व्हाई देयर शुड बी लाइफ के जिंदगी क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन बायोलॉजी आंसर नहीं करती। लेकिन जब क्वेश्चन कोई उठाता है तो उसका जवाब देने वाले दुनिया में कोई ना कोई मौजूद होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर these question are not taken by the biologist, तो biologist क्वेश्चन को लेते ही नहीं है। कोई आप पूछे biologist से इस तरह का क्वेश्चन, वो कहेगा मैं इसका जवाब देता ही नहीं। हाँ, they are left, इनको फिर छोड़ दिया जाता है दो किस्म के लोगों, philosopher and theologians। philosopher वो होते हैं जो अपनी सोच समझ से जवाब देते हैं, और theologians वो है जो मजहब की किताब को सामने रख के जवाब देते हैं। तो थियोलॉजी बेसिकली, थियो कहते हैं गॉड को, तो थियोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी आप कह सकते हैं इसको स्टडी ऑफ रिलीजन, आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन, आप ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन्स। तो बहरहाल यहाँ हमने एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया है कि कुछ एस्पेक्ट लाइफ से रिलेटेड ऐसे हैं जो बायोलॉजी डील नहीं करती। हाँ, बायोलॉजी ज्यादातर डील किससे करती है, हाउ लाइफ वर्क। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। अगर ये क्वेश्चन एक आम लेमैन से पूछा जाए कि भाई जिंदगी क्या है, वो आगे गुस्से से ये जवाब देगा यार जिंदगी 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 है, इससे ज्यादा वो इसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो आम आदमी के लिए लाइफ को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, कि आम आदमी के लिए इसको डिफाइन करना। लेकिन बायोलॉजिस्ट इसको भी डिफाइन, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई लाइफ को जाता है, तो बायोलॉजिस्ट के अंदर इसी को ही डील किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग लाइफ क्या है। अब मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, और ये जो हमारे पास बोर्ड है ये नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके पास नहीं है। अगर वो चीजें मुझसे निकाल ली जाएं तो मैं भी बेजान हो जाऊंगा, अगर वो चीजें इसमें डाल दी जाए तो भी ये जानदार हो जाएगा, ये भी लिविंग थिंग्स बन जाएगी। तो बहरहाल हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग के अंदर। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंस को हम लाइफ कहते हैं। बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमूआ है जिसकी वजह से हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलहदा कर सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, डेड ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। यानी जिस वक्त ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो काफी हद तक वो जो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर पाई जाती है वो खत्म हो जाती है, और वो क्या बन जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बन जाता है। उन कैरेक्टरिस्टिक को हमने मेंशन करना है। पहली कैरेक्टरिस्टिक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बड़ी एक तरतीब से बनाया गया है। अब बेजान जो चीजें हैं वो बेतरतीबी भी हो सकती है, ये उनकी तरतीब बदलती रहती है। जैसे एक चेयर है, वो 2 टांगों वाली भी हो सकती है, बड़ी बड़ी टांगें लगा दे, 3 टांगों वाली भी हो सकती है, 4 टांगों वाली भी हो सकती है, 5 टांगों वाली भी हो सकती है, या एक डब्बा सा नीचे बना दे वो भी हो सकती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरतीब बदलती रहती है। लेकिन इंसान की अगर बात करें तो ये काम थोड़ा सा ऊपर लग जाए सारा ढांचा ही बिगड़ जाए। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर इधर से उधर हो जाए उसका सारा ढांचा ही बिगड़ जाएगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बड़ी तरतीब से बनाया गया है, उनकी तरतीब खराब होने से उनका ढांचा बिगड़ जाता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अगर बेतरतीबी भी बन जाए तो हम उनसे कोई गिला नहीं करेंगे। तो पहली चीज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। दूसरी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी सिंपल नहीं हो सकती। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O, सिर्फ 3 एटम, इट मे बी सिंपल, लेकिन एक छोटा सा वायरस ही आप समझ लें, एक छोटा सा बैक्टीरिया ही, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया है, तो सबसे छोटा बैक्टीरिया ही समझ लें, उसके बॉडी को बनाने के लिए लाखों करोड़ों एटम्स चाहिए। तो आप जिसमें लाखों करोड़ों एटम पाए जाते हैं वो कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। एंटिटीज कहते हैं चीजों। उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने होते हैं। आपने ये बात लाजमी लिखनी है, कुछ एक से बने होते हैं, कुछ एक से ज्यादा से बने होते हैं। जो एक से बने होते हैं उनको ये यूनिसेलुलर कहा जाता है, जो एक से ज्यादा से बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड्स आपने लाजमी लिखने हैं। उसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक
ऑर्गेनिज्म में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं वो उसमें क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसके पास उसके जीन्स मौजूद हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम ये डिस्कस नहीं करते हमारी दो आंखें। हाँ, इसका एक जवाब हो सकता है, कोई आपसे पूछे आप इंसान की दो आंखें क्यों हैं, तो आप ये कह सकते हो क्योंकि इंसान के पास उन दो आंखों के जीन्स हैं। हमारे दो कान क्यों हैं? क्योंकि इंसान के पास उन दो कानों के जीन्स हैं। ठीक है, हमारा एक नाक क्यों है? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं कि उसकी स्किन का कलर क्या होगा, उसकी इंटेलिजेंस क्या होगा, उसका ब्रेन कैसे डेवलप होगा, उसका स्टमक कैसे बनेगा, दूसरे एनिमल्स की बात करें उनकी कवरिंग कैसे बनेगी, उनका कलर कैसे बनेगा, सारे उसके जीन्स डिसाइड करते हैं। तो कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है उसके जीन्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन को करते भी हैं, यानी चलाते भी हैं केमिकल रिएक्शन को, और उन केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल में भी रखते हैं। ये दोनों बातें आपने लिखी। केमिकल का रिएक्शन का होना भी जरूरी है और केमिकल रिएक्शन का कंट्रोल में होना भी जरूरी है। उसकी वजह ये है, अगर केमिकल रिएक्शन जरूरत से ज्यादा, जैसे ग्लूकोज का टूटना है बॉडी के अंदर, अगर जरूरत से ज्यादा टूट जाए तो हम कहते हैं शुगर लो हो जाती है, इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। अगर जरूरत से कम टूटे तो हम कह सकते हैं कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया, उसकी शुगर ज्यादा हो गई है, और शुगर ज्यादा होना भी बीमारी है। तो केमिकल रिएक्शन का जरूरत से कम होना, जरूरत से ज्यादा होना, ये बीमारी के जुमरे में आता है। और बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटा चेंज को कहा जाता है, तो वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी को हासिल भी करता है, उसको यूज भी करता है, और हासिल किस शक्ल में करता है? फूड। अब फूड को हम कैसे डिफाइन करें? हर वो चीज जो बॉडी को एनर्जी दे सकती है वो फूड कहलाती है। और फूड, हर वो चीज जिसके अंदर CH बॉन्ड हो वो बॉडी को एनर्जी दे सकती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो एनर्जी देने वाले कंपोनेंट बॉडी को वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं। अच्छा, CH बॉन्ड टूटता है, उससे एनर्जी निकलती है, वो बॉडी एनर्जी इस्तेमाल करती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो H2O फौरन आपके जहन में आएगा, ये फूड में नहीं आता क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो फूड, कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है वो फूड कहलाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा फूड को हासिल करता है और फूड से एनर्जी इस्तेमाल करता है, निकलने वाली एनर्जी को इस्तेमाल। और ये जो प्रोसेस है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का मकसद क्या है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये जो हम सांस ले रहे हैं बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अच्छा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, तो इस फिनोमेनन को हम ग्रोथ कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे उन्हीं की तरह के होते हैं, तो इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है इस प्रोसेस को। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी एनवायरनमेंट में चेंज आएगा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में गर्मी पड़ी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने लगेगी, तो हमारा बॉडी का सिस्टम उस टेम्परेचर को कम करेगा। तो इस प्रोसेस को बिहेवियर कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना है वो क्या कहलाता है? बिहेवियर कहलाता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है। सबसे पहले हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज है, एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बना है, जो एक सेल से वो यूनिसेलुलर, जो एक से ज्यादा मल्टीसेलुलर। हर ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है? क्योंकि उस कैरेक्टरिस्टिक के उसके पास जीन्स होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शन होते भी हैं और उनको वो कंट्रोल में भी रखते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी हासिल भी करते हैं, और हासिल किसकी शक्ल में करते हैं? फूड की शक्ल में, और उस एनर्जी को इस्तेमाल भी करते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं और होमियोस्टेसिस यानी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को
मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम एक डिक्लेरेशन करने लगे हैं। डिक्लेरेशन से क्या मुराद, एक ऐलान करने लगे हैं। ऐलान किस चीज का? हर वो चीज जिसके अंदर ये 10 की 10 करैक्टरिस्टिक बैक वक्त मौजूद हों, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और उसको बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अगर इनमें से कोई करैक्टरिस्टिक भी कम पड़ गई, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मल नहीं होगा, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा, या उसकी डेथ हो जाएगी। तो एनीथिंग पोजेसिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स, हर वो चीज जिसमें ये सारे कैरेक्टर मौजूद हैं साइमल्टेनियसली बैक वक्त, कैन बी डिक्लेयर, उसके बारे में ऐलान किया जा सकता है। वो क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट है। और उसको स्टडी कैसे में करेंगे? बायोलॉजी के अंदर उसको स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज लाइफ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ये भी इसमें से अक्सर आ जाता है। राइट डाउन द 4 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये भी काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। उसके बाद व्हाई वी क्लासिफाई द बायोलॉजी, बायोलॉजी को आपने देखा होगा काफी सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। हम ब्रांचेस में डिवाइड क्यों करते हैं? अच्छी, इंसान की फितरत है, जब उसके पास चीज कम हो, जैसे एक कमरे के अंदर 5-6 बुक्स पढ़ी हो और मैं किसी को कहूँ कि इसमें से केमिस्ट्री की बुक उठा के लो, वो फौरन उठा के ले आएगा, उसको 1 मिनट भी नहीं लगे, चीज थोड़ी है। अगर इस रूम के अंदर 1 लाख चीजें पड़ी, 1 लाख बुक्स पड़ी, अब मैं कहूँ कि केमिस्ट्री की फलां बुक्स लेके आओ, तो उसके लिए लेके आना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए इसको ढूंढते ढूंढते। लेकिन अगर वो सारी 1 लाख बुक्स अरेंज पड़ी हों, जैसे लाइब्रेरी के अंदर अरेंज होती हैं, एक तरफ बायोलॉजी का कैबिनेट है, एक तरफ केमिस्ट्री का कैबिनेट है, एक तरफ फिजिक्स का कैबिनेट है, एक तरफ फिजियोलॉजी का कैबिनेट है, तो और फिर जो केमिस्ट्री वाला उसकी भी पोर्शन है, ऊपर ऑर्गेनिक है, नीचे इनऑर्गेनिक है, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है। तो अब मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि आपने एक बुक लेके आनी है, तो आसानी से उस कपबोर्ड के अंदर, उस अलमारी के अंदर, उस पोर्शन के अंदर जाएगा, वहां से बुक ले। तो 1 लाख बुक के बावजूद चीज ढूंढना आसान हो जाती है। तो इसी तरह जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उसको क्लासिफाई क्योंकि बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी एक वसी तर मुतालिया है, वाइड बेस्ड, बहुत ज्यादा चीजें जो बायोलॉजी में पढ़ी जाती। क्यों पढ़ी जाती? इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ज्यादातर बातों को डिस्कस किया जाता है। अब खुद अंदाजा लगाएं, इस वक्त हमारे पास आपकी बुक के मुताबिक 2.5 मिलियन स्पीशी हैं जो डिस्कवर हो चुकी है। अगर सिर्फ हम उनके नाम लिखें तो काफी सारी बुक्स तो सिर्फ उसके नाम की बन जाएंगी। फिर उनमें से इंसान निकालें, इंसान के सिर्फ कैरेक्टर लिखना शुरू करें, तो हो सकता है काफी सारी बुक्स सिर्फ कैरेक्टर के नाम की हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। यही बात यहाँ मेंशन की है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर पहलू को देखते हैं तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मालूमात के बहुत बड़ा खजाना हमारे पास आ जाता है, इज अवेलेबल अंडर दिस मेजर हेड। ये जो बायोलॉजी का टाइटल है इसके अंडर, तो इट इज बट नेचुरल, ये इंसान की फितरत है। जब चीज ज्यादा होती है उसको डिवाइड करके ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, ताकि जब उसको ढूंढने की जरूरत पेश आए तो आसानी से ढूंढ सके। इट इज टू डिवाइड दिस साइंस इनटू क्वाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस। और ये वो काम क्यों करता है कि इंसान की फितरत है, उसने साइंस को काफी सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया है फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग एंड स्टडीइंग द, ताकि वो आसानी से बायोलॉजी को समझ सके, उसको पढ़ सके। कॉम्प्रिहेंडिंग का मतलब यहाँ समझना, ये लगा लें, तो कॉम्प्रिहेंडिंग एंड स्टडीइंग द बायोलॉजी। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी को हम क्लासिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर पहलू को डिस्कस करती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मालूमात इसके अंदर आ गई है। और ये इंसान की फितरत है, जब चीज़ें ज़्यादा हो उसको डिवाइड करता है ताकि उसको आसानी से पढ़ना आसान हो, उसको जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करना, उसको समझना, उसको पढ़ना आसान हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने उन पॉइंट्स को लिख लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. To my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाई क्लासिफाई द बायोलॉजी, कि हम बायोलॉजी को क्लासिफाई क्यों करते हैं।
ताकि हमारा मकसद है हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, हमें ढूंढना बड़ा आसान हो। तो आज उसी टॉपिक की मजीद कंटिन्यूटी है, तसलसल है कि हमने जो बात की थी, हमने बायोलॉजी को क्लासीफाई किया है, तो अब किन किन ब्रांचेस में क्लासीफाई किया है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, उससे अगले लेक्चर में फिर मजीद ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली जो ब्रांच है वो एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाहिर है इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो और उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करना ये एम्ब्रियोलॉजी के अंडर आता है। तो एम्ब्रियो क्या है, हम बात करते हैं कि हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एम्ब्रियो? तो एम्ब्रियो को डिफाइन किया जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, यानी जब जाइगोट बनता है, जिस जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना होता है, वो जाइगोट एक सेल पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद वो डिवाइड होता है, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, करते करते हजारों सेल बन जाते हैं और हजारों सेल मिलके फिर वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जाइगोट और यानी फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के दरमियान जितनी भी स्टेजेस हैं, हर स्टेज पे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा। तो एन ऑर्गेनिज्म एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट के शुरू के स्टेज पे, और ये स्टेज किसके दरमियान मौजूद है? बिटवीन फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बना एंड फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। जैसे इंसान को कि हम डेवलपमेंट को सपोज करते हैं, सपोज हमारे पास ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गए। अब ये चूंकि एक सेल है, ये एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर काफी सारे सेल बनेंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि वो सेल मिलके उन्होंने चेहरा बनाया, फिर मजीद सेल डिवीजन उन्होंने धड़ बनाया, उसके बाद मजीद सेल डिवीजन हुई, टांगे बन गई, मजीद सेल डिवीजन हुई, सेल अरेंज होके बाजू बन गए, और इस तरह यहाँ पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये मुकम्मल ऑर्गेनिज्म है, ये जाइगोट है। तो ये जो दरमियान में जितनी भी स्टेजेस हैं ये हमारे पास एम्ब्रियो कहलाता है। हर स्टेज पे इंसान का जो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, उसके बाद ये मजीद साइज में बड़ा होता है। तो अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने का जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट कहलाता है, और ऑर्गेनिज्म के साइज बनने का जो प्रोसेस है वो ग्रोथ कहलाता है। तो अक्सर सेकेंड ईयर में तो ये बहुत दफा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये जो सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनने का जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट कहलाता है, और ऑर्गेनिज्म को जो साइज बढ़ने का प्रोसेस वो क्या होता है? ग्रोथ। लेकिन हम जब डिफाइन करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की तो हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो और डेवलपमेंट और उसकी डेवलपमेंट को स्टडी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर किया, यानी ग्रोथ के प्रोसेस को हम यूजुअली एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस नहीं करते। सिर्फ यहाँ तक जो स्टेजेस हैं इनको डिस्कस किया जाएगा कि ह्यूमन में कैसे डेवलपमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी ब्रांच हमारे पास है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का लफ्जी मतलब है कि काम करने का मिजाज, काम करने का मिजाज। तो बेसिकली इस ब्रांच के अंदर हम डील करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं वो कैसे नॉर्मल फंक्शन को करते हैं। जैसे आँख कैसे देखती है, कान कैसे सुनता है, दिमाग कैसे सोचता है, स्टोमक में डाइजेशन कैसे हो रही है, इम्यूनिटी सिस्टम काम कैसे करता है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। तो ये सारी फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है डाइजेशन इन स्टोमक। तो डाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। अच्छा, ये नॉर्मल का वर्ड आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन नॉर्मल नहीं रहते उसको डिजीज कहते, और डिजीज को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको पैथोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ डिजीज को कहा जाता है। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज, इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो हम नॉर्मल फंक्शन को डिस्कस करते हैं, एबनॉर्मल फंक्शन फिर किसी और यानी पैथोलॉजी के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी। अच्छा, उसके बाद मार्फोलॉजी। मार्फो का मतलब है शक्लो सूरत, शक्लो सूरत। तो ऑर्गेनिज्म की शक्लो सूरत और उसके हिस्सों की शक्लो सूरत को, फॉर्म, शक्लो सूरत को, स्ट्रक्चर, उसकी साख को अगर हम डिस्कस करें तो ये मार्फोलॉजी के अंदर आता है। आगे मार्फोलॉजी 2 तरह की है, क्योंकि अगर इंसान को देखें, जैसे इंसान बाहर से नजर आता है वैसे अंदर से नजर नहीं आता। तो जो बाहर से नजर आता है उसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होती है, जो अंदर से नजर आता है वो उसकी
इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में इसमें चीजें जो शामिल है, इट इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसे नजर आता है, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में उसको डिस्कस किया जाए। जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज हम देखना शुरू करें, ऑर्गेनिज्म का कलर कैसा है, ऑर्गेनिज्म का पैटर्न कैसे है, यानी उसके जिस्म के जो खद्दो खाल है पार्ट्स के वो कैसे है, तो ये सारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। उसके बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, उसका दूसरा नाम एनाटॉमी है। एनाटॉमी डाइसेक्शन को कहा जाता है, यानी अगर जिस्म के किसी हिस्से को काट के हम देख रहे हैं तो वो एनाटॉमी कहलाता है। जैसे बाजू को हमने काटा तो अंदर से जो चीज नजर आएगी वो बाजू की एनाटॉमी कहलाएगी। लेकिन सिर्फ वो चीज एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं जो हमें आंख से नजर आती है, आंख से नजर आती है। तो इट इज द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? ऐसा स्ट्रक्चर जो नेकेड आई से नजर आता हो, आंख से नजर आता हो, उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका अगर हम डाइसेक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं और जो हमें आम आंख से नजर आ रहा है वो उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी कहलाती है। उसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमने यहाँ कहा कि आम आंख से नजर आएगा, लेकिन बॉडी के वो हिस्से जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं वो उसकी हिस्टोलॉजी में डिस्कस। आमतौर पे जो टिश्यू हैं, सेल हैं, वो किससे नजर आते हैं? माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। तो हिस्टो का लफ्जी मतलब टिश्यू है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक जिसका लफ्जी मतलब है टिश्यू। तो अगर हम टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं और टिश्यू को देखने के लिए ज्यादातर हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो ये हिस्टोलॉजी बन जाती है। उसके बाद अगली ब्रांच हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी ओल्ड को कहा जाता है। तो इसमें हम पुरानी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पुरानी चीजें क्या है? फॉसिल्स। और हमारा मकसद क्या होता है? इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली लाइफ, कि शुरू में जो जिंदगी थी उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ये पैलियोंटोलॉजी के जुमरे में आता है, यानी इसका मकसद है। उसके बाद फॉसिल्स क्या है? जो पुराने ऑर्गेनिज्म है जो पास्ट में रहा करते थे, उनके जो डेड बॉडीज के जो बचा खुचा मटेरियल वो उनके फॉसिल्स कहना। या बाद दफा निशानात बच जाते हैं, बॉडी सारी गल सड़ जाती है, सिर्फ निशानात बच जाते हैं और निशानात से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, यानी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके निशानात से भी इकट्ठी की जा सकती है। जैसे एक बिल्कुल कच्ची ज़मीन हो, उस पर एक आदमी गुजर के जाए और एक उसके साथ बच्चा गुजर के जाए, तो उसके पाँव से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाँव बच्चे का, ये आदमी का। तो बाद दफा निशानात भी काफ़ी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बहरहाल पैलियोंटोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं? फॉसिल को स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स बेसिकली हैं क्या? जो पुराने ऑर्गेनिज्म है उनके बचे कुचे मटेरियल या निशानात, ये उनके फॉसिल्स कहलाते हैं। तो इसमें मकसद क्या होता है? ताकि जो शुरू की जिंदगी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्वेटिक बायोलॉजी। तो एक्वा पानी को कहा जाता है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनको स्टडी करें, ये एक्वेटिक बायोलॉजी कहलाता है। आगे एक्वेटिक बायोलॉजी की दो टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन वाटर बायोलॉजी। तो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जो फ्रेश वाटर है ये ज्यादातर फ्लोइंग वाटर होता है और जो मैरीन वाटर है ये स्टेगनेंट वाटर होता है। और दूसरा अगर हम देखें फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में जो दूसरा बड़ा डिफरेंस, इसमें नमकियात कम होते हैं, इसमें नमकियात ज्यादा होते हैं। बेसिकली फ्रेश वाटर का जो कॉन्सेप्ट आया है, फ्लोइंग वाटर कैसे होगा? जैसे जमीन के ऊपर जो सबसे ऊंची जगह वो पहाड़ है और जो सबसे नीची जगह वो समंदर है, और पहाड़ से समंदर तक जमीन इस तरह है, ठीक। तो पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती है, बर्फ पिघलती है, पानी बनता है और पानी फ्लो करता हुआ समंदर में आके गिरता है। तो बेसिकली ये जो रास्ता है पहाड़ों से लेके समंदर तक, इसमें जो भी चीज है वो फ्रेश वाटर के जुमले में आती है। चाहे उसमें दरिया हैं, चाहे उसमें झीलें हैं, लेक्स हैं, या आप कह सकते हैं नहरें आए या तालाब आए, तो जो कुछ भी आ रहा है वो सारा किस में आएगा? फ्रेश वाटर में आएगा। और जब ये आके समंदर में गिर जाते हैं हम उसको कहेंगे मैरीन वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर इतना साल्टेड क्यों है और फ्रेश वाटर कम साल्टेड क्यों है? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब पानी गुजर रहा होता है जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से, तो अपने साथ मिनरल्स और साल्ट लेके आते हैं और समंदर में उसको डाल देते हैं।
जब सूरज इस समंदर के पानी पे पड़ता है तो एवोपोरेशन सिर्फ वाटर की होती है, साल्ट यहीं रह जाते हैं, तो पानी दोबारा यहाँ आ जाते हैं बर्फ बन के और दोबारा मिनरल्स को लेके वापस आ जाता है समंदर। तो हर गुजरते दिन बाद समंदर का जो पानी है वो खारा से यानी उसमें साल्ट ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो बहरहाल अगर हम लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेश वाटर बॉडीज में, जैसे दरिया में, झील में, कैनाल, नहरों में, तो ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। एक तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं और उसके केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स को भी डिस्कस करते हैं। पैरामीटर खुसूसियात को कहा जाते हैं। केमिकल और फिजिकल पैरामीटर से क्या मुराद है? केमिकल जो चीज आप ज्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे पानी की पीएच क्या है, पानी के अंदर कौन कौन से साल्ट है, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो ये उसके केमिकल पैरामीटर। फिजिकल जो आप ज्यादातर फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, कलर है, तो ये फिजिकल पैरामीटर। ये दोनों पैरामीटर क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि ये लाइफ को इफेक्ट करता है। जैसे फिजिकल पैरामीटर में एक पैरामीटर है टेम्परेचर, गर्म पानी, ठंडा पानी, तो गर्म पानी की जिंदगी कुछ और होगी, ठंडे पानी की जिंदगी कुछ और होगी। इसी तरह फिजिकल पैरामीटर में एक पैरामीटर है लाइट, तो जहां लाइट होगी वहां फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म करते होंगे और जहां लाइट नहीं होगी वहां फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें, केमिकल और फिजिकल पैरामीटर, ये उस फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर लाइफ को डिसाइड कर रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैरीन समंदर के पानी की जो जिंदगी है, उसको सी और ओशन में क्या फर्क है? तो सी छोटा समंदर है और ओशन बड़ा समंदर है। अच्छा, जो सी है इसका तो किनारा होता है लेकिन ओशन का किनारा नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करें तो बहुत बड़ा समंदर वो ओशन कहलाता है, और यहाँ जहाँ पानी नहीं है वो लैंड कहलाता है, खुश्की कहलाती है। और ओशन और सी को आपस में छोटा समंदर कनेक्ट करता है, लैंड और ओशन को छोटा समंदर कनेक्ट करता है, जिसको हम सी कहते हैं, सी कहा जाता है। तो बहरहाल चाहे वो सी है या ओशन है, इसकी जिंदगी को हम क्या कहते हैं, मैरीन बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी दोनों चीजें डिस्कस की जाती हैं, इसके केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो फैक्टर्स का काम कर रही होती है कि वहाँ किस लाइफ को होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। अब फिजिकल और केमिकल क्या है ये हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी, तो नाम से जाहिर है ह्यूमन से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें डिस्कस की जाती हैं? ह्यूमन की शक्लो सूरत क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एवोल्यूशन कैसे होती है, उसकी जेनेटिक्स क्या है, उसकी इकोलॉजी क्या है, ये सारी बातें। अब ये एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन से रिलेटेड इन सारी बातों को डिस्कस करना, यानी जितनी भी ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं, अगर वो सारी की सारी ब्रांचेस ह्यूमन के लिहाज से डिस्कस हो रही हैं तो वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन बायोलॉजी। और आखिर में हमारे पास है सोशल बायोलॉजी। तो इंसान का माशरती क्या किरदार है और समाजी जिंदगी उसकी कैसी है, ये सोशल बायोलॉजी के अंदर आता है। जैसे सोशल बिहेवियर में आता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि फलां कौम के अंदर ये खुसूसियत है, जैसे पठानों के बारे में आते हैं, ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं, जो अरब लोग होते हैं वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। तो उनकी इस तरह की जो जिंदगी, उनका जो मिजाज को डिस्कस करना है, ये सोशल बायोलॉजी। कम्युनल लाइफ, इंसान कम्युनिटी में कैसे रहता है, वो कौन से फैक्टर है जो कम्युनिटी बनने में हेल्प करते हैं, इंसान को क्या क्या उस कम्युनिटी के अंदर करना चाहिए कि वो कम्युनिटी मजीद बेहतर हो, तो ये सोशल बायोलॉजी के अंडर आते हैं। तो सोशल बिहेवियर उसकी माशरती जिंदगी, कम्युनल लाइफ उसकी समाजी जिंदगी। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद सर्च करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोसाइटी और कम्युनिटी में, क्योंकि सोशल बिहेवियर में हम उसकी सोसाइटी की जिंदगी डिस्कस करते हैं, कम्युनल लाइफ के अंदर हम उसकी कम्युनिटी की जिंदगी से। तो सोसाइटी को उर्दू में मुआशरा कहते हैं और कम्युनिटी को समाज कहा जाता है। तो ये एक छोटी सी आपकी असाइनमेंट है जो आपने नेट पे सर्च करनी है। तो ये सोशल बायोलॉजी के अंडर आता है, किसी भी इंसान के सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, उसकी कम्युनल लाइफ को स्टडी करना। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस है, इससे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिहाज से
ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से ही तैयार करना है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लेक्चर है और इसका टाइटल है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबो न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से है, वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस। यानी अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करें तो इसमें से टॉप पोजीशन पे ये आरएनए होगा। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलके आरएनए बनाते हैं। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके अंदर जो पेंटोज शुगर वो कौन सी होगी, राइबोस। उसके बाद जब आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने डीएनए के बारे में कहा था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आरएनए है वो आप कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और डबल हेलिकल है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड है डबल हेलिकल। यानी इससे क्या मुराद है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये नजर आ रहा होगा, तो मैं डीएनए का स्ट्रक्चर भी यहाँ थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ, तो दोनों में फर्क आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। इसके दो अलग-अलग स्ट्रैंड है, इसका स्ट्रैंड एक ही है लेकिन अपने ऊपर फोल्ड होके ये डबल नजर आता है। तो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड लेकिन फोल्डेड बैक अपॉन इटसेल्फ, जब ये अपने ऊपर ही फोल्ड होता है तो ये डबल हेलिकल की तरह नजर आता है। अब हेलिकल क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके बाद कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो 4 किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो मिलके आरएनए की बॉडी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ आपने जहन में रखना है 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड है। कभी आप ये समझे कि आरएनए में सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड, वैसे होते तो लाखों की तादाद में है, लेकिन वो जो लाखों की तादाद में है वो है ये सिर्फ 4 किस्म के, जिसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है, सॉरी थायमिडीन नहीं आ सकता क्योंकि थायमीन तो होती नहीं आरएनए, तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यूएमपी। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें किसी के साथ डी नहीं लगाया क्योंकि इसमें जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटरीली पेयरिंग, बिल्कुल सेम सीक्वेंस सेम पेयरिंग होगी जैसे डीएनए की तरह। फर्क क्या है कि डीएनए में पेयरिंग थी एट जीसी, अब चूंकि यहाँ एट नहीं है तो एट, और ये कब होगा जब ये अपने ऊपर फोल्ड होगा, तो जब ए के सामने यू आएगा तो डबल बॉन्ड, जी के सामने सी आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। सेम कंपोजिशन उसी तरह है जैसे हमने डीएनए के अंदर डिस्कस की थी। उसके बाद सिंथेसिस की बात अगर हम करें तो सिंथेसिस हमेशा डीएनए से होती है आरएनए की, यानी डीएनए एक टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है, टेम्पलेट एक सांचे का काम करता है, उस सांचे को देख के फिर आरएनए बनाया जाते हैं। और जितने भी आरएनए की टाइप्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो सारे के सारे डीएनए से बनते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें आरएनए डीएनए से बनाया जा रहा होता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन्स को बनाया जाता है आरएनए से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। यानी आप कह सकते हैं डीएनए, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि डीएनए अपना काम करता कैसे है। डीएनए पहले प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन से चीजें बनती हैं, वो चीजें फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो यानी आप कह सकते हैं डीएनए ने जितने भी सेल के अंदर फंक्शन कंट्रोल करने हैं वो किसको बना के करने, प्रोटीन्स को बना के करने हैं। तो डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए की ट्रांसलेशन होती है, उससे प्रोटीन्स बनाई जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए, तो जिस वक्त हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की, तो आरएनए की जो टाइप्स बनाई गई हैं, ये आरएनए की टाइप्स बेसिकली बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, कि उन्होंने सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इसी बिहाफ पे आरएनए की टाइप्स बनाई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास दो बातें अपने जहन में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप सेल समझें,
इसको आप सेल समझे। तो इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की शक्ल में, और प्रोटीन ने बनना है साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए साइटोप्लाज्म में आ नहीं सकता, उसकी वजह यह है डीएनए के अंदर पूरे सेल को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर ये सपोज साइटोप्लाज्म में आ जाता तो साइटोप्लाज्म में काफी सारे मॉलिक्यूल इसको रिएक्ट करके मे भी खराब कर सकते थे। जैसे कोई भी कंपनी हो, उसकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो कभी भी बाहर नहीं एक्सपोज की जाती। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं दूं, अब कोका कोला का जो फार्मूला है आज तक लोगों के सामने नहीं आया, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर हर कंपनी बना लेगी। तो इसी तरह डीएनए की इंफॉर्मेशन अगर साइटोप्लाज्म, डीएनए खुद बजाते खुद साइटोप्लाज्म में आ गया तो मे भी काफी सारे लोग उस में भी काफी सारे मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट करे। इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा लोगों के सामने कोई एक्सपोज होता है उतनी ही उसके गलतियां आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह डीएनए जब मॉलिक्यूल्स के सामने एक्सपोज होगा तो इसकी इंफॉर्मेशन बदलने के, खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से डीएनए को हमेशा सिक्योर पोजीशन यानी न्यूक्लियस के अंदर ही रखा जाता है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन को कॉपी करके साइटोप्लाज्म के अंदर भेजा जाता है। तो सबसे पहले यानी डीएनए की इंफॉर्मेशन ने साइटोप्लाज्म में आना है ताकि उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाई जा सके, तो ये आरएनए लेके आता है, विच इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन, जो आप कह सकते हैं डीएनए की इंफॉर्मेशन की मुकम्मल तौर पे कॉपी होगी। तो इस वजह से वो आरएनए जो मैसेज को लेकर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर ताकि उससे प्रोटीन बनाई जा सके, तो उसको हम कहते हैं ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का लफ्जी मतलब क्या है? पैगाम लेकर जाने वाला। तो यहाँ आरएनए डीएनए का मैसेज लेकर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस वजह से इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है, और डीएनए किसमें मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। और फिर ये राइबोसोम तक लेके जाता है। राइबोसोम मशीनरी है जिन्होंने इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन बनानी है, और राइबोसोम कहाँ मौजूद है? तो साइटोप्लाज्म। अब जो ही राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो राइबोसोम्स के ऊपर अमाइनो एसिड अरेंज होंगे और प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से चूंकि ये मैसेज को ले जाने वाला है, जो मैसेज को भेजने वाला होता है उसे मैसेंजर कहा जाता है। लेंथ, जब हम लेंथ की बात करें तो डीएनए कभी भी एक जैसी लेंथ का नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो डिफरेंट है। किसी में 51 है, किसी में 100 है, किसी में 574 है, किसी में 273 है। तो डिफरेंट प्रोटीन है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी डिफरेंट है। तो आपने एक बात रूल याद रखना है कि हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो इस वजह से अमाइनो एसिड की तादाद प्रोटीन में बढ़ती चली जाएगी, तो न्यूक्लियोटाइड जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैसेंजर आने की लेंथ है वो साइज ऑफ प्रोटीन पे डिपेंड करती है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जीन क्या है। डीएनए का वो हिस्सा जिसमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो जीन कहलाता है। प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और यहाँ भी यही रूल है कि एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन 3 न्यूक्लियोटाइड स्टोर करेंगे। तो जब मैसेंजर आरएनए कॉपी होते हैं तब भी यही रूल है कि एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड कॉपी करेंगे। यानी आप कह सकते हैं अगर प्रोटीन का साइज बड़ा है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्यादा है, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड, उसके जीन्स में न्यूक्लियोटाइड की तादाद भी ज्यादा है। जीन बड़ा होगा, मैसेंजर आरएनए, और हमेशा मैसेंजर आरएनए डीएनए के सिर्फ जीन वाले पोर्शन से बनाया जाता है। जीन वाले पोर्शन से बनाया जाता है। तो जीन्स जितना बड़ा होगा मैसेंजर आरएनए उतना बड़ा होगा और प्रोटीन्स भी उतनी ही बड़ी होगी। तो ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आप ये समझ लें कि जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, अगर हमने 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनानी है तो 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो जब हम 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो कम से कम इसका जो आरएनए है उसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड लाजमी होने चाहिए। इस वजह से चूंकि प्रोटीन एक जैसी नहीं है, इस जीन्स भी एक जैसे नहीं है, प्रोटीन भी एक जैसे नहीं है, तो मैसेंजर आरएनए भी एक जैसा नहीं होगा। तो ये वेरिएबल लेंथ रखते हैं।
उसके बाद परसेंटेज के हवाले से बात करें तो ये सेल का 3 to 4% होते हैं, यानी टोटल आरएनए का जितना आरएनए सेल के अंदर मौजूद है उसका 3 to 4% ये मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ गई। अब इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर इस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनानी है। अब प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड को यहाँ पहुंचाना है, और अमाइनो एसिड कहाँ है, वो सेल के अंदर बिखरे पड़े हैं। अब सेल के अंदर ये अमाइनो एसिड आते कहाँ से? बेसिकली जो हम खुराक खाते हैं उसकी डाइजेशन, खास तौर पर उसमें जो प्रोटीन हम खाते हैं उसकी जब डाइजेशन होती है तो डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड बनते हैं, उन अमाइनो एसिड को सेल में भेज दिया जाता है। तो सेल के अंदर ये अमाइनो एसिड बिखरे पड़े हैं। अब इन अमाइनो एसिड को इस जगह पर लेकर आना है, इस जगह पर ट्रांसफर करना है। तो इस वजह से वो आरएनए जो इन अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा उसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो नाम से जाहिर है कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक लेकर आना, मैसेंजर आरएनए तक लेकर आना, ताकि उनको अरेंज करके प्रोटीन बनाई जा सके उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैसेंजर आरएनए में स्टोर है। तो वो ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। तो इसको डिफाइन हम कैसे करें? इट पिक्स द अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को पिक करेगा एंड ट्रांसफर टू राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम तक लेके आएगा, और राइबोसोम पर फिर अमाइनो एसिड अरेंज होंगे और उससे प्रोटीन्स बनेगी। आगे ये स्मॉल है, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट फिक्स है। लेंथ से क्या मुराद है? इट इज स्मॉल, और इसमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड है। स्मॉल क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम मैसेंजर आरएनए देखो 3000 न्यूक्लियोटाइड और यहाँ सिर्फ 90 न्यूक्लियोटाइड, तो इस वजह से मैसेंजर आरएनए के मुकाबले में इसकी लेंथ कम है, और इसमें ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो फिक्स है 75 to 90, और परसेंटेज के लिहाज से ये मैसेंजर आरएनए से ज्यादा है। जो आरएनए टोटल सेल के अंदर मौजूद है उसका 10 to 20% ट्रांसफर आरएनए पर मुश्तमिल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये नहीं है कि कोई भी ट्रांसफर आरएनए किसी भी अमाइनो एसिड को उठा के राइबोसोम तक लेकर चला जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं ही है। बल्कि हर ट्रांसफर आरएनए एक मखसूस अमाइनो एसिड के लिए बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है मैथ्यूनिन। अब इसको उठाने के लिए सेल के पास मैट ट्रांसफर आरएनए है, मैथ्यूनिन ट्रांसफर आरएनए। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है आर्जिनिन। अब इसको उठाने के लिए सेल के पास आर्ज ट्रांसफर आरएनए है। तो जो आर्जिनिन ट्रांसफर आरएनए वो कभी भी मैथ्यूनिन को लेके नहीं जाएगा राइबोसोम तक। तो यानी आप कह सकते हैं कि हर ट्रांसफर आरएनए एक मखसूस अमाइनो एसिड के लिए बनाया गया है। उसने उसी अमाइनो एसिड, अब उसने सिर्फ एक अमाइनो एसिड नहीं लेके जानी, आर्जिनिन सेल के किसी भी हिस्से में पड़ी हो तो वो आर्ज ट्रांसफर आरएनए ही लेके उसे राइबोसोम तक जाएगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं, जब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की, तो हमने ये अमाइनो एसिड के टॉपिक में डिस्कस भी की थी बात। टोटल अभी तक सेल में जो अमाइनो एसिड डिस्कवर हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स 170 है। उसमें से 25 ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटीन्स बनानी, और 20 ऐसे हैं विच आर द पार्ट ऑफ एवरी प्रोटीन, जो हर प्रोटीन का हिस्सा है। यानी उस 20 के बगैर प्रोटीन बना ही नहीं सकते। तो इस वजह से सेल ने अगर प्रोटीन बनानी है, चूंकि सेल की प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड के बगैर बन नहीं सकती, तो कम से कम सेल के पास 20 किस्म के ट्रांसफर आरएनए तो हर हाल में होनी चाहिए। ज्यादा हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में 45 के राउंड अबाउट आरएनए होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे पास मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, कम से कम लेवल है, वो 20 से कम नहीं हो। क्योंकि 20 से अगर 18 हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 20 अमाइनो एसिड चाहिए, तो 2 अमाइनो एसिड प्रोटीन में नहीं लगेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही तरह बनेगा नहीं। तो यही बात लिखी हुई है, ट्रांसफर आरएनए इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड। तो सेल शुड हैव एट लीस्ट, इस पर आपने थोड़ा सा गौर करना है, एटलीस्ट कम से कम 20 किस्म के ट्रांसफर आरएनए सेल के पास लाजमी होने। 20 अमाउंट में नहीं, तादाद में नहीं, 20 अकसाम के। इसी तरह हम बात करें कि 20 अमाइनो एसिड नहीं प्रोटीन में लगे, प्रोटीन में तो अमाइनो एसिड हो सकते हैं हजारों की तादाद में लगे, लेकिन अकसाम 20 है। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए
तादाद में तो हो सकते हैं लाखों हो, सेल के अंदर हो सकते हैं हजारों हो, लेकिन उनकी टाइप्स एटलीस्ट 20 होनी चाहिए। उसके बाद अमाइनो एसिड आ गए राइबोसोम तक। अब राइबोसोम इन अमाइनो एसिड को अरेंज करवाता है, ट्रांसफर आरएनए बड़े सीक्वेंस से अमाइनो एसिड को रखते चले जाते हैं और वो प्रोटीन बनती चली जाती है। यानी आप कह सकते हैं राइबोसोम ने इन अमाइनो एसिड को अरेंज करवा के प्रोटीन बनाना है। इस वजह से राइबोसोम को हम कहते हैं इट इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो जब हम राइबोसोम्स की बॉडी देखते हैं तो राइबोसोम में दो चीजें हैं, प्रोटीन्स है, आरएनए है। तो दोनों चीजें मिला के राइबोसोम की बॉडी, और वो आरएनए जो प्रोटीन की राइबोसोम की बॉडी में होता है उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और सबसे ज्यादा सेल के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए ही है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल आरएनए। लेकिन इस 80% में 40 to 50% है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। बाकी जितना भी आरएनए है वो हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो और वो अवेलेबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, लेकिन पड़ा वो सिर्फ आरएनए की शक्ल में होते हैं। तो 40 to 50% यूजुअली राइबोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन है उसके साथ अटैच होता है। तो बहरहाल इसका काम क्या है, अमाइनो एसिड को अरेंज करना है, उससे प्रोटीन बनाना है। इस वजह से इसको हम कहते हैं ये मशीनरी का काम करते हैं, ये मशीनरी का काम करते हैं। तो यहाँ अगर आपको नजर आ रहा है तो मैसेंजर आरएनए आया, इसके ऊपर अमाइनो एसिड आके इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुड़ेंगे और प्रोटीन्स बनेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये राइबोसोम ही है ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम्स, और जिसमें राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड ट्रांसलेट का मतलब यहाँ प्रोटीन का बनना है, और ट्रांसलेट करेंगे जो मैसेज आया है, जो मैसेंजर आरएनए जेनेटिक मैसेज लेके आए जिनसे उसको प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल हो। इस वजह से इसको हम कहते हैं ये मशीनरी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये राइबोसोम की सरफेस ही है जहां मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए इन अमाइनो एसिड लेता चलाएगा और उनको एक सीक्वेंस के साथ अरेंज करेगा, और अरेंज करने के बाद प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो ये तीनों टाइप्स जो है मैसेंजर आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए की, ट्रांसफर आरएनए की, आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। मैसेंजर आरएनए मैसेज का काम कर रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर का काम कर रहे हैं, और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल बॉडी बना रहे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की गई है। उसके बाद आखिरी जो छोटा सा टॉपिक है वो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कंजुगेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों का मिलना, तो इसको हम कंजुगेशन कहते हैं। अब सवाल ये है मुख्तलिफ चीज़ों से क्या मुराद है, जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं सुक्रोज, तो फ्रक्टोज भी मुख्तलिफ है, ग्लूकोज भी मुख्तलिफ है। नहीं, जब हम कंजुगेशन की बात करते हैं हमेशा जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं उनकी कैटेगरी डिफरेंट होनी चाहिए। कैटेगरी से क्या मुराद है, चार बड़े मॉलिक्यूल हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगर एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल हमने न्यूक्लिक एसिड से उठाया, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन से उठाया, अब दोनों को मिला दिया, अब ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बन गए। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज आर कंबाइंड टू फॉर्म कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको का वर्ड जब भी आएगा, ये जो ग्लाइको है या ग्लाइकेन है, ये हमेशा कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन। अब इनका सेल में क्या फंक्शन है, सेल से बाहर जितनी भी चीजें सिक्रीट होती हैं, सेल काफी सारी चीजें अपने एक्स्ट्रा सेलुलर यानी अपने बाहर के एनवायरनमेंट में निकालता है, वो सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं ये जो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन दे आर द कंस्टिट्यूएंट, ये पार्ट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी पार्ट्स हैं ये। उसके बाद लिपिड्स जब प्रोटीन से मिलती है तो लिपोप्रोटीन्स बनते हैं, और लिपोप्रोटीन का जो सबसे बड़ा फंक्शन है सेल के अंदर, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क यानी ढांचा बनाना है। अब अगर आप देखें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, इसको भी कहा दे आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ लिखा है दे फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको आप इस अंदाज में समझे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वास्केट है, जब हम बात करते हैं इसका फ्रेमवर्क किन चीजों से मिलकर बना, तो दो चीजें सामने आती हैं।
एक कपड़ा है, एक धागा है, लेकिन उसके साथ इसमें बटन भी लगे हुए। अब बटन फ्रेमवर्क नहीं बना रहे, ढांचा नहीं बना रहे, लेकिन बटन की वजह से एफिशिएंसी इस बास्केट की इम्प्रूव हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी तरह आप कह सकते हैं जो बुनियादी ढांचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सिर्फ लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, लेकिन उस मेम्ब्रेन के अंदर कहीं कहीं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी लगे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो इस वजह से उनको पार्ट्स कहा गया है और यहाँ फ्रेमवर्क कहा गया है। उसके बाद चौथी जो चीज है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस की है, नेगेटिव और एसिडिक होते हैं न्यूक्लिक एसिड, नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। इसकी रीजन क्या है, ये आपने खुद प्रीवियस लेक्चर सुन के इसके रीजन को डिस्कवर करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद प्रोटीन्स, जाहिर बात है जब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिलेगा तो प्रोटीन शुड बी पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक, उसको बेसिक होना चाहिए, तब जाके ये दोनों मिलेंगे और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम की बॉडी की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना है, डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना, और जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन्स होती है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या वैसे एमसीक्यूज आ जाए, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, तो आप कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन्स आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, तो ये बेसिक इन नेचर होती है, क्योंकि जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये दोनों के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन्स, यानी क्रोमोसोम बेसिकली न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं, दो किस्म के मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। तो ये जो न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और क्रोमोसोम का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और क्रोमोसोम का फंक्शन क्या, जीन एक्सप्रेशन। अब व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन है क्या? तो जीन डीएनए का वो पार्ट है जिससे प्रोटीन ने बनना है। अगर जीन की इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, और होती कैसे है, जीन से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, तो जीन की इंफॉर्मेशन अगर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहेंगे जीन एक्सप्रेस हो गया है, यानी जो इसका इंफॉर्मेशन थी उसने अपने आप को प्रोटीन की शेड्यूल में एक्सप्रेस कर दिया है। तो जीन एक्सप्रेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन, इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो न्यूक्लियोहिस्टोन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और क्रोमोसोम का जो फंक्शन है जीन एक्सप्रेशन को, उसको भी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वजह से इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर का एंड है और ये आपको पता है कि जो चैप्टर हमने डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 2, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ दिस बायोलॉजी। तो इस वजह से इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है ताकि पेपरों से पहले, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे हैं और इसमें से एमसीक्यूज बड़े कंसेप्चुअल बनते हैं, आपके पेपर में बड़े कंसेप्चुअल बन सकते हैं। और जो आपका एमडी कैट है उसमें तो इंतहा दर्जे के इसमें से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो इस वजह से इसके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह, आप कह सकते हैं, क्लियर करके फिर आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. This is 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐳𝐜 caducifolia, that is subtropical succulent species of flowering plants in the sperm family of 𝐒𝐜𝐢𝐴ceae belonging to angiosperms. It is mainly found in the arid regions of Pakistan and India, especially in northwestern Indian subcontinent region. In Pakistan and India, it is commonly known as leafless milkhead thor leafless spur. If we talk about its branching system, 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐳𝐜 caducifolia can form a dense branching bushes up to 3 meter 10 feet in height to 10 meter 33 feet in diameter. Now we have to discuss its distribution. It is mainly distributed in the third desert in northwest part of Indian subcontinent on the boundary between India and Pakistan. Thank you for watching and don't forget to subscribe.
Science Hub for more information about plants. This is Madagascar periwinkle plant. The scientific name of this plant is 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐿 rosea, and it is commonly known as bright eyes Cape periwinkle graveyard plant, pomade pink periwinkle, rose periwinkle. This is a perennial species of flowering plant belonging to family Apocynaceae in the angiosperms. It is native and endemic to Madagascar, but nowadays can be grown elsewhere at any place as an ornamental and medicinal plant. And now it has pan-tropical distribution. It is the source of drugs like vincristine and vinblastine, which are used to treat cancer. Formerly, it was known as Vinca rosea. Thank you for watching, and don't forget to subscribe. Science Hub for more information about plants. This is bougainvillea. The common name of this plant is pepper flower. Here we can see the bracts are peppery in appearance and texture. That's why this is called pepper flower. These are bracts that are surrounding the inconspicuous flower. The species can grow about 1 to 12 meters in height, scrambling over other plants with their thorny spikes. These may be different types, like they may be evergreen or deciduous. The evergreen species grow in that areas where there is frequent rainfall, and the deciduous species in those areas which have dry season almost all the years. The leaves may be simple, alternate with each other like this. These may be alternate and acute in shape. They are about 4 to 16 centimeter long and 2 to 4 centimeter wide. Morphologically, they are simple, have no lamina dissected, and acute in shape. The pattern is alternate. They may be alternate with each other. The flower is actually white. Here we can see this is its flower. And there may be 3 flowers. These are actually bracts. These are not petals. These are bracts varying from different colors: magenta, orange, red, purple, yellow, and pink in different species. The flowers are surrounded by these bracts, not by sepals. Thank you for watching, and don't forget to subscribe. Science Hub for more information about plants. Polyacrylamide is a kind of chemicals used for wastewater treatment with rapid sedimentation and efficient flocculation. We has more than 20 years of experience in polyacrylamide production, serving more than 10,000 companies, and our products have been sold to more than 80 countries around the world. We have an experienced technical team to help you customize the use of wastewater treatment chemicals, improve wastewater treatment solutions, and save operation costs.
बायोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज का एक एरिया में इनहिबिट करना रहना, और उसकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी। प्राइमरी है प्राइमरी का मतलब ये एरिया जहाँ पर पहले ऑर्गेनिज्म इनहिबिट नहीं कर सकते, वहाँ पर कम्युनिटी का खड़ा होना, और वहाँ पर यानी कि पहले हल्का स्क्रीन में आना, फिर ग्रासलैंड्स बनना, और फिर फॉरेस्ट आना। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है कि पहले लाइफ एग्जिस्ट करती है, कोई डिस्ट्रप्शन आती है, कोई भी नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से दोबारा फॉरेस्ट में डेवलप। ये सेकेंडरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है कि सबसे हाइट में जो बड़े प्लांटेशन है स्टेबल जो होती है, ठीक है। प्रोफेसर पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को इतना सिखा भी रहे हैं। प्रैक्टिकल तौर पर इन मॉडल्स को डेवलप करने में इन बच्चों को इस काबिल बनाया है कि जो उसको कठिन किताब उसके I am here to present a model that is all about the respiratory system. We share with this model the physiology and anatomy of respiratory system. Pulmonary artery, the oxygenated blood carrying and deoxygenated blood for lungs, blood lungs circulate जाती है. Then pulmonary vein, oxygenated blood for lungs से heart tक. And then cartilaginous veins है, blood trachea, air tech small lungs से connect करते हैं. Then air connects lungs से ऊपर. हमारा पर्पस यही है कि हम लोगों को बताएं कि अवेयरनेस दें इसका सांस लेने का तरीका गलत है, हम इसको एज अ माउथ और एज अ नोज दोनों तरीके से ये किया है। ओके बेटा, ये इसकी वर्किंग शुरू करवाएं। कैसे ऑक्सीजन को हम इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल I am so glad to be a part of this exhibition. This is animal health. Animal health is the basically of life, and animal health करते हैं, organ tissues बनते हैं, organs बनते हैं, hormone system organic है, and then health को जब हम organism से show किया, जैसे ये फायदा है, ये बताया था जो पिछले बार होते हैं, साइनस इन्फेक्शन का होता है। Why you make animal cells? We make animal cells because we are tried to show the organism and basically the plant. What is the purpose of these organisms? The these organisms work
अगर आप खत्म हो गया है या आप किसी कार इशू एनी इशू किसी भी व्हीकल का कोई भी इशू है स्टार्ट हो रही है हमारा मैकेनिक व्हीकल की स्टोरी के लिए अपना मैकेनिक भेजेंगे ना यूजर आपको हम अपना जब यूजर यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेगा तो एडमिन के पास एडमिन कोई भी हो सकता है कोई भी शॉप वाला एक अपनी प्रोफाइल में हम करेगा कोई भी यूजर है उसने अपना ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पे मेरे पास ये ऑर्डर आ गया मैं जस्ट एक्सेप्ट करूँगी फिर ये चला जाए स्पेशली आपके प्रोजेक्ट्स देखने शुरू
Hi, I'm Evan. I study natural resources at Cornell University, and I'm going to tell you about the world's most ingenious, most clever predators, carnivorous plants. If you'd like to know how plants that look like these are able to eat things that look like these, then keep watching. Imagine you're a plant. Instead of eating with your mouth, you eat with your roots. And instead of eating food, you turn soil nutrients into energy using the sun. Now imagine that you're a plant in a wetland. The wet, mushy soil around your roots doesn't have enough nutrients for you to survive because they're carried away by the water. They realized that all over their leaves, little packets of energy with legs and wings were crawling. We call those packets insects. All the plants had to do was figure out a way to get those nutrients into their bodies. Plants that successfully did this became some of the world's most incredible organisms, carnivorous plants. So of all organisms, how did plants figure out how to eat insects? Each group of carnivorous plants has evolved incredible strategies for doing so. Let's imagine we're carnivorous plants. There's lots of insects crawling and flying around us, but how do we get them to come to us so that we can eat them? Think about fishing. Fish don't want to bite a sharp hook, but they do, because fishers use this, a lure. A lure tempts you to do something, just like how this lure tempts fish to eat it because it looks like a tasty bug. Carnivorous plants also use lures. One type of lure is color.
Many insects happen to be attracted to the color red because lots of flowers are colored red, and flowers have nectar that insects can drink. For this reason, lots of carnivorous plants are colored red where their traps are, such as the jaws of a Venus flytrap, the tentacles of a sundew, and the mouths of some pitcher plants. Some carnivorous plants actually produce nectar. Venus flytraps secrete nectar on the rim of their traps with glands. Glands, by the way, are special cells that make something, like liquid, similar to how tear glands in our eyes make tears. Pitcher plants also have glands that secrete a trail of nectar leading up to the trap. And finally, some carnivorous plants make fake nectar. The leaves of sundew and butterworts are glistening in what looks like delicious nectar, but in reality is a sticky glue. This brings us to the next step of how carnivorous plants eat. Once an insect has come to check out the plant, how do we get it to stay long enough to eat it? Carnivorous plants need to use traps. This is where carnivorous plants become really cool. Carnivorous plants have evolved lots of ingenious adaptations to trap their prey. One method is sticky leaves. When an insect lands on these leaves, its legs instantly become tangled in a gooey mess. As the insect struggles to break free, it only gets more legs and wings caught. But wait, it gets better. Sundew can move their tentacles. That's right, these plants can move. Shortly after catching an insect, a sundew will begin to move its tentacles to cover an insect. Some species can even move their entire leaves, wrapping them around their prey. Sundews aren't the only type of carnivorous plants that can move. Venus flytraps are famous for doing so. If you look closely at a Venus flytrap, you'll notice there are little hairs on the edge of the trap. As an insect is happily going along, it's likely to bump these hairs. The first time it does so, nothing happens. The second time, bam! This trap slams shut, trapping the insect inside. Finally, we have the American pitcher plants. These carnivorous plants don't even need to move to trap their prey, yet they probably catch more than any other type of carnivorous plants. Just by looking at these beautiful plants, you can probably guess where the insects go. But it's not as simple as you might think. Pitcher plants have 3 tricks up their sleeves. First, the nectar they make contains a chemical that makes the insects drowsy and clumsy when they drink it. Second, most pitcher plants grow stiff hairs on their lids pointing downwards. These hairs make the surface very difficult for insects to walk on. And third, the inside of these pitchers are coated in a smooth, waxy substance that makes it very slippery. So, what happens when we have a clumsy insect walking on these difficult surfaces? It falls in. We've now seen how 4 types of carnivorous plants lure and trap their prey. The last step is digestion. When we say digestion, we mean that the plants break down the insect's body and absorbs the nutrients. When we eat, we use our teeth to mash up food, enzymes in our saliva to start breaking the food down, and acids in our stomach to do the rest. Carnivorous plants don't have teeth, saliva, and stomachs, but they do make acids and enzymes. After a plant has caught an insect, it begins to secrete a mixture of acids and enzymes from its leaves to start breaking the insect down. Butterworts and sundews will start to do this right after they've caught their insect. The tentacles that move over an insect instantly start secreting this juice. Some butterworts will even tilt their leaves to make a pool of digestive juices. When soaked in this pool, insects begin to break down and dissolve. The plants then reabsorb the nutrients back into their leaves. After a Venus flytrap has sealed around its prey, it starts to pump in a mixture of digestive juices. Here, I have an old pitcher plant leaf. If I cut this open, what do you think we're going to find? At first, we have a smooth, waxy surface inside the pitcher. This is the slide that the insect falls down. Further down, there are small, stiff hairs pointing towards the bottom. These hairs stop the insect from climbing back out. And here at the bottom, you can see the insects that this leaf has caught. After an insect falls into a pitcher plant, there are 2 main ways it dies. In most pitcher plants, the insect simply can't crawl out and it starves. In others, the pitcher plants have a pool of water that the insect drowns in. Either way, the insect bodies are then broken down by acids, enzymes, and sometimes bacteria, and the nutrients are reabsorbed into the leaves. Over time, some pitcher plants collect so many insects that their leaves become so heavy that they topple over.
We've now seen how carnivorous plants lure their prey with color and nectar, how they trap their prey with sticky leaves, moving traps, and pitchers, and we've seen how they digest them with acids and enzymes. Now that you know so much about carnivorous plants, you can go out and see them in the wild. But wait, don't plants as cool as these only live in steamy, faraway jungles? No, they actually grow here in the United States. Did you know that Venus flytraps are found in North and South Carolina and nowhere else in the world? Or that there's a species of pitcher plant and sundew that live in Canada and northern United States. Butterworts also live in Canada and the southeastern United States. So where would you go to find them? If you live in the northern part of the continent, you should look in peat bogs. These are open wetlands covered in thick, spongy mosses and grasses. If you live in the southern half of the continent, you're better off looking in wet, open pine savannas. Just remember that you should never, ever take a carnivorous plant from the wild. Sadly, carnivorous plants are quickly disappearing as people poach them and destroy their habitat. Not many people care about the wetlands that carnivorous plants grow in. To create buildings and dams, people are draining and flooding the wetlands that carnivorous plants need to survive. They need their wetlands to stay exactly the way they are. So go ahead, look up where carnivorous plants grow in your state, and go out and find them in the wild. It may take a while to find them, but I guarantee that you will not be disappointed.
Top 16 most funny birds dancing. Number 1. The greater bird of paradise. Number 2. Red-capped mannequin. Number 3. Black-footed albatross. Number 4. Western Croatia. Number 5. Magnificent rifle bird. Number 6. Sandhill crane. Number 7. Bird of paradise. Number 8. Corollas Croatia.
Number 9. Waved albatross. Number 10. Chilean flamingo. Number 11. Blue-footed booby. Number 12. Ragiana bird of paradise. Number 13. Kingbird of paradise. Number 14. 12-wired bird of paradise. Number 15. Great Argus pheasant. Number 16. Sage grouse.
Africa is located on a great hill of unbelievable, stunning, and incredulous discoveries that still amaze scientists to this day. These discoveries are breathtaking, and if not mentioned, would never be believed. So in this video, we will share with you 20 things scientists discovered in Africa that shocked the world. Number 20, Homo naledi, new human species discovered. In 2013, a group of cave explorers stumbled upon a discovery that would rewrite the story of human evolution. In a remote chamber of the Rising Star Cave system in South Africa, they found a treasure trove of bones belonging to a previously unknown species of human, now known as Homo naledi. The excavation of the chamber proved to be a challenging task, as the narrow passageways and jagged rocks made it almost impossible for a fully grown adult to maneuver through. Due to this, a group of young women who were small enough to fit inside the cave had to be recruited. The bones of Homo naledi displayed a combination of primitive and advanced features, leading scientists to believe that this species existed alongside our own ancestors, the Homo sapiens, and may have played a role in shaping human evolution. What makes Homo naledi unique is its small brain size, believed to be 1/3 the size of our own. Its hands and feet, however, suggest a greater ability to manipulate objects. This has led scientists to believe that Homo naledi was capable of complex behaviors and may have had a social structure similar to our own. Despite these exciting discoveries, the exact age of Homo naledi remains a mystery. Radiometric dating techniques have placed the bones to be between 236,000 and 335,000 years old. However, further research is needed to determine its exact place in the timeline of human evolution. To this day, scientists remain baffled as to how the multiple skeletons of Homo naledi found their final resting place in the cave where they were found. Some experts suggest that the chamber may have served as a burial ground. Others, however, speculate that the cave may have been a deadly trap, leading to the demise of an entire group of early humans. Number 19, diving blue hole of Death Dahab. Nestled along the coast of the Red Sea in Egypt lies a natural wonder that has captivated the hearts of divers and adventurers for generations. Known as the Blue Hole, this underwater sinkhole in Dahab boasts a depth of over 100 meters and is surrounded by sheer cliffs that drop off into the crystal clear waters below. The Blue Hole is not for the faint of heart. Divers must be certified and experienced in deep diving to explore its depths safely. But for those who dare to take the plunge, the rewards are immense. Schools of colorful fish and vibrant coral can be spotted in the deep blue waters. But the Blue Hole's beauty is also laced with tragedy. It has claimed the lives of many inexperienced divers, earning it a reputation as one of the most dangerous diving spots in the world. While there is no official record, some estimate the diving casualties to be as high as 200 in recent years. Among them was Yuri Lipsky, a Russian-Israeli diving instructor whose tragic demise became the talk of the diving world in April 2000. Lipsky donned an air tank and a helmet camera, loaded his belt with weights, and plunged into the Blue Hole. He never returned. You see, at over 300 feet underwater, divers are susceptible to nitrogen narcosis. This condition can cause hallucinations, overconfidence, confusion, and impaired judgment, which can lead to fatal mistakes. Despite the risks, the Blue Hole continues to draw thrill seekers from all over the world, eager to test their limits and explore the unknown. It is like a siren's call that proves too irresistible to ignore. Number 18, creepy dead trees in Deadvlei. Deep in the Namib Desert lies a place that looks like something straight out of a surrealistic painting. Here, in a barren white clay pan called Deadvlei, stands a haunting landscape of ancient dead trees that have been scorched black by the relentless African sun. It's hard to imagine now, but just 900 years ago, Deadvlei, which translates to dead marsh, was a thriving oasis, teeming with life and vitality. However, as the climate dried up and the desert expanded, the valley became cut off from its water source by towering sand dunes. The once lush forest died, leaving behind only the skeletons of the trees that still stand today as stark silhouettes against the sky, their twisted branches reaching up like bony fingers. The dry climate is so harsh that the trees have not been able to decompose properly, leaving them preserved as eerie and haunting reminders of the past. It is a site that has drawn photographers, filmmakers, and adventurers from around the world to witness its eerie beauty.
The contrast between the white clay pan and the blackened trees creates a dramatic and otherworldly atmosphere, and the lack of any vegetation in the area gives you the feeling of being in a desolate, forgotten place. Number 17. Discovery of a new continent and ocean. In the heart of East Africa, in the Afar region, Ethiopia lies a geological phenomenon that has captivated the attention of scientists and adventurers alike: the splitting of Africa. For millions of years, the African continent has been slowly tearing apart, and the Afar region is ground zero for this incredible event. The Afar region is located at the junction of three tectonic plates: the Nubian plate, the Arabian plate, and the Somalian plate. These plates are in constant motion, pushing and pulling against each other. As a result, the Earth's crust in the region is extremely thin, and magma from the mantle is able to rise to the surface, creating a landscape of volcanoes, hot springs, and geysers. It is in this volatile environment that the splitting of Africa is occurring. The only sign of this slow but steady process is a 35-mile-long split which formed in 2005. The split is located in a region known as the East African Rift Valley and measures more than 50 feet in depth and 65 feet across. Scientists predict that millions of years from now, the rift will expand and break Africa into two continents. The smaller continent will include present-day Somalia and parts of Kenya, Ethiopia, and Tanzania, while the bigger one will include everything else. As a result, a new ocean will eventually form between East Africa and the Arabian Peninsula. This creates the possibility that countries such as Kenya and Uganda could develop a coastline due to the formation of the new ocean. Number 16. Dinosaur unearthed in Zimbabwe. In the remote wilderness of Zimbabwe, a team of scientists who embarked on two expeditions in 2017 and 2019 uncovered the remains of Africa's oldest dinosaur, the Embryrosaurus rathi. This fascinating discovery was a significant breakthrough in the field of paleontology. The name Embryrosaurus comes from the local Shona language where the fossils were found. The species name rathi honors the paleontologist Michael Rath, who first reported fossils in the region. The Embryrosaurus rathi is believed to have roamed the Earth over 230 million years ago during the Jurassic period. It was a small herbivorous dinosaur, measuring about 6 feet in length and weighing around 60 pounds. Its slender body and long neck allowed it to reach for vegetation in hard-to-reach places. While the discovery of the Embryrosaurus rathi is undoubtedly exciting, researchers are thrilled at the possibilities it presents for uncovering more information about Africa's prehistoric past. The finding suggests that Zimbabwe was once home to a diverse range of dinosaurs, and further exploration could yield even more fascinating discoveries. Number 15. Eye of the Sahara and Lost City of Atlantis. The Richat structure, or the Blue Eye of the Sahara, is a geological marvel found in the vast expanse of the Sahara Desert in Mauritania. This stunning landmark is a natural wonder that has puzzled scientists and intrigued adventurers for decades. The circular formation measures approximately 50 kilometers in diameter, making it one of the largest and most striking structures visible from space. The center of the Richat structure is a raised plateau that stands at more than 600 feet above the desert floor. Surrounding the plateau are concentric rings of rock that form a series of ridges and valleys, giving the structure the appearance of a giant bullseye. The rock layers themselves are made up of ancient sedimentary rocks, including sandstone and limestone. Scientists believe that the structure was formed by a combination of volcanic activity and erosion, which gradually exposed the different layers of rock and created the unique circular pattern. However, some people have different theories about the origin of this enigmatic structure. Some speculate that it could be the remains of the lost city of Atlantis, mentioned in ancient texts by the Greek philosopher Plato. While there is no concrete evidence to support this theory, the possibility remains intriguing to many. The concentric rings and circular shape of the Richat structure have also led some to believe that it was a man-made construction. Well, whether it is a natural formation or the remains of a lost civilization, the Richat structure continues to capture the imagination of people around the world. Number 14. Alien sky blue stones. Imagine holding in your hand a stone that is said to have come from the heavens. This is the story of the strange blue stones that Italian geologist and archaeologist Angelo Pittoni obtained from a Fula chief in Sierra Leone in West Africa in 1990. According to the tribe, the stones were given to them by extraterrestrial visitors from the sky.
The mysterious stones were like nothing like Pittoni had seen before, and when he got to Europe and sent them to research laboratories for testing, it was discovered that they were unique and did not match any known mineral. Despite extensive testing, researchers could not explain the blue color of the stones. When a piece of it was reduced into fine particles and viewed under a microscope, the blue color was invisible. Even extreme heat or acid could not alter or break apart the stones. Pittoni believed that the blue stone looked more like a pure turquoise found on the chest of Egyptian priests. He even called it the stone of heaven, a phrase to mean that it is different from any other gemstone known to man. So where did they come from? Were they truly a gift from extraterrestrial visitors? Or do they hold secrets from ancient civilizations that have long been forgotten? Number 13. Unidentified heads discovered, Leidenburg heads. In Leidenburg, South Africa, a young boy stumbled upon a groundbreaking discovery that would rock the archaeological world. Carl Ludwig von Basing was innocently playing on his father's farm in 1957 when he noticed peculiar pieces of pottery in the soil. Little did he know, he had just uncovered the Leidenburg heads, a series of fascinating artifacts that would go down in history as some of the earliest examples of Iron Age art in the Southern Hemisphere. The heads were initially fragmented and scattered, but through careful excavation, they were pieced back together at the University of Cape Town. In total, 7 heads were reconstructed, 2 large and 5 small. 6 of these heads depict human characteristics, while the 7th has striking animalistic features. Interestingly, 4 of the smaller heads share similarities in both scale and design, leading many to believe they were created as a group. After extensive carbon dating, the heads have been dated to approximately 490 AD. Experts have suggested that they were used for ceremonial purposes by early Iron Age inhabitants, due to the small holes found in the sides of the smaller heads. These holes were likely used to connect the heads to poles or costumes during performances. Today, these remarkable heads can be seen on display at the South African Museum in Cape Town. Number 12. Sahara Desert, Africa. Close your eyes and imagine the Sahara Desert. What do you see? A vast expanse of sand, the sun shining overhead, and no water source in sight. You're right, that's exactly what the Sahara Desert is. In fact, it is the largest hot desert in the world, and 3rd largest overall after Antarctica and the Arctic, covering an incredible 9.2 million square kilometers, which is almost the same size as China. It is not only vast, but also mysterious. Believe it or not, some 11,000 years ago, the desert wasn't always hot, dry, and unforgiving. The area was once green, packed with lakes, rivers, and grasslands that drew in animals such as hippos, antelopes, elephants, and a host of other animals. This green Sahara occurred due to the Earth's constantly changing orbital rotation around its axis, a pattern that repeats itself every 23,000 years. You see, when the Earth tilts at different angles, it changes how solar radiation is able to penetrate the Earth's atmosphere. This meant that during the green savanna, the tropics received more radiation from the sun, and summer and winter rains reached the heart of the now barren desert. This increased rainfall in turn allowed the growth of a stunning diversity of flora and fauna. But from about 5,000 years ago, the Sahara began to dry out again, and it's believed to have been due to geographical reasons that had little to do with humans. So while the Sahara may be dry and desolate now, there is hope on the horizon. Experts believe that in about 15,000 years from now, the region could once again transform into a green and fertile paradise. Number 11. Child of Tong. In 1924, quarrymen in Taung, South Africa made an astonishing discovery that would change the course of human history. While working on limestone deposits on the Buxton Lime Works, they uncovered a small skull of a child. The skull was brought to the attention of Raymond Dart, an anatomist and anthropologist who immediately recognized its significance. Dart theorized that the fossilized remains belonged to a hominin species, or early human ancestor, that lived approximately 2.8 million years ago. Dart named the new species Australopithecus africanus, or Southern Ape of Africa. At the time the Taung child was discovered, most believed that early human ancestors originated in Europe, but the Taung child challenged this theory. Since it was the first early human fossil found in Africa, this provided clear evidence that Africa was the birthplace of humankind and supported the out-of-Africa theory. This theory states that modern humans evolved in Africa before migrating to other parts of the world. Not only did the Taung child confirm this theory, but
but it also presented significant anatomical features. It had a brain size and teeth similar to those of apes, yet its skull and dental arch were similar to those of humans, representing an intermediate form between the two. Between 1936 and 1947, several more Australopithecus fossils were unearthed in South Africa, this time belonging to adult specimens. These discoveries lent further support to Dart's initial claim that the Taung child was indeed an early human ancestor. Today, the Taung child is revered as a vital piece of human history, and its discovery revolutionized the field of paleoanthropology, forever changing our understanding of where we came from and how we got here. Number 10. Mauritius. The stunning island of Mauritius, which lies southeast of the coast of Africa, is home to a diverse array of flora and fauna and spectacular coral reefs. Among these natural wonders is an incredible sight that has fascinated visitors for years, and this is an underwater waterfall. Seen from the shores, it may not appear like much, but once you take to the skies on a helicopter tour of the island, you'll notice something truly fascinating. The shoreline appears to give way to a magnificent waterfall flowing beneath the waves. The sight is nothing short of breathtaking. However, the truth is that the so-called waterfall is actually an optical illusion caused by sand and silt deposits sliding down the slope and dropping into the depths below. As the sand and silt run off the ocean floor, they create the illusion of a waterfall, or the island being sucked into a vast drain. Despite not being a real waterfall, this phenomenon still captivates visitors to Mauritius, who marvel at the incredible natural beauty of this unique island in the Indian Ocean. Number 9. Stonehenge of Africa. Located around 700 miles south of the Great Pyramid of Giza and about 60 miles west of the Nile, lies a stone complex that rivals even the famous Stonehenge of England. It is known as the Nabta Playa. The Nabta Playa was first discovered in the 1970s by a team of archaeologists. They found a series of stone structures that appeared to be aligned with the stars, leading some to refer to the site as the Stonehenge of Africa. But unlike its more famous counterpart in England, the Nabta Playa is much older, dating back over 7,000 years. The site includes a series of stone circles, megaliths, and other structures, which are thought to have been used for astronomical observations and as a calendar to track the changing seasons. The ancient people who built these structures were likely nomadic herders who traveled through the region with their animals. The most significant structure of the Nabta Playa is the calendar stone circle, which is made up of 4 pairs of large stones and an assortment of smaller ones. Archaeoastronomers and archaeologists confirmed in a study published in 2007 that the stones were possibly aligned with the stars Sirius and Arcturus, the star system Alpha Centauri, and the belt of Orion. You should also know that the site's historic importance was threatened after tourists and visitors began defacing the stones and moving them around, eventually changing the alignment. In response, the stones were relocated to the Nubian Museum in Aswan, Egypt, where visitors can now view the monument in its original formation from a safe distance. Number 8. Burkina Faso humans and crocodiles. In the lakeside village of Banjul, Burkina Faso lies an unusual phenomenon that defies the norm of what we know about crocodiles. While crocodiles are known for their deadly nature and ruthless reputation, in Banjul, they have a different reputation, one that involves being friendly and even playful with humans. According to local legend, the unexpected relationship with these predators goes back to at least the 15th century. At that time, a drought hit the small village of Banjul, leaving its inhabitants thirsty and desperate. That was when guardian crocodiles emerged and led the thirsty villagers to a hidden pond where they could quench their thirst. To show their gratitude, the villagers threw a party to thank these crocodiles, and this marked the beginning of a special bond between the two. Every year, the locals celebrate a grand ceremony called 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞, where they make sacrifices and ask the crocodiles to grant their wishes for health, prosperity, and a good harvest. In Banjul, it is common to find crocodiles in the compounds of local families during the dry season. At other times, crocodiles wander into the village seeking safe places to lay their eggs, and the locals protect the nests from predators. The locals even believe that these harmless creatures represent the souls of their ancestors. They hold funerals for the crocodiles when they die, burying them in coffins similar to those used for humans. Number 7. Bird of Saqqara. In 1898,
archaeologists discovered an artifact that would spark the imaginations of researchers and lay people alike. This artifact, known as the Saqqara bird, was excavated from a tomb in Saqqara, Egypt. It is estimated to be 2,200 years old and is shaped like a modern-day airplane with the head of a bird. Its wingspan measures 180 mm and it weighs 39.12 g. Despite its age, the Saqqara bird's purpose remains a mystery. The lack of documentation from the period when it was made only adds to the mystery, and its enigmatic nature has fueled speculation that the ancient Egyptians may have understood the principles of aerodynamics. Some believe that the Saqqara bird could have been a working model of an aircraft or glider, but not everyone is convinced. Mainstream researchers suggest that the Saqqara bird is nothing more than a child's toy, a carving of an actual bird, or an early weather vane. However, the controversy surrounding the Saqqara bird continues to this day. What do you think? Could the ancient Egyptians have possessed knowledge of aerodynamics that we've yet to uncover? Or is the Saqqara bird simply a fascinating but ultimately mundane artifact? Number 6. Desert fairy circles. In the vast and seemingly barren desert of Namibia lies a mystery that has stumped scientists for decades: the Namibian fairy circles. These puzzling circles, each about 39 feet in diameter, appear as perfectly round patches of barren earth surrounded by lush vegetation. What's more, millions of them spread across 1,100 miles of the arid grasslands of southern Africa. Numerous theories have been proposed over the years to explain the origins of these circles, but none have been able to provide a definitive answer. One theory was that the presence of the fairy circles is the work of termites, eating away at the grass from its roots. Others, on the other hand, suggest that the plants were somehow being prompted to grow in this unusual pattern on their own. Some even speculate that they may hold the key to understanding how life can thrive in such a harsh environment. Visitors to the region can explore the fairy circles on foot or by air, marveling at their unusual beauty and pondering the mystery that surrounds them. Whether the circles are the work of mystical fairies or simply a natural phenomenon, they remain one of the most fascinating mysteries of the natural world. Now it's time for today's subscriber pick. In this image lies some mystical human-like objects arranged side by side in a site that messes with your mind to wonder what exactly they could be. Are these alien beings from another planet, or maybe just statues placed in the desert to scare people away from the very dry and inhospitable climate? Do you know what these are or what they stand for? Let us hear your thoughts in the comments section. Number 5. Voodoo in Africa. In West Africa, voodoo is a widely practiced religion, which has also spread to other parts of the world due to abundant slave trades. However, the small country of Benin is considered as the birthplace of voodoo. In fact, over 40% of the population follows voodoo as an official religion in Benin. The country even celebrates Voodoo Day as a public holiday, and there is a national voodoo museum dedicated to this unique religion. Despite its reputation as evil or black magic, for the people of Benin, voodoo is a complete way of life, encompassing culture, philosophy, language, art, dance, music, and medicine. The voodoo spiritual world consists of Mahu, the supreme being, and about 100 divinities who represent different phenomena, such as war, illness, healing, earth, storms, and many other things. Voodoo priests invoke these gods to intervene on behalf of ordinary people. They may also use herbs to cure the sick or possibly to poison enemies. In some cases, offerings such as a chicken, sheep, or alcohol are given to the divinity, either as a request for help or as gratitude for wishes granted. People seek help from voodoo priests on a variety of issues, including curing diseases, finding a job, completing a business deal, finding a spouse, or having a child. Number 4. African Goliath frogs. When we think of frogs, we usually imagine small, solitary amphibians. Let us introduce you to the largest frog in the world, the 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐽 Goliath, also known as the African Goliath frog. This enormous amphibian can grow up to 12.5 inches long and weigh up to 7.2 pounds, making it as big as some house cats. These giant frogs reside in small ranges in the rainforests of Western Africa, close to swift-moving rivers and waterfalls. Just like other frogs, they require to be close to water, and at night they sit on river rocks to search for food. They feed on insects, crustaceans, fish, and other amphibians. You would think that such a large frog would make a loud croak, but Goliath frogs are mute as they don't have a vocal sac. Breeding for Goliath frogs is different from most other frogs. The male constructs a nest of rocks and gravel near the riverbank,
and engages in wrestling matches with other males to breed with females. Wrestling and moving rocks may explain why males are larger than females, which is unusual for frogs. The female lays thousands of eggs in the nest, and after that, the parenting ends. They don't even wait for the eggs to hatch. Sadly, these incredible creatures are endangered. Human activities such as farming, logging, and human settlements are encroaching on their forest habitats. Furthermore, they are hunted for their meat, which puts them at risk. Number 3, fantasy coffins of Ghana. In the southern coast of Ghana, death is not a gloomy affair, but a fashionable one. The Ga people of Ghana have taken the art of coffin making to a whole new level with their remarkable fantasy coffins. These coffins are not the typical caskets you might have in mind. Instead, they come in different shapes and designs that represent the deceased person's profession, passion, or status. For instance, a microphone-shaped coffin is used for a musician or a public speaker, while a car-shaped coffin is made for a driver. An airplane-shaped coffin is designed to honor a pilot, and a lion-shaped coffin is used for a chief. The craftsmanship involved in designing these coffins is awe-inspiring, with intricate details that leave many amazed. These coffins have become so popular that they are now being exported to other countries, including the United States and Europe. While these coffins might be quirky and even bizarre to some, they are an important aspect of 𝐒𝐤𝐢 culture and tradition. They serve as a celebration of the deceased person's life and achievements, and they also help families and communities to bid farewell in a unique and memorable way. Number 2, New Widow Spider of Africa. In 2014, a spider with a unique appearance was discovered in South Africa's Tembe Elephant Park. It had an eye-catching exclamation mark-shaped blotch on its back and a unique squiggly white pattern that resembled a human face and mouth open in horror. Scientists have since identified it as a new species called the Finda button spider. This spider is closely related to the black widow, redback, and katipo spiders, and is potentially the largest widow spider in the world. Barbara Wright, the explorer who originally discovered this stunning spider at the Tembe Elephant Park, says that the Finda button spider's venom is neurotoxic, which means a bite from this spider requires immediate medical attention. And if that wasn't enough, female Finda button spiders also sport bright red spots on their underbelly, and their egg sacs are a mesmerizing shade of purple, with each sac containing about 600 hatchlings. This is one spider you won't want to cross paths with. Number 1. Untouched rainforest of Mozambique atop Mount Liko in northern Mozambique, some 700 meters above sea level, lies a hidden rainforest that very few have had the pleasure of seeing. It's a secret ecosystem protected by a steep circle of rock that has remained untouched by humans for centuries, making it a remarkable discovery for scientists. Interestingly, the locals knew about the mountain, but the forest itself was only discovered in 2012 by a biologist named Julian Bayliss, who spotted it on satellite imagery. However, it wasn't until 2017 that he revealed his groundbreaking discovery to the world. What makes this rainforest so unique is that it has experienced only natural disturbances, such as droughts over the centuries, rather than human interference. As a result, it is home to a vast array of plants and animals that have adapted to this pristine environment, providing scientists with valuable insights into the past and future of our natural world. The discovery of this hidden rainforest is an incredible find, and it shows that there are still so many secrets waiting to be uncovered in the natural world. We hope you enjoyed this video. We'll see you in the next one. चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज जो हैं वो आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये बाकी जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर के साथ रिलेट करता है, इसी तरह से ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो ये चैप्टर मैंने इम्पोर्टेंट समझा और मेरी कोशिश होगी कि मैं बिफोर एंट्री टेस्ट जो है इसको क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं। सो 19 चैप्टर छोड़ने की वजह ये थी, और बाकी कमेंट्स में भी बच्चों ने 20 चैप्टर का जो है वो मल्टीपल टाइम जो था वो बोला हुआ था कि इसके बाद सर आप जो है वो 20th चैप्टर स्टार्ट करें, लाइक डीएनए एंड क्रोमोसोम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो आपके लिए ये चैप्टर निहायत आसान, और इसी तरह से जो आगे जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस वाला है वो भी बहुत आसान और इजी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको वहां पर भी काम देंगे। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर।
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 3 मेन चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो इसके अंदर राइबोज शुगर है, और राइबोज शुगर कौन सी? डीऑक्सी राइबोज, ऐसी राइबोज शुगर जिसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या चीज है? फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब आप कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 है डियर स्टूडेंट्स, एंड एज वेल एज इसमें तीसरी कौन सी चीज है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास 2 तरह की हैं, एक है प्यूरीन्स और दूसरी हैं पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स जो है उसमें आपके पास ANG आती हैं, एडेनिन एंड गवानीन, और पायरीमिडीन में आपके पास साइटोसिन एंड थायामीन आती हैं। डियर स्टूडेंट्स जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, मतलब डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट एंड एज वेल एज नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में जुड़कर एस्टर लिंकेज बनाकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं कि डीएनए जो है इससे क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला है कि डीएनए जो है उसमें फॉस्फेट या आप कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो इस फास्फोरिक एसिड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए पे ओवरऑल चार्ज कौन सा है, तो आप कहेंगे कि डीएनए पर चार्ज है नेगेटिव। डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये डीएनए इसी तरह से ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये डीएनए है, ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, 8 प्रोटीन होंगी, ये 8 प्रोटीन्स हैं। ये नेगेटिवली चार्ज है डीएनए, और ये प्रोटीन्स कौन सी चार्ज हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये डीएनए क्या करता है? इसके ऊपर रैप कर जाता है, कंडेंस हो जाता है। सो दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। हम इसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियो किस लिए? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। सोमा का मतलब होता है बॉडीज, तो ये बॉडीज कहां पर पाई जा रही हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाई जा रही हैं। और ये जो 8 प्रोटीन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये जो 8 हैं इसी वजह से हम इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर का नाम देते हैं। तो ये कौन सी चार्ज होती हैं? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से इनकी बाइंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि दोबारा से फिर इसी तरह से ये आपके पास डीएनए है, और इसने फर्दर अगेन से क्या बना लिया है? ये प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए जो है वो आपका रैप कर गया है, डीएनए कंडेंस फॉर्म में चला गया है। इसी तरह से आगे फिर जो डीएनए है, ये देखिए हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए ने दोबारा फिर क्या कर लिया है? हिस्टोन प्रोटीन्स पर क्या कर लिया है? रैप कर लिया है। तो इसकी रैपिंग से क्या होता जा रहा है? डीएनए अगेन एंड अगेन कंडेंस होता जा रहा है। ये कंडेंस इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इनमें आपके पास कौन कौन से हैं? स्पेसिफिकली लाइसीन है, एक अमाइनो एसिड है, जमा आर्जिनिन है, ये भी एक क्या है? अमाइनो एसिड है। इनकी वजह से इन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी वजह से डीएनए इसके ऊपर क्या कर रहा होता है डियर स्टूडेंट्स? रैप कर रहा होता है। अब क्या है? इसी तरह से ये जो आपके पास न्यूक्लियोसोम्स बन रहे हैं, ये ऐसे ही है, समझ लें कि जैसे एक रस्सी को आपने जगह जगह से गिरा लगा दिया है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि तस्बीह के जो दाने हैं वो तस्बीह के अंदर थोड़े थोड़े फासले पर प्रेजेंट हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब ये इस तरह से डीएनए जो है न्यूक्लियोसोम्स, अब इस हर वर्ल के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, मतलब जगह जगह पर क्या है? न्यूक्लियोसोम है। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
तो डीएनए इसके ऊपर क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास कहलाता है, मतलब सुपर कॉइलिंग हो गई है। हिस्टोन भी जो है, वो जो न्यूक्लियोसोम है वो भी आपस में क्या कर गए, रैप कर गए, सुपर कॉइलिंग। इधर तो कॉइलिंग हुई है, यहाँ पर सुपर कॉइलिंग हुई है, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन, क्रोमा का वर्ड जो है वो कलरफुल के लिए है, तो क्रोमैटिन मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो थ्रेड लाइक है, और ये कलर इसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, डाई के जरिए इसको कलर कर सकते हैं। सो क्रोमैटिन मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमैटिन मटेरियल है, ये दो तरह का देखा जाता है। एक वो जो हाईली कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस, और दूसरा वो जो लूजली होता है। अब तकरीबन एक क्रोमोसोम के अंदर, या आप कह सकते हैं पूरे जीनोम के अंदर, होल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर 5% जो होता है वो लूजली होता है, और 95% क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हाईली कंडेंस होता है, हाईली कंपैक्ट होता है। जो हाईली कंपैक्ट है इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। अब यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि जो डीएनए है उससे क्या बनना है, आरएनए बनना है। तो ये आपके पास जो यूक्रोमैटिन है, जो लूजली है, इससे क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए बनते हैं। तो इसी वजह से आप कहते हैं कि जो आपकी बॉडी है इसमें तकरीबन 4 to 5% ही क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है। तो ये जो आपके पास डीएनए, ये कौन सा होता है, फंक्शनल डीएनए होता है, आप इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या बन रहे हैं, मैसेंजर आरएनए। बाकी ये जो डीएनए, इसको ये भी फंक्शनल है, बट इसका फंक्शन जो है वो डियर स्टूडेंट्स अननोन है, इसको हम जंक डीएनए का नाम देते हैं। ये खुलता नहीं है, या कभी कभार खुलता है, जब क्या होना होता है, क्रोमोसोम्स ने डुप्लीकेट करना होता है, तब ये खुल रहा होता है। लेकिन इसने बार बार अगेन एंड अगेन ओपन होना है, जिससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स बनेंगी। अब देखें, ये क्रोमैटिन मटेरियल फर्दर कंडेंस होता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल डियर स्टूडेंट्स फर्दर कंडेंस होगा, ये हाईली कंडेंस होगा। ये देख रहे हैं आप, हाईली कंडेंस है, और कंडेंस होने के बाद एक प्रॉपर शेप बना रहा है। इस शेप को हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस शेप को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमा का मतलब क्या है, कलरफुल, सोम्स मीन बॉडी। तो ये आपके पास जो है ये क्रोमोसोम बन गया है, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा टीचर्स से, या आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम्स हैव स्पेसिफिक यूनिट्स दैट आर कॉल्ड जीन्स, जिनको हमने क्या नाम दिया है, जीन्स का नाम दिया है। सो अब देखें डियर स्टूडेंट्स कि जीन्स क्या चीज है। ये जो मैंने आपको बेसिकली लूजली पैक्ड यूक्रोमैटिन के बारे में बताया है, ये असल में क्या है डियर स्टूडेंट्स, असल में ये डीएनए का सेगमेंट है, जो पूरे क्रोमैटिन मटेरियल, या आप कह सकते हैं पूरे जीनोम में 5% है, ये लूजली अटैच है, लूजली पैक है। इसमें क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, मैसेंजर आरएनए बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट ऑफ डीएनए है, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज कॉल्ड जीन। हमने इसको क्या नाम दिया है, जीन का नाम दिया है। तो अब देखें कि एक क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ क्या हो सकते हैं, जीन्स हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए से मिलकर बना हुआ है। और ये जो जीन है, ये क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, और स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ऑफ, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपके पास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, डीएनए कहलाता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनवाएगा, और इस मैसेंजर आरएनए से क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स बनेगी, और ये प्रोटीन्स बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो उनकी जो बनने का प्रोसेस है वो सारे का सारा यही होता है कि पहले डीएनए है, जीन्स है, जीन से फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। अब यही वो जीन्स हैं जो किधर प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं,
और वही कैन से क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट जीन का ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये सो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बेसिकली जीन्स हैं। ये वही चीजें हैं जो क्या करती हैं, जिनको हमने नाम दिया है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, के विरासत की ये क्या है, इकाइयां हैं। क्यों इकाइयां हैं ये विरासत की? क्योंकि यही वो क्रोमोसोम हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं, जीन्स प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स। उनके अंदर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट है जिनका काम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करना। अब ये जो शफलिंग ऑफ जीन्स होती है डियर स्टूडेंट, जिससे नए रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, रिकम्बिनेशंस बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, जो हमारे अंदर चेंजेस आती हैं बेसिकली वो किसकी वजह से होती हैं? क्योंकि जीन्स हर चीज को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि यही जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, इनको हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ लाइफ बोलते हैं। कि एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है उसका सारा कोड वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास डीएनए कहलाता है और वो कैन से जीन्स कहलाते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स क्या बन चुका है, एक क्रोमोसोम बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने सारा क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम बन तो गया है, अब क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रोमोसोम्स की जो स्पेसिफिक शेप है वो कैसे बनी है, और वही कैसे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कितना उसकी लेंथ है, कितना डीएनए पैक हुआ हुआ है, और डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर तकरीबन ये जो बेस पेयर हमने पढ़े हैं वी कैन से न्यूक्लियोटाइड्स, ये कितने हो सकते हैं, 140 मिलियंस होते हैं। अब अगर एक क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन को लिखा जाए किसी बुक के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट्स अगर वो बुक हो 1000 पेजेस की, बुक के अंदर पेजेस कितने हो 1000, और डियर स्टूडेंट्स हर पेज पर हम 500 वर्ड्स लिखें तो कितनी बुक्स बन सकती हैं, 280 बुक्स बनेगी। सो इतनी इंफॉर्मेशन जो है डियर स्टूडेंट्स एक क्रोमोसोम के अंदर, इन अ सिंगल क्रोमोसोम, इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो नेचर ने स्टोर की हुई है। ये बात तो थी डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या, कि किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर है और कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो स्टोर है। अगर मैं बात करूं कि हमने ह्यूमन के एक क्रोमोसोम्स के बारे में बात की हुई है, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कितना पैक है, तो वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स अबाउट 5 सेंटीमीटर। नेचर ने क्या किया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ऑफ डीएनए को पैक किया हुआ है एक क्रोमोसोम के अंदर। अब ये देखें कि एक क्रोमोसोम के अंदर अगर इतनी लंबी, आप कह सकते हैं कि इतना ये जो है तकरीबन ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है एक ऐसे सेल के अंदर जो हमें नजर ही नहीं आता, और फिर उसमें पड़े न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर भी फिर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस को हटाकर डियर स्टूडेंट्स एक सिर्फ क्रोमोसोम के अंदर आपका जो डीएनए वो इतना लेंथी डीएनए पड़ा हुआ है। हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को हमने क्या किया, सुपर कॉइल किया। अब ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद आता है, यानी कि हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो है वो न्यूक्लियोसोम बनेगा। इस तरह से इन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, पैक कर लिया जाता है, डीएनए को पैक कर लिया जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाते हैं। इनकी जो स्पेसिफिक अरे होती है, अरेंजमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। तो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कैरियोटाइप के बारे में, यानी कि हमें क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम है इसमें ये जो आपको आर्म नजर आ रहे हैं ये इसके क्या है, क्रोमैटिड्स होते हैं। तो अगर एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स हों तो वो क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम ये है, इसके ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इसी तरह से जो इसका होमोलोगस पेयर होगा, ये क्रोमोसोम ये है बिल्कुल इसी की तरह का, ये आपस में ये और ये आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। अगर आप दोनों ब्लू की बात करें, ये और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ से ये देखें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में पड़ा हुआ है डीएनए आपका, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और इस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर का नाम देते हैं।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो आर्म है ये इसकी लेंथ भी क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करती है। ये जो आपके सामने शेप है ये भी हर क्रोमोसोम की डिफरेंट होती है। फिर इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है ऊपर वाली साइड पर, यहाँ पर भी डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है और सम टाइम क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफाइड किस्म का डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं और वी कैन से दीज आर जंपिंग जीन्स। ये क्रोमोसोम में क्या करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम। और डियर स्टूडेंट्स, और इनसाइड द क्रोमोसोम भी ये क्या करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं। और वी कैन से वी कॉल देम ट्रांसपोजोन्स। हम इनको जंपिंग जीन, सैटेलाइट डीएनए या फिर हम इनको क्या नाम देते हैं, ट्रांसपोजोन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, कैरियोटाइप क्या है? ये जितनी भी मैंने बात की है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी लेंथ के बारे में, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कैरियोटाइप कहलाती हैं। कैरियोटाइप क्या है? स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की लेंथ को देखा जाता है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर को देखा जाता है, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज को देखा जाता है एंड पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्म्स को भी देखा जाता है, लेंथ ऑफ क्रोमैटिड्स को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर देखें कि एक जो क्लासिफिकेशन आपकी बुक के अंदर है वो है सेंट्रोमेरिक पोजीशन पर। अगर तो सेंट्रोमियर बिल्कुल टॉप पे हो डियर स्टूडेंट्स, एंड पे हो, दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये टॉप से थोड़ा सा नीचे हो, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्राइमरी हुई है, दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। अगर इससे थोड़ा सा और नीचे हो जाए, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। इसमें एक आर्म छोटा और एक लंबा होता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसकी निस्बत ये ऊपर वाला आर्म क्या है, बड़ा है। तो ये आपके पास जो शेप है दिस इज वी शेप, और वी कैन से ये आपके पास क्या है, सेंट्रिक मेटासेंट्रिक। ये आपके पास सब मेटासेंट्रिक था, तो ये आपके पास कौन सा कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, मेटासेंट्रिक, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। इसी वजह से यहाँ पर देखें शेप्स कौन सी बन रही है, आई शेप बन रही है। अगर आप इसमें देखें, जब ये थोड़ा सा इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से बन जाता है कि ये जो ऊपर वाला आर्म इसका इधर आ गया और ये नीचे वाला, दिस इज द जे शेप। एंड इसी तरह से हमारे पास जो है वो वी शेप जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास कहलाती है कैरियोटाइप। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर एक जितने नहीं होते। जैसा कि आपके पास एग्जांपल्स कुछ ये हैं कि पेनिसिलिन के अंदर एक पेयर होता है, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्न्स के अंदर मोर देन 500 पेयर्स होते हैं, मतलब 1000 क्रोमोसोम से ज्यादा हो जाते हैं। मॉस्किटो के अंदर 6 हैं, पेयर नहीं है, ओनली 6 क्रोमोसोम। हनी बी के अंदर 32 हैं, कॉर्न के अंदर 20 हैं, शुगर केन के अंदर 80 हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉग के अंदर 26 है, माउस के अंदर 40 एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पर देखें 2 एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन से? एक तो इनमें से कोई एक एमसीक्यूज आ जाता है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम पे एमसीक्यूज आया हुआ है 1-2 दफा। वो क्या है कि क्रोमोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था डियर स्टूडेंट्स? वाल्टर फ्लेमिंग जो था, इसने 1882 के अंदर क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, जब वो सैलिमेंडर के लार्वा को क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था, और उन सेल्स को स्टडी कर रहा था जिनमें डिवीजन हो रही थी। तो आपको पता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन जब होती है तब ये अपीयर होते हैं, क्योंकि तब क्या होना होता है, इन्होंने कंडेंस होना होता है। जैसा कि आपने सेल साइकिल के अंदर पढ़ा था, मेटाफेज होती है, एनाफेज, टीलोफेज एंड प्रोफेज डियर स्टूडेंट्स। उसमें क्या हो रहा होता है कि इन्होंने जुड़कर सेपरेट होना होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाना होता है, और इनकी कॉपी होनी होती है, रेप्लिकेशन होनी होती है, इसका एग्जैक्ट कॉपी बनानी होती है। तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेल साइकिल में जो है डियर स्टूडेंट्स वो अपीयर होते हैं, स्पेशली माइटोसिस के रिजल्ट से, और या वी कैन से मियोसिस में जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो क्रोमोसोम्स या वी कैन से क्रोमैटिन मटेरियल फर्दर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जब सेल डिवाइड नहीं करता, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को डीएनए के बारे में समझ आ गया होगा। अगर तो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे इस लेक्चर को लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर कितना अच्छा लगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।
Dear students, today I am going to teach you chromosomal theory of inheritance. Dear students, इससे previous classes के अंदर आपने वरासत के बारे में पढ़ा है, heredity के बारे में पढ़ा है, inheritance के बारे में पढ़ा है। तो ये जो सारे वर्ड मैंने यूज किए हैं ये एक ही वर्ड के डिफरेंट सिनोनिम्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस, क्योंकि इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस हम बोलते हैं वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, यानी कि वालिदैन से बच्चों में आते हैं, वो क्या कहलाती है? वरासत कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनहेरिटेंस है इसके पीछे लॉजिक क्या था कि ये जो इनहेरिटेंस है ये किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो जाते हैं। ये जो करैक्टर्स हैं या जो खुसूसियात हैं, ये जो बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे क्या थे? क्रोमोसोम्स थे। अब हमने बात करनी है कि पहले साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, खुसूसियात की मुंतकिली में हेल्प करते हैं। और ये जो स्पेसिफिक जीन होता है ये आपके सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिससे क्या होता है कि डियर स्टूडेंट एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनती है जो क्या करती है? करैक्टर्स को और वी कैन से फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही होती है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले मेंडल्स की तरफ। मेंडल ने क्या किया था? तकरीबन मिड 18th सेंचुरी के अंदर इसने स्वीट पी पाइसम सैटिवम के ऊपर ये काम कर रहा था। तो इसने क्या किया? एक स्पेसिफिक टर्म दी। उस टर्म का नाम क्या है? ट्रेट। ये कहता है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। अब जब ये मेंडल काम कर रहा था इसने ऐसे प्लांट पर काम किया जिसमें 14 क्रोमोसोम्स थे। कितने क्रोमोसोम्स थे डियर स्टूडेंट्स? 14। उसके हैप्लॉइड कितने हुए? 7 क्रोमोसोम्स। तो इसने 7 डिफरेंट ट्रेट्स के ऊपर बात की, मतलब 7 जो थे वो डिफरेंट ट्रेट्स थे। हर ट्रेट अलग-अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट था। इस वजह से जो था आपके पास मेंडल कामयाब हुआ ये बताने में कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे करैक्टर जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आपने मेंडल के जो हैं वो लॉज तो पढ़ रखे होंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी हम आगे मैं आपको बताता भी हूँ। उसके बाद जो 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 हैं इसने क्या किया 1900 के अंदर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। तो फौरन ही उसकी डिस्कवरी के बाद 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ खास करैक्टर्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। अभी ये भी जो था डियर स्टूडेंट्स इसने भी इनको ट्रेट का ही नाम दिया, जीन का ही नाम दिया कि जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे होते हैं, और इसी तरह से उनका काम क्या होता है? ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करवाना, फिनोटाइप को शो करवाना। बट जो आपके पास ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसकी जो आप कह सकते हैं बुनियादें हैं, या ये किसने डिस्कवर की थी या ये किसने पेश की थी डियर स्टूडेंट्स? ये सटन ने पेश की थी। सटन कहता है कि अगर हम मेंडल के काम को देखें, मेंडल ने क्या कहा था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। याद रखें क्या होता है? डिप्लॉयड। एक वक्त ऐसा आता है कि ये हैप्लॉइड सेल बनाता है, और ये आज की दुनिया में हम इन हैप्लॉइड सेल्स को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? गैमीट्स बोलते हैं। फिर मेंडल ने बोला कि इन हैप्लॉइड सेल्स के अंदर हाफ कैरेक्टर होते हैं, मतलब हाफ कैरेक्टर प्रेजेंट है, और इसी तरह से इसके अंदर भी क्या है? हाफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो हाफ कैरेक्टर्स हैं जब ये दोनों मिलते हैं तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनिज्म दोबारा से 2n बनता है, और इसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होंगे? इकट्ठे होंगे।
मिलकर ये क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये बोला था आपके पास मेंडल ने, बट लेटर सटन ने भी यही बात जो थी वो प्रूव की। सटन क्या कहता है, सटन कहता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ह्यूमंस की बात कर लें या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, उसकी बॉडी बेसिकली क्या है, 2n है। उसने क्या प्रोड्यूस करने हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं। एक तरफ आपके पास स्पर्म आ जाते हैं और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाते हैं, एग आ जाता है। जब इसने एग की मॉर्फोलॉजी को देखा तो एग जो था वो बड़ा था और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को देखा तो स्पर्म जो था वो छोटा था। अब डियर स्टूडेंट्स, सटन ये कहता है कि ये जो स्पर्म है इसका जो साइटोप्लाज्म है वो लो है, लिटिल साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म कम है। इसमें जो साइटोप्लाज्म है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, ज्यादा है। बट हैरानगी की ये बात है कि जो इसके अंदर करैक्टर हैं, जो इसके अंदर करैक्टर हैं, ये दोनों मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लाइक ये 2n ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में इसके भी करैक्टर होंगे एंड इसके भी करैक्टर्स होंगे। और वी कैन से जो जीन्स इसमें प्रेजेंट थे वो इसमें आएंगे और जो जीन इसमें प्रेजेंट थे वो इसमें। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो बना है ये कॉम्बिनेशन है और वी कैन से दिस इज अ जाइगोट है। ये हमारे पास जाइगोट है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स। इन दोनों के कैरेक्टर्स का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि सटन ने इसके बाद क्या बात कही कि ये जो स्पर्म है इसके पास साइटोप्लाज्म तो कम है, तो कोई ना कोई चीज इसके इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ी हुई है। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पड़ी हुई है और इसके भी जो एग है बाकी सारी चीजों को छोड़कर इसके न्यूक्लियस में कोई ना कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो क्या करती है, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके न्यूक्लियस में क्या पड़े हुए थे, क्रोमोसोम्स पड़े हुए थे और इसमें भी क्या पड़े हुए थे, क्रोमोसोम्स पड़े हुए थे। तो अल्टीमेटली उसका कहने का मकसद था कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसा कि मेंडल ने बोला था, मेंडल ने ये बोला था कि देयर आर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। जिसको कौन सी चीज कंट्रोल कर रही होती है, जीनोटाइप कंट्रोल कर रही होती है और जीनोटाइप की वजह से क्या बन रही होती है, फिनोटाइप बन रही होती है। डियर स्टूडेंट्स, देखें, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक जीन है और वो किस कलर के लिए है, फॉर एग्जांपल वो आई का कलर है ब्राउन, उसके लिए जीन है, तो डियर स्टूडेंट इससे ये क्या बनवाता है, मैसेंजर आरएनए बनवाता है इस जीन से और मैसेंजर आरएनए से एक खास किस्म की प्रोटीन बनेगी और ये जो प्रोटीन है ये आइस का कलर कौन सा कर देगी, ब्राउन कर देगी। तो ये करैक्टर है, इसको पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट जीनोटाइप। और जो करैक्टर है जो फिजिकली आपको दिख रहा है वो क्या कहलाती है, आपके पास फिनोटाइप कहलाती है। तो सटन ने यहाँ पर क्रोमोसोम्स को क्या कह दिया कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं जो क्या करते हैं, इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो खसूसियात हैं वो इन्हीं की वजह से मुंतकिल हो रही होती हैं। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सटन ने एक और बात बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस थ्योरी को मतलब कि एक्सप्लेन करती है, जो मेंडल के काम के साथ रिलेट करती है। सटन क्या कहता है कि ये जो हाफ करैक्टर है, बेसिकली ये एक बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर अगर वो बॉडी 2n है, डिप्लॉइड है, तो उसके पास हर एक क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम का एक दूसरा सेट भी मौजूद होगा अगर मैं ये मेल की बात करूं। इसी तरह से अगर हम फीमेल में इसी क्रोमोसोम की बात करें तो फीमेल भी क्या होगी, 2n होगी, तो उसमें भी ये क्रोमोसोम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं, रेप्लिका होते हैं। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें इस तरफ से ये और इस तरफ से डियर स्टूडेंट्स ये, इधर से क्या बनेगा, ब्लैक, और इधर से कौन सा आया है, रेड। आप देखें
इस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों पेरेंट्स की खसूसियात जो हैं वो क्या हैं, मुंतकिल हुई हैं। ये जो थी बात, यही बिल्कुल मेंडल ने भी बोली थी कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं और वी कैन से कॉपी होती है उसकी, एक ऑर्गेनिज्म के पास उसकी दो कॉपीज होती हैं। जैसा कि मेंडल ने कहा था कि एक स्मॉल है तो एक आपके पास टॉल होगा, एक जो है वो राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड होगा। तो यही ट्रेड्स की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनमें दो कॉपीज होती हैं, मतलब इसी की एक कॉपी इधर प्रेजेंट है और एक कॉपी आपके पास इधर, और इनमें से एक इसमें आएगा बेबी में से और एक जो है इधर से बेबी में आएगा। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या कि जब गैमीट्स बनते हैं तब जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं और उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने का मतलब क्या है कि अपनी मर्जी से वो जिधर जाना चाहें, जो गैमीट जिसके साथ जुड़ना चाहे डियर स्टूडेंट, तो अपनी मर्जी से उसको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, अपनी मर्जी से उसको क्या करवा रहा होता है, लेकर आता है, और अपनी मर्जी से ही डियर स्टूडेंट्स फ्यूजन होती है। तो जीन्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं और जो क्रोमोसोम है वो भी जो आपके पास है सेग्रीगेट कर जाते हैं, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब देखते हैं हम कि मेंडल ने और आपके पास जो है सटन ने, इन दोनों ने जो बात कही थी क्या वो ठीक है? मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉपी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसके दो जो होते हैं पेयर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक आपके पास डोमिनेंट होगा और दूसरा आपके पास रिसेसिव होगा। बट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि जब सटन ने इसके ऊपर काम किया तो सटन क्या कहता है, सटन के ज़हन में एक क्वेश्चन आया अगेन एंड अगेन, वो ट्रिगर कर रहा था कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करता हूँ, ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो कैरेक्टर है वो मोर देन 46 है। क्वेश्चन आ गया कि हाउ दिस इज पॉसिबल। ह्यूमंस के अंदर तो फिर 46 ही आने चाहिए थे ना कैरेक्टर। इसी तरह से जब उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम किया तो उसमें वो देखता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और प्लांट है, लाइक आप शुगर केन की बात कर लें, उसके अंदर कितने हैं 80 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें कैरेक्टर्स कितने आने चाहिए थे डियर स्टूडेंट्स? 80 आने चाहिए थे। तो ये 80 से कम भी हो सकते हैं और 80 से ज़्यादा भी हो सकते थे। अब उसने मेंडल के बारे में ये बात की कि मेंडल वाज लकी इनफ, मेंडल जो था वो लकी था क्योंकि उसने जो 7 कैरेक्टर जो थे वो स्टडी किए थे, वो 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे। 7 कैरेक्टर जो थे वो 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे। मतलब क्या, हर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा था, सेग्रीगेट कर रहा था और उसमें जीन जो थे वो असॉर्ट हो रहे थे इंडिपेंडेंटली। इसी वजह से मेंडल का जो काम था वो पी के ऊपर जो रहा वो कामयाब रहा। अगर पी के अलावा किसी और पे करता तो मेंडल कभी भी लॉ जो था वो नहीं बना सकता था। तो इसकी जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स वो किसने दिए? टी.एच. मॉर्गन ने दिए। यहाँ तक बात तो होगी कि क्रोमोसोम जो है वही काम कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया? टी.एच. मॉर्गन जो है इसने 1910 के अंदर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, आप इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उस पर ये काम कर रहा था। तो ये क्या देखता है, एक जो प्रोजनी आई इसमें इसके पास, उसमें इसने क्या देखा कि एक जो मेल फ्लाई है ना वो म्यूटेंट थी, उसकी जो आईज थी डियर स्टूडेंट्स वो क्या थी? वाइट थी। हैरान हो गया। फिर उसने क्या किया, इस वाइट आई वाला जो मेल है इसकी एक नॉर्मल फीमेल के साथ क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। ये मैंने बाकायदा क्रॉस जो है वो बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मेंडल ने बताया, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर ये जो टी.एच. मॉर्गन इसने बोला कि हर एक के पास पेयर ऑफ क्या होते हैं? अलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं। अगर मैं इसके गैमीट बनाऊं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक्स आर और वाई बन गया। इसके गैमीट्स बनाऊं एक्स कैपिटल आर एंड एक्स कैपिटल आर बन जाता है। अब इन्होंने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ये है कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करना है, सेग्रीगेट हुए हुए हैं, तो इससे क्या बनेगा? एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक्स कैपिटल आर स्मॉल वाई। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ,
ये जो X कैपिटल R X स्मॉल r है, ये रेड आइड फीमेल बनी। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो X कैपिटल R Y है, इससे क्या बना? रेड मेल बना। जो टीएच मॉर्गन है ये तो परेशान हो गया, क्योंकि इसने जो प्रोजनी ली थी, जो इसके पास रिजल्ट आए थे, वो 3:1 के मुताबिक नहीं थे, ये इसको ओबे नहीं कर रहे थे। तो जो मेंडल था आपके पास, उसने क्या कहा था कि आपके पास जो हमेशा F1 जनरेशन होती है वो क्या फॉलो करती है? 3:1। लेकिन इसके रिजल्ट्स जो थे वो ऐसे नहीं थे। इसकी फिर टीएच मॉर्गन ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, कि जो F1 की फीमेल थी, F1 की फीमेल, इसका क्रॉस करवा दिया डियर स्टूडेंट्स। मेल जो था वाइट आइड था, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसके साथ इसने क्या करवा दिया? दोबारा से क्रॉस करवाया। तो इसके भी जो गैमीट्स थे वो इस तरह से बने, XRY एंड एज वेल एज X कैपिटल R X स्मॉल r। याद रखें डियर स्टूडेंट, इससे पहले यानी कि इस क्रॉस से पहले यहाँ पर टीएच मॉर्गन जो था, इसका कहना ये था कि ये जो रेड आई है ना, रेड आई, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के साथ एसोसिएटेड है, और वी कैन से ये इसके सेक्स के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से उसने बोला कि सिर्फ और सिर्फ रेड आइड फीमेल ही हो सकती हैं, वाइट आइड फीमेल कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उसने इन दोनों का क्रॉस कराया तो कुछ रिजल्ट यूं थे डियर स्टूडेंट्स, X कैपिटल R X स्मॉल r X स्मॉल r X स्मॉल r X कैपिटल R Y X स्मॉल r Y। वो बड़ा परेशान हुआ ये रिजल्ट देख के, क्योंकि ये रिजल्ट आए थे 1:1:1:1:1। कैसे? X कैपिटल R X स्मॉल r, ये क्या थी? रेड फीमेल थी। इसी तरह से X स्मॉल r X स्मॉल r डियर स्टूडेंट्स, ये क्या थी? वाइट फीमेल थी, और ये इसके पास पहली दफ़ा रिजल्ट आए थे। इसी तरह से जब उसने देखा X कैपिटल R Y, ये रेड मेल था, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उसने क्या किया? X स्मॉल r Y जो था ये वाइट मेल था। ये उसके पास जब रेशो आई, वो हैरान हो गया कि यहाँ पर देखें किस तरह से करैक्टर जो है वो एक पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं, कि मैंने पहले जितने भी क्रॉस किए सारी की सारी रेड आइड फीमेल थी, यहाँ पर वाइट आई वाली फीमेल भी जो है वो आ गई है। तो उसने यहाँ पर एक रिजल्ट पेश किया। वो क्या कहता है कि ये जो रेड कलर एंड वाइट कलर है आई का, ये जो खास किस्म की फिनोटाइप है, ये जो फिनोटाइप है डियर स्टूडेंट्स, ये सेक्स के साथ लिंक है, और सेक्स के साथ लिंक ये उसकी पहली इंटरप्रिटेशन थी। बाद में उसने बोला ये सेक्स के साथ लिंक है बेशक, बट डियर स्टूडेंट्स ये कैसे लिंक है कि ये एक्स लिंक्ड है। मतलब क्या कि जो फीमेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है, एंड एज वेल एज मेल में भी एक्स क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है। जो आपके पास वाई क्रोमोसोम है उस पर ये प्रेजेंट नहीं होती। कौन नहीं होती? ये जो रेड या वाइट का जीन है, तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं है। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स हम दूसरी बात करते हैं एब्सेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। तो इसी वजह से फिर वो क्या बात करता है? वो कहता है कि जो आपके पास X कैपिटल R है ये डोमिनेंट है, जो रेड कलर है ये डोमिनेंट है। किसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स? X स्मॉल और R के ऊपर। ये क्या आपके पास आता है? रिसेसिव ट्रेट है। तो इसी वजह से वो कहता है कि जब भी मेल के अंदर कैपिटल R एंड Y आता था तो मेल रेड होता था, और इसी तरह से अगर स्मॉल r आ जाता तो मेल क्या हो जाता था? वाइट हो जाता था। लेकिन जो इसका फाइनल रिजल्ट था इसमें इसने क्या डिस्कवर किया कि जब भी दोनों स्मॉल r यानी कि दोनों रिसेसिव ट्रेट फीमेल के अंदर आए थे तो फीमेल क्या बनी थी? वाइट बनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट आए थे, ये रिजल्ट जो है इन्होंने जेनेटिक्स की वर्ल्ड के अंदर एक आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन
बर्पा कर दी, इनकलाब बर्पा कर दिया बिकॉज ऑफ टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन अब क्या कहते हैं, जितनी भी बात मैंने आपको बताई है इसका सद्देबाप या फिर आप कह सकते हैं रिजल्ट जो है वो इन्हीं 2 लाइनों के अंदर जो अभी मैं आगे बोलने जा रहा हूँ उसमें डियर स्टूडेंट्स ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपके पास ट्रेट होते हैं, जो किसने बात की थी, मेंडल ने की थी, एंड एज वेल एज आपके पास किसने की थी डियर स्टूडेंट्स, सटन ने की थी, जिसको नाम दिया गया जीन्स का। जीन्स आर लोकेटेड, ये लोकेट करते हैं, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये बात किसने की, ये आपके पास टी.एच. मॉर्गन ने इस बात से प्रूव कर दिया कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं एंड एज वेल एज वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, और जो क्रोमोसोम है वो अलहदा हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है, और फिर वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और आपके पास क्या करते हैं, फाइनल प्रोजेनी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस बात से पता चला कि जो जीन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, और यही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह। Assalamu alaikum, welcome back to 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐿 biology. Dear students, today I am going to teach you DNA as hereditary material. जो DNA है वही विरासत का मटेरियल है, वही विरासत की इकाई है कि जो ट्रेट्स, जो करैक्टर्स, जो खसूसियात पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होती हैं, डियर स्टूडेंट्स वो किसकी वजह से होती हैं, DNA की वजह से होती हैं। इससे पहले तकरीबन 1940 तक ये सोचा जाता था कि जो प्रोटीन है बेसिकली वो क्या होती है, विरासती इकाई है, वो हेरिडिटी मटेरियल है। प्रोटीन्स जो थी, क्योंकि उस वक्त जो स्टडीज थी डियर स्टूडेंट्स वो लिमिटाइज थी, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आई, आहिस्ता आहिस्ता उससे पता चला कि जो आपके पास हेरिडिटी मटेरियल है बेसिकली वो क्या है, DNA है। डियर स्टूडेंट्स जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था इसने क्या किया, इसने बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe यानी कि नमूनिया के अगेंस्ट इसने वैक्सीन बनानी थी। तो इसने क्या किया, जो आपके पास बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, इसके 2 स्ट्रेन इसने लिए। एक कौन सा था, एक वो स्ट्रेन था जिसके बाहर कैप्सूल प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा कि ये बैक्टीरिया है ना, अगर तो बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द एक कैप्सूल बना लेता है जिसको समटाइम आप ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। तो एस टाइप ने क्या किया हुआ था, अपने इर्द गिर्द यानी कि अपनी बाउंड्री पे क्या किया हुआ था, एक कैप्सूल सिक्रीट किया हुआ था जो किससे मिलकर बना हुआ था, पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स ये विरुलेंट स्ट्रेन था, ये ऐसा स्ट्रेन था जो पैथोजेनिक था, जो डिजीज काज करता था। अब इसके डिजीज काज करने की वजह क्या थी, वजह ये थी डियर स्टूडेंट्स इसका ये कोट जो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब जब ये कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं तो ये कैप्सूल ही बेसिकली जब ये ह्यूमंस के अंदर आता था तो ये कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करता था, इसको डिग्रेड नहीं होने देता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये जो एस टाइप है ये ह्यूमंस के अंदर नमूनिया काज कर देता था। और उस वक्त की सीवियर बीमारी थी नमूनिया, जिससे बहुत सारी डेथ्स हुई थी। फिर इसने क्या किया, इसने एक दूसरा स्ट्रेन लिया जो कि म्यूटेंट था। ऐसा स्ट्रेन था जो कार्बोहाइड्रेट का जो कैप्सूल है या जो पॉलीसैकेराइड का कोट है डियर स्टूडेंट्स ये नहीं बना पाता था। इस वजह से जो इसकी कॉलोनी होती थी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती थी, रफ होती थी। इसके पास वो जीन ही नहीं प्रेजेंट था जो कि क्या बनवाए, इसके ऊपर कैप्सूल बनवाए। इस वजह से इसकी जो कॉलोनी थी पेट्री डिश के अंदर वो रफ आती थी और इसकी स्मूथ आती थी। सो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड रफ टाइप बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स अब इसके ऊपर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है और वी कैन से कैप्सूल नहीं है। तो जैसे ये ह्यूमन बीइंग के अंदर आता था तो क्या करते थे, वो इसको फौरी तौर पर डिग्रेड कर देते थे जिससे ये बॉडी के अंदर डिजीज काज नहीं करता था। तो हमने इसको नॉन विरुलेंट का नाम भी दिया है, और या आप इसको कह सकते हैं कि ये डिजीज काज नहीं करता था।
तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया, एक और तरह का बैक्टीरिया खुद से प्रिपेयर किया जो कि क्या था, नॉन विरुलेंट था। बेसिकली था ये क्या, एस टाइप, बट इसने इसको क्या किया, हीट किल कर लिया। अब ये जो बैक्टीरिया, इसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe था, जिसको आजकल हम डियर स्टूडेंट्स निम्यूनोकोकस का नाम देते हैं। अब इसने किया क्या, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसने एस टाइप ली जो कि विरुलेंट स्ट्रेन था, जो कि डिजीज काज करता था। इसने ये इंजेक्ट कर दी माइस के अंदर, और वी कैन से माउस के अंदर, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई। अब ये डेथ हुई, इसने इसके ब्लड की सैंपलिंग की तो उसके अंदर क्या था डियर स्टूडेंट्स, पॉइजन थी, एंड एज वेल एज उसके ब्लड के अंदर एस टाइप बैक्टीरिया जो थे वो पाए गए थे। उसके बाद इसने क्या किया, ये जो आर टाइप था, आर टाइप लिया और इसको इंजेक्ट कर दिया अगेन से माइस के अंदर, और माइस जो थी वो क्या रही, अलाइव रही। इसके ब्लड के अंदर किसी किस्म की भी पॉइजनिंग नहीं आई। फिर इसने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप लिए, जो कि मैंने आपको पहले बोले थे यहाँ पर। बेसिकली जब इसने इसके अंदर ये इंजेक्ट किए तो दोबारा से जो माइस थी वो अलाइव रही, क्योंकि इसने पैथोजेनिसिटी जो है इसकी, उसको क्या किया, हीट के जरिए किल कर दिया। अब इसका इफेक्ट माइस के ऊपर इतना ज्यादा नहीं आया। फिर ये स्टूडेंट्स इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर मैं दोनों इंजेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल आपके पास इसने आर टाइप जो कि बजाते खुद क्या था, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था, और हीट किल जो है वो भी आपके पास क्या है, नॉन विरुलेंट है। देख लें आप, दोनों में क्या रही है, अलाइव रही है। इसने दोनों को क्या किया, मिलाकर इकट्ठा करके इंजेक्ट कर दिया। अब माइस के अंदर जब ये इंजेक्ट किया गया तो कुछ दिनों के बाद माइस की डेथ हो गई, और ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ, हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आर टाइप भी डिजीज नहीं कर रही, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जो हीट किल्ड है वो भी डिजीज नहीं करती। अगर इनको सेपरेटली क्या किया जाए, इंजेक्ट किया जाए, जैसे मैंने आपको ये करके दिखा दिया। तो ये परेशान हो गया कि इसमें ऐसा क्या हुआ है कि आर टाइप और एस टाइप दोनों बजाते खुद अलग-अलग डिजीज काज नहीं करते। जब दोनों को मिला के इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, उसकी डेथ हो गई। अब इसमें ये था कि ये जो आपके पास आर टाइप थे ये लिविंग थे, और ये जो हीट किल्ड थे बैक्टीरिया ये आपके पास डेड थे। दोनों अपनी अपनी जगह पर नॉन विरुलेंट हैं। जब इसने देखा इसके ब्लड के अंदर तो दोबारा से इसको पॉइजन मिली, और इसमें कौन से बैक्टीरिया पाए गए, एस टाइप। अब ये हैरान हुआ कि मैंने तो एस टाइप इंजेक्ट ही नहीं किए, मैंने तो आर टाइप इंजेक्ट किए हैं और किल्ड एस टाइप इंजेक्ट किए हैं, बट यहाँ पर जो मुझे बैक्टीरिया मिल रहे हैं वो अलाइव मिल रहे हैं। और कौन से अलाइव मिल रहे हैं, एस टाइप मिल रहे हैं। अब ये इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनी। पहले इसका क्या ख्याल था डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके पास मैंने एस टाइप बेसिकली इंजेक्ट किया है, इसके ऊपर क्या था, एक कोट था। पहली बात ये थी, ये कोट क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर देखिए ना तो कोट डिजीज कर रहा है। तो इसने यहाँ पर इस स्टेप में कोट को जो डिजीज का रिस्पॉन्सिबल समझा कि जो कोट है इसकी वजह से डिजीज हो रही है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसने इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स इंजेक्ट किया तो ये हैरान हो गया कि कोट तो नहीं है, जो आपके पास ये जो कैप्सूल है ये तो नहीं डिजीज काज करवा रहा। बेसिकली यहाँ पर कुछ और चीज है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई डीएनए का पार्ट हो सकता है, और वही कैन से कोई क्रोमोसोम हो सकता है, जो ये क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म टू टीच यू डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एल्फ्रेड हर्शे एंड एज वेल एज मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था एंड एज वेल एज
कॉलिन मैक्लॉयड का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। तो आप ऐसे समझ लें कि उसी काम की क्या है, एक्सटेंशन है। इसके अंदर अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने क्या किया, दो चीजों का इस्तेमाल किया, एक आपके पास बैक्टीरिया का एंड एज वेल एज एक वायरस का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया थे उनको ईट करने के लिए, उनकी कॉलोनी को खत्म करने के लिए, उनके ऊपर अटैक करवाने के लिए इन्होंने जो वायरस लिया डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा था, बैक्टीरियोफेज T2 था। तो बैक्टीरिया के लिए फेज मीन ईटिंग, तो बैक्टीरिया ईटिंग ये क्या था, वायरस था। इसका काम क्या होता है, अगर इसको बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर रख दिया जाए तो ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, उस कॉलोनी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो डिफरेंट मीडियम प्रोवाइड किए इस वायरस की ग्रोथ के लिए। यहां से आपने एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनना है तभी समझ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक तो इन्होंने क्या किया, एक मीडियम ऐसा लिया जिसमें सल्फर जो थी उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया, और वो कौन सा था, S35 यूज किया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होती है बेसिकली वो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसमें सल्फर इनकॉर्पोरेट करवाने का या रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करने का फायदा क्या था कि ये जो अमाइनो एसिड है, जैसा कि आपके पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, मेथियोनिन है, ये इनकॉर्पोरेट हो जाए, ये सल्फर 35 कहां पे इनकॉर्पोरेट हो जाए, इसके प्रोटीन के कोट के अंदर, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। बाकी ये सारे का सारा वायरस जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डीएनए उसको कुछ नहीं है, इसमें जहां जहां पर भी प्रोटीन होगी, लाइक आपको पता है कि वायरस में जो प्रोटीन होती है उसके कैप्सिड में होती है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास है कैप्सिड, इसके अंदर प्रोटीन जो बनी है उसके अंदर लेबल्ड है रेडियो एक्टिवली कौन सी चीज, सल्फर 35, जिसको आप किससे देख सकते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से जो है वो डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अब दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा जो मीडियम था उसके अंदर इन्होंने क्या किया, फास्फोरस को यूज किया। अब ये जो फास्फोरस है इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो था उसी तरह से इसको क्या करता था, एमिट करता था, जिससे पता चल जाता था डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो फास्फोरस है वो कहां पर है, एंड एज वेल एज जो सल्फर है वो कहां पर है। ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, जब इस मीडियम के अंदर इसको ग्रो करवाया गया, यानी कि ऐसा मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ऐसे यूज किए गए जिसमें क्या था, फास्फोरस 32 थी और यहाँ पर सल्फर 35 थी, तो जब इन्होंने अपनी असेंबली करवाई तो इनका जो डीएनए था, क्योंकि फास्फोरस जो है बेसिकली वो डीएनए के अंदर होती है, आपको पता है डीएनए के अंदर एक शुगर होती है, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस होती है, तीसरा H3PO4 फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये जो फास्फेट थी ये वाली डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियो एक्टिवली आइसोटोप थी, लेबल्ड थी, तो इसके डीएनए के अंदर कौन सी चली गई, P32 इनकॉर्पोरेट हो गई। अब इससे क्या हो गया, इसकी प्रोटीन लेबल हो चुकी है, अब इसका क्या हो चुका है, डीएनए लेबल हो चुका है। जब डियर स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, इन दोनों को, अगर मैं बात करता हूं पहले वाले की जिसको मैं रेड से ड्रा कर रहा हूं, ये बैक्टीरियोफेज, इसको अलाउ किया किसके ऊपर, कि ये बैक्टीरिया के ऊपर आके क्या करे, अटैक करे। तो ये जो आपके पास आपको नजर आ रहा है ये बैक्टीरियोफेज, जब इसने बैक्टीरियल कॉलोनी पे अटैक किया, ये कोई एक नहीं था, यहां पर मल्टीपल थे, जिसको मैं ऐसे शो कर देता हूं। ये मल्टीपल क्या थे डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस थे। ये बिल्कुल ये जो मैंने सर्कल लगाए इसकी शेप के ही थे। इन्होंने यहां पर क्या किया, अटैक किया। तो डियर स्टूडेंट्स जब इस पर ये अटैक करते हैं तो आपको पता है कि वायरस क्या करता है, अपना डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया क्या कर देता है, डाल देता है सिरिंज की हेल्प से। ये अपनी टेल को यूज करते हुए और टेल के नीचे बेस प्लेट एंड एज वेल एज अपने ये जो टेल फाइबर हैं इनको यूज करते हुए और एंजाइम लाइसोजाइम्स को यूटिलाइज करते हुए, और एक एटीपी का मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है इसकी टेल के अंदर, उसको यूटिलाइज करते हुए ये क्या करते हैं, अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो वायरल डीएनए है ये क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या कर देगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा, और बहुत सारे नए वायरसेस जो हैं वो क्या करते हैं, इससे बन जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं।
इससे क्या हुआ, बहुत सारे नए वायरसेस बन गए, विरियन जो है वो आपके पास इनसाइड द बैक्टीरिया आए। अब डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, ये जो इसके साथ बैक्टीरिया के साथ जो ये वायरसेस हैं, ये क्या थी, अटैच्ड थे। इन्होंने इसको एजिटेट किया, शेक किया। शेक करने के बाद शेक इस तरह से किया डियर स्टूडेंट्स कि जो बैक्टीरियल सेल है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो आपके पास। तो जब इन्होंने इसको शेक किया तो ये जो आपके पास वायरसेस हैं ये क्या हो गए, इससे सेपरेट हो गए, इससे सेपरेट हो गए हैं। जिससे क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जो मीडियम है उसमें देखा गया कि मीडियम के अंदर जितनी भी प्रोटीन है उसमें कौन सा था, सल्फर 35 थी, कि जो प्रोटीन है वो क्या रह चुकी है, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर गई ही नहीं। तो फिर जो नए वायरसेस बने हैं उसमें सल्फर 35 प्रेजेंट नहीं थी। जो सल्फर 35 थी वो क्या रह चुकी है, बैक्टीरियल सेल के बाहर ही रह चुकी है और आपको वो मीडियम से मिलेगी। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास किसका था, वो आपके पास था P32 को यूज करना। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया के ऊपर जो आपके पास वायरस है उसका अटैक करवाया। अब इस वायरस के अंदर ब्लू से लिख रहा हूं, इस वायरस के अंदर जो डीएनए डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा, P32 है। आपको पता होना चाहिए P32 है, आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि ये जो सारे का सारा प्रोटीन कोड है ये तो बाहर रह जाएगा, अंदर कौन सी चीज जा चुकी है, आपके पास अंदर जा चुकी है P32 वाला डीएनए। अब ये जो P32 है ये उसी तरह से क्या करता है, बैक्टीरियल के साथ जो है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या कर जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर जाएगा और जो है ये क्या बनवाता है, अपनी जैसे बहुत सारे वायरसेस बनवाएगा। तो जब देखा गया डियर स्टूडेंट्स कि ये जो P32 था इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से देखा गया तो पता चला कि जो P32 था ये ओनली इनसाइड था, ये कहां पे था, बैक्टीरियल सेल के अंदर था, ये मीडियम में नहीं मिला। सो हम कहते हैं P32 नॉट फाउंड इन मीडियम। तो ये कहां से मिला, इट इज फाउंड इन दी बैक्टीरियल सेल। ये हमें बैक्टीरियल सेल से जो है वो मिला, जिससे हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो नई कॉपीज तैयार हुई हैं, जो इसके अंदर बहुत सारी वायरस की नई कॉपीज थी डियर स्टूडेंट्स, उन कॉपीज के अंदर हमें कौन सा डीएनए मिला, हमें डियर स्टूडेंट्स कौन सा डीएनए मिला, P32 का डीएनए मिला। तो ये कॉलोनी कहां पर थी, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल थी। तो इससे डियर स्टूडेंट्स पता चला कि जो बेसिकली प्रोटीन होती है वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। इस वायरस के केस में प्रोटीन बाहर ही रह गई थी, लेकिन फिर भी जो बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो किया है, बट उनके अंदर वो रेडियो एक्टिव जो था प्रोटीन का जो आइसोटोप था, या वो जो प्रोटीन थी डियर स्टूडेंट जिसमें हमने सल्फर 35 यूटिलाइज किया है, वो प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन इसके केस में क्या था डियर स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट थी, जिससे क्या हुआ, फाइनल ये रिजल्ट पहुंचे कि जो बेसिकली आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपके पास एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐬 Biology. Dear students, today I'm going to teach you deoxyribonucleic acid, which means कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डीएनए के बारे में। Dear students, ये जो टॉपिक है ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एज ए होल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स ये जो इसका नाम है बेसिकली ये किस वजह से पड़ा है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले
इस पर जो काम किया था, या हम कहते हैं कि जो डीएनए डिस्कवर किया था, वो किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। उसने कहां से किया डियर स्टूडेंट्स? उसने स्पर्म, फिश के स्पर्म से एंड एज वेल एज जो ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स हैं WBCs के अंदर से ये जो था डिस्कवर किया। उसने इसको इसी वजह से न्यूक्लियन का नाम दिया, क्योंकि ये कहाँ से निकल रहा था? स्पर्म है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से, इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस से निकला था, तो उसने इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियन का नाम दे दिया। सो नाम क्या था डियर स्टूडेंट्स इसका? न्यूक्लियन। अब ये जो न्यूक्लियन है, ये जो केमिकल है, जब इसका टेस्ट किया गया, इसकी पीएच चेक की गई, तो डियर स्टूडेंट्स पीएच इसकी क्या थी? लो थी। तो इट्स मीन कि ये क्या था? एसिडिक था। तो उससे फाइनल हुआ, इन दोनों को मिला के इसको जो नाम दिया गया वो था डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। सो देखें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो जो डीएनए बेसिकली वो 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास क्या है? राइबोज शुगर है, और ये जो राइबोज शुगर है ये स्पेसिफिकली कौन सी है? दिस इज अ डीऑक्सी। इसमें एक ऑक्सीजन नहीं होती। इसी तरह से इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपके पास कौन सा है? नाइट्रोजनस बेसिस है। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो हमारे पास 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं। एक आती हैं प्यूरीन्स और दूसरी डियर स्टूडेंट्स आती हैं पायरीमिडीन्स। जो प्यूरीन है इनका नाम छोटा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स ये डबल रिंग होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहां पे आपके पास नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन एंड इधर नाइट्रोजन। तो प्यूरीन नाम छोटा है, स्ट्रक्चर बड़ा है। इसी तरह से पायरामिडीन का नाम बड़ा है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? छोटा है। इसमें यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन एंड यहाँ पर नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर इनका मैं आपको डिस्कस करके जो है वो बता दूंगा। तो प्यूरीन में कौन कौन सी आती हैं? प्यूरीन में आपके पास आती है एडेनिन एंड गुआनिन। पायरामिडीन्स में आपके पास कौन कौन सी आती है? इन द केस ऑफ डीएनए डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास आती हैं थायामीन एंड एज वेल एज साइटोसिन। ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास पायरामिडीन के अंदर आती हैं। तो ओवरऑल नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के अंदर कितनी पाई जाती हैं डियर स्टूडेंट्स? 4। ये क्या है? एक एमसीक्यूज है। 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं, AGNCNT। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या पाया जाता है? जो उसका तीसरा कंपोनेंट है दैट इज द फॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट है ये आपके पास फास्फोरिक एसिड H3PO4 की फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स जो है वो पाया जाता है। फर्दर इसमें से जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने बात करनी है राइबोज शुगर की, तो मैं यहाँ पे नीचे ड्रा करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड के ऊपर। जो राइबोज शुगर है इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये बेसिकली आपके पास 5 कार्बन शुगर है। यहाँ पर देखें ये 5 कार्बन शुगर है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 एंड ये आपके पास एक ऊपर कार्बन होती है CH2OH की फॉर्म में। दिस इज कार्बन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास OH, H, यहाँ पर H, OH, H, OH और नीचे इसके 4 पे H। ये आपके पास राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। लेकिन डीएनए में कौन सी मैंने बताई है? डीऑक्सी। डी का मतलब है नहीं, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। तो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होती है। सो राइबोज शुगर के अंदर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 पर। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज है कि कौन सी कार्बन पर आपके पास ऑक्सीजन मिसिंग होती है इन द केस ऑफ डीएनए।
तो अब हम चलते हैं प्यूरीन्स एंड पायरीमिडीन्स के स्ट्रक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं प्यूरीन्स का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर मैं दिस इज ए फॉर एडेनिन का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपके पास उसी तरह से डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये आपके पास जो है इसी तरह से ये नाइट्रोजन, ये 6 कार्बन रिंग है। इसी तरह से आपके पास ये नाइट्रोजन और ये आपके पास, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, एडेनिन का। अब इसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूट हैं वो उनको मैं ऐड करता हूं। तो इसमें हम नंबरिंग दे लेते हैं स्टार्ट से। ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि जैसे बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है हम वैसे बना लेते हैं। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है ये, और ये आपके पास डबल बॉन्ड है, एक छोड़कर दोबारा फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये बेसिक स्ट्रक्चर किसका बन गया है आपके पास, बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है एडेनिन का। तो इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, NH2 अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये किसका है, एडेनिन का। इसको आप क्या बोलते हैं, याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आप याद रखें 6 अमीनो एडेनिन कि जो अमाइन ग्रुप है वो किस कार्बन पर प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 6 पर प्रेजेंट है। अगर इसी तरह से अब मैं स्ट्रक्चर इसके नीचे बनाऊं गवानीन का, तो गवानीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्कुल उसी तरह से डबल रिंग है, नाइट्रोजन, ये आपके पास नाइट्रोजन, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये बाकी जो हैं ये सारी क्या हैं, कार्बन्स हैं। ये आपके पास नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये दोबारा फिर नाइट्रोजन, और ये ऐसे ये रिंग आपस में जुड़ जाती है। इसमें अब फर्क क्या है उसमें और इसमें, वहां पर आपके पास ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर किस कार्बन पर दोबारा से फिर गिनते हैं, दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कार्बन नंबर 6 पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से डियर स्टूडेंट यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक H होती है, जिस वजह से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हैं। बाकी जो डबल बॉन्ड है वो सेम रहेंगे ऐसे, एंड एज वेल एज ये डबल बॉन्ड और ये आपके पास जो है डबल बॉन्ड। अब इसमें जो 2 पोजीशन होती है इस पर क्या लगा होगा, NH2। आप इसको क्या बोल सकते हैं, ग्वानोसिन को याद रखने के लिए 2 अमीनो ग्वानोसिन, 2 अमीनो गुआनिन, आप इसको इस तरह से जो है वो याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्यूरीन्स के स्ट्रक्चर हैं। अब हम आएंगे पायरीमिडीन्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो पायरीमिडीन्स हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पायरीमिडीन्स। ये जो पायरीमिडीन्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स, थायामीन के केस में नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, इससे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए जो नंबर 4 है इस पर क्या होगा, आपके पास डबल बॉन्ड होगा। नंबर 2 पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और नंबर 5 पर आपके पास सिंपली CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा होगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका बन गया है, थायामीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे साइटोसिन का। तो साइटोसिन का भी स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह से ही है, नाइट्रोजन, ये आपके पास नाइट्रोजन। नंबरिंग दे लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसी तरह से आपके पास ये जो कार्बन नंबर 2 है इस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एंड कार्बन नंबर 4 के पास आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, आपके पास साइटोसिन का। तो साइटोसिन को याद करने के लिए आप कह सकते हैं 4 अमीनो साइटोसिन एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसको आप क्या कह सकते हैं, 5 मिथाइल थायामीन। तो ये थायामीन का स्ट्रक्चर है। ये आपके पास बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स।
ये था आपके पास केमिकल नेचर ऑफ डीएनए कि केमिकल बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से। अब हम आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ। अब ये जो डीएनए बेसिकली ये इन 3 चीजों से जो मिलकर बना हुआ है, इस तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है? एक शुगर है, ये शुगर है डियर स्टूडेंट्स। इस शुगर की कार्बन नंबर 1 पर क्या अटैच है? कोई भी बेस अटैच है। बेस कौन सी डियर स्टूडेंट्स? आप कह सकते हैं एडिनिन है, इसी तरह से गवानीन हो सकती है, थायामीन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है। और याद रखने वाली जो चीज है, कार्बन नंबर 3 पर क्या था? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 3 पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और कार्बन नंबर 5 पर क्या चीज प्रेजेंट है? दैट इज द फॉस्फेट। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब डियर स्टूडेंट्स, यही जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं, बाइंडिंग करते हैं, उसके रिजल्ट में क्या बनता है? आपके पास एक पूरे का पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। और फिर यही न्यूक्लियोटाइड दूसरी तरफ जो है वो बॉन्डिंग बनाते हैं, जिससे क्या होता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बनते हैं। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये कार्बन नंबर 3 है, इसको 3 प्राइम क्यों कहते हैं? ये 5 है और इसको 5 प्राइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर जगह पर लिखा होता है कि डीएनए जो है वो उसके स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। ये बात मैंने थोड़ा सा बाद में बतानी थी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बताना मुनासिब समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 पर हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट और 5 पर आपके पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए फॉस्फेट ग्रुप का, जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पर लिख के दिया H3PO4, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करूं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? P डबल बॉन्ड O, OH, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स OH, और यहाँ पर आपके पास OH। ये क्या है? H कितने हैं? 1 2 3, H3P1O4, H3PO4। अब यहाँ पर क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। नीचे से ये आपके पास जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास कोई भी बेस हो सकती है। और इसकी 5 प्राइम पर क्या प्रेजेंट था? राइबोज शुगर की, डीऑक्सीराइबोज CH2, ये आपके पास CH2 एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसके साथ अटैच है OH, CH2OH। ये देखें CH2OH, CH2OH। और दोबारा से फिर देखें कार्बन नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ? डबल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास इधर से H, इधर से आप कह सकते हैं OH, और इधर से H जो है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर दूं, H2O की फॉर्म में निकाल दूं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगी डियर स्टूडेंट? सिंपल ऑक्सीजन रह जाएगी। तो ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 3, ये किसके साथ अटैच हो गई है? इस फास्फोरस के साथ अटैच हो गई है। दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। ये आपके पास क्या कहलाता है? एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन है, इसको बुक में लिखा हुआ POC, ये बॉन्ड जो है ये क्या कहलाता है? एस्टर बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह से नीचे कंडेंसेशन हुई है, इधर से आपके पास H और ये आपके पास OH, यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये देखें ये रिमूव हो गया है। पीछे क्या बच गई है डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन बच गई है और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। देखिए POC, ये क्या है? एस्टर बॉन्ड। एक एस्टर बॉन्ड ऊपर बन रहा है, एक एस्टर बॉन्ड इधर बन रहा है। सो इसको हम बोलते हैं फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब यहाँ पर देखें, हर दफा 5
कार्बन नंबर 5 को 5 प्राइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर फॉस्फेट प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स। और हम कार्बन नंबर 3 को, ये जो है इसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है। यहाँ पर बेशक आप देखेंगे कि एक नया न्यूक्लियोटाइड है, मैं एक और ऐड कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी बट मैं समझाने के लिए। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर 1 पर बेस है, कार्बन नंबर 3 पर दोबारा से हाइड्रोक्सिल आयन है। इसी तरह से ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड C डबल बॉन्ड हो, ये OH, ये OH एंड ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स पहले किसके साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोबारा से कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। इस तरह से क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। तो एक स्ट्रैंड जो है वो देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। इसके बरअक्स डियर स्टूडेंट्स ये स्ट्रैंड उल्टा होकर इस साइड पर बनेगा। दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो 5 प्राइम इधर होगा, 3 प्राइम आपके पास इधर होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 एंटी पैरेलल डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो बन जाते हैं। अब हम चलते हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉरिस विल्कन, रोजालैंड फ्रैंकलिन, वाटसन एंड क्रिक इन सब ने डियर स्टूडेंट्स जो है वो पेश किया था, जिसमें एर्विन चारगाफ जो है उसका भी बहुत अहम रोल है। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इन सब साइंटिस्ट ने जो स्ट्रक्चर पेश किया उसको मैं ओवरऑल जो है वो आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो डीएनए है, स्पेशली वाटसन एंड क्रिक ने, जो डीएनए वो आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि आप कह सकते हैं अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, इसी तरह से ये 3 प्राइम है तो 5 प्राइम होगा। डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा आपके पास ये है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये हेलिकल है, मतलब ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो जगह है जहां पे डीएनए कम नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रूव बोलते हैं। जब हम डीएनए को देखते हैं सामने से, जो थोड़े जहां पर हमें न्यूक्लियोटाइड्स दिखे, बेसिकली होते ये सही है। फॉर एग्जांपल एक ये फेस है, यहाँ से आपको मेरा हाथ पूरा दिख रहा है, ये हाथ ही मेरा, लेकिन अब आपको ये थोड़ा दिख रहा है। तो ये जो मेन चीज है ये आपके पास क्या कहलाती है, माइनर ग्रूव कहलाती है। और जो एक्सपोज होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, मेजर ग्रूव कहलाता है। और डियर स्टूडेंट्स डीएनए क्या कर रहा होता है, टर्न कर रहा होता है। तो एक टर्न जो है, ये जो आपके पास एक टर्न है, इसका जो ओवरऑल आपकी लेंथ है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर, और वी कैन से 34 एंगस्ट्रॉम। ये भी आपसे पूछा जाए, स्टूडेंट्स आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक टर्न के अंदर जो आपके पास ओवरऑल लेंथ है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। अब डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं, जैसा कि ये मैंने देखा, ये एक बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये दूसरी जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का उसके साथ क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टी होगा और इनके अंदर डबल बॉन्ड होगा। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर जी था तो इन तीनों इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होके सी इधर प्रेजेंट होगा। ये जो आपके पास स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है ये किस वजह से बन रहा है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो याद रखें एर्विन चारगाफ हमें बताता है कि डीएनए के अंदर जितनी एडेनिन होंगी उतनी थायामीन होंगी। एडेनिन प्यूरीन है और थायामीन पायरिमिडीन है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उसने बोला जितनी गुआनिन होगी उतनी आपके पास क्या होंगी, साइटोसिन्स होंगी। और दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जो आपके पास प्यूरीन है वो बराबर होती है पायरामिडीन के, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए एट गवर्नमेंट कॉलेज
A always bind with T and G always bind with C। ये आपके पास याद रखने के लिए ये मैंने की बनाई है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें डीएनए के अंदर इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। लास्ट पे मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा और वो बड़ा इजी है। तो डियर स्टूडेंट्स जब इसका डायामीटर देखा गया तो वो कितना था, 2 नैनोमीटर था। और ये जो बेस पेयर है, देखो एक बेस ये है, दूसरी बेस ये है, एक बेस पेयर बन गया है। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से डिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 0.34 नैनोमीटर और वी कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आप खुद देखें कि आपके पास एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर हो सकते हैं या कितनी बेसिस हो सकती हैं। तो आप इसको डिवाइड कर लें, 3.4 डिवाइडेड बाय 0.34, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 10। तो ये भी एमसीक्यूज आपको याद रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स के एक टर्न के अंदर 10 जो है वो आपके पास बेसिस आती हैं और अगर बेस पेयर हो तो ऑटोमेटिकली वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आइए मैं अब आपको समझाता हूँ कि आप डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने बैकबोन बनानी है, शुगर और इधर भी शुगर, शुगर शुगर शुगर, और ये शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज। इसी तरह से शुगर और इसी तरह से शुगर, इतना ही काफ़ी है। इसमें आप किसी एक को 3 प्राइम बना लें। सपोज इस पर आपने लगा दिया OH, तो ये आपके पास कौन सी है, 3 प्राइम। आप खुद देख लें, ये अगर आपके पास राइबोज है तो उसकी कार्बन नंबर 3 पर क्या है, OH प्रेजेंट है। और अब क्या होगा, इधर मेरा बेटा आपके पास 3 प्राइम होगा, उल्टा है। इसी तरह से अगर ये आप इसको 5 प्राइम बना रहे हैं तो इस पर क्या है, P है, और इधर आपके पास क्या है, P। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, P से 5 तो ये 5 प्राइम है आपके पास। अब ये दोनों आपके पास जो है वो एंटी पैरेलल हो गई डीएनए के स्ट्रैंड। अब ये 2 शुगर्स कैसे जुड़ी हुई हैं, ये 2 शुगर जुड़ी हुई हैं फॉस्फेट की हेल्प से। सो दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बड़ा आसान तरीका है, आप इससे आप क्या कर सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इस स्ट्रैंड के अंदर भी दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये डीएनए की क्या बन चुकी है, बैकबोन बन गई है। तो इसमें अब आपने क्या करनी है, जैसे यहाँ पर एडेनिन है तो इसके साथ डबल बॉन्ड थायामीन ऐड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर G है तो ट्रिपल बॉन्ड C, इसी तरह से अगर C है तो ट्रिपल बॉन्ड G, और इसी तरह से अगर आपके पास T है तो डबल बॉन्ड A। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से जो बेसिस होती हैं वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रक्चर है डीएनए का जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। इससे आपको आई होप कि समझ भी आ गई होगी अच्छे से। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस, और ये पूरे का पूरा बेस पेयर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था डीएनए का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है डियर स्टूडेंट्स, उसको लाइक ज़रूर करें और ये चैनल शेयर भी करें, क्योंकि बेसिकली जितने बच्चों तक ये चैनल जाएगा उतने बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरे लेक्चर्स से बहुत कुछ सीखें। अगर कुछ आप लोगों को मतलब लगता है कि मैं किसी और तरह से जो वीडियो है उसको बनाऊं या फिर उसमें एग्जांपल कोट करूं, या फिर आप मतलब कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर आप वो मेरे साथ शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें, तो आई होप कि मैं अपने लेक्चर को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकूँ। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Dear students, today I am going to teach you the Michelson and Stahl experiment. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डीएनए का जो मॉडल है उसके बारे में पढ़ा था। That was proposed by Watson and Crick. अब उस टॉपिक के अंदर हमने डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और आज जो है वो बहस है हमारी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के ऊपर। जैसे ही वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल पेश किया, उसके बाद साइंटिस्ट इस काम पे लग गए कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है।
पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है, इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो डीएनए वो अपनी कॉपीज बनाता है। तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि ये जो रेप्लिकेशन है ये रेप्लिका से निकला हुआ है, और रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमारा बेसिक फोकस जो होगा वो ये होगा कि डीएनए किस तरह से डिवाइड करता है, किस तरह से रेप्लिकेट करता है। इसमें हम प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड मॉडल पेश किए गए वो कौन कौन से थे? एक था कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड थर्ड वन था डिस्पर्सिव मॉडल। जो आपके पास कंजर्वेटिव मॉडल था, इसमें साइंटिस्ट का कहना था कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेरेंटल डीएनए है, और जब ये रेप्लिकेट करता है तो इसमें जो पेरेंटल डीएनए होगा वो इंटैक्ट रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, और ये अपने साथ एक नया डीएनए जो है, एक न्यू डीएनए जो है वो बना लेगा। This process is called conservative model, in which parental DNA remain intact. This process is called conservative model. अब semi conservative model में क्या था? Suppose आपके पास ये कौन सा है? That is the parental DNA. ये ब्लैक से मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज पेरेंटल डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव में क्या था कि ये डीएनए ओपन होता है, इस तरह से ये ओपन होगा, ये ओपन हुआ है पेरेंटल डीएनए, और ये अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है वो बना लेगा। इसी तरह से ये इस साइड पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बना लेगा। इस तरह से कॉपीज जो है वो बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। मतलब एक साइड कंजर्व रही है और दूसरी साइड नए सिरे से बन गई है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। डिस्पर्सिव में क्या था डियर स्टूडेंट्स? सपोज आपके पास ये पेरेंटल डीएनए है, इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूं आपको समझाने के लिए। सपोज ये आपके पास कौन सा है? पेरेंटल डीएनए है। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रैंड्स बनते हैं बेसिकली वो आपके पास कैसे होते हैं? कुछ यूं होते हैं कि इधर आपके पास ब्लैक आ गया, ये भी ब्लैक आ गया। अब इसके अगेंस्ट यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक, और ये आपके पास ब्लैक, और इस तरह से ये ब्लू और ये ब्लू, फिर इस तरह से ये दरमियान से इनकी नाइट्रोजनस बेसिस। मतलब क्या कि जो पेरेंटल डीएनए है वो डॉटर डीएनए के अंदर कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाता है। इस तरह का ही सेम स्ट्रैंड जो है वो एक और बन जाएगा आपके पास, लाइक दिस। So this process is called dispersive डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल। अब इसको प्रूव करना था मिजल्स एंड एंस्टाल ने। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली वो डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है इसको प्रूव करना था कि आइदर आपके पास कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, या फिर डिस्पर्सिव मॉडल ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जो इन्होंने चीज ली वो क्या थी? बैक्टीरिया था। इन्होंने बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को ग्रो करवाया मीडियम के ऊपर। ऐसा मीडियम जिसमें नाइट्रोजन जो थी वो कौन सी थी डियर स्टूडेंट्स? N15 थी। हैवी आइसोटोप यूज किया गया नाइट्रोजन का। अब इस पर जो बैक्टीरिया ग्रो किए, इस पर क्या चीज ग्रो कर रही है डियर स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अब इस बैक्टीरिया को हम दे ही नाइट्रोजन जो है वो N15 रहे हैं, तो इसका जो डीएनए है उसके अंदर N15 ही इनकॉर्पोरेट कर जाएगी। इसका जो डीएनए उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनमें N15 जो नाइट्रोजन है वो N15 प्रेजेंट होगी। अब क्या किया जाता है, इन्हीं बैक्टीरिया को, ये इसके पास जो डीएनए इसमें कौन सी चीज है? दैट इज N15, जिसको मैंने रेड के साथ शो किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। बैक्टीरिया से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको किस में डाला? टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, और सीजियम क्लोराइड में इसको क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और डीएनए को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीफ्यूज किया, और सेंट्रीफ्यूज भी कौन सा वाला किया डियर स्टूडेंट्स? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अब जैसे ही आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है? सपोज ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है
और इसके अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, सीजियम क्लोराइड है। उसमें एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाता है, नीचे डेंसिटी ज्यादा, जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हैं डेंसिटी क्या हो गई है, कम। नीचे जो क्या है डेंसिटी ज्यादा है और ऊपर क्या है, कम। सो यहाँ से ऊपर डेंसिटी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, लो होती जा रही है। नीचे डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर जो है वो लो है, क्योंकि नीचे सीजियम के जो एटम्स हैं वो क्या कर चुके हैं, माइग्रेट कर गए। इस तरह से क्या हुआ है, एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया है, मतलब हाई से लो की तरफ। अब डीएनए को जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डीएनए को ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला जहां पर डीएनए की डेंसिटी मैच करेगी किसके साथ, इस डेंसिटी ग्रेडियंट में, वहां पर डीएनए क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो बैंड मिला ये बिल्कुल, या ये जो आपको डीएनए मिला ये टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल क्या था, नीचे था। फिर उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल N14 जो है उसको यूटिलाइज किया। इसमें इन्होंने क्या ग्रो करवाए, बैक्टीरिया ग्रो करवाए। अब इसका जो डीएनए था डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर नाइट्रोजन N14 थी, नॉर्मल नाइट्रोजन थी। उसी तरह से इसको भी सीजियम क्लोराइड का जो है सॉल्यूशन उसके अंदर डिसॉल्व किया, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से वही प्रोसेस रिपीट हुआ, डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया, और जब इन्होंने डीएनए को अलाउ किया कि वो सेटल हो जाए तो डीएनए जो है वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाली साइड पर आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये हैवी डीएनए था तो ये नीचे आया, ये आपके पास लाइटर डीएनए था तो ये किधर आ गया, ऊपर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इन साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों ने, मिजल्सन एंड स्टाल ने N15 वाला बैक्टीरिया पकड़ा और किधर डाल दिया, N14 वाले मीडियम में। अब देखें कि जो एक जनरेशन थी वो N15 की थी, अब उससे मीडियम कौन सा मिल रहा है, N14 का। तो जो इसका डीएनए था पहले वाला डीएनए यानी कि पेरेंटल डीएनए, वो कौन सा था डियर स्टूडेंट्स, N15 ही था। अब ये क्या करता है, उसी तरह से सीजियम, उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सीजियम क्लोराइड, और उसको क्या किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया, डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया। अब जब इसने ग्रो किया N14 के ऊपर, तो जो F1 जनरेशन थी, जो आपके पास F1 जनरेशन थी, उसके कुछ रिजल्ट यूं आए कि ना बैंड जो है या डीएनए जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास बॉटम पे रहा, ना टॉप पे गया, बल्कि वो किधर चला गया, सेंटर में आ गया। तो अब ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो आपके पास है मे बी ये N14 और N15 का हाइब्रिड है, यानी कि इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो आपके पास N14 का है और दूसरा आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, N15 का है। अब ये देखें आपके पास सपोज क्या है, ये F1 जनरेशन में बनाने लगा हूँ, ये रेड वाला आपके पास डीएनए है। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये कुछ यूं करेगा, इसमें एक स्ट्रैंड जो था डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा था, रेड वाला था, और दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ कौन सा वाला बन गया है, ब्लू वाला, न्यू बना है। इसी तरह से ये पहले वाला था और इसके साथ ये जो स्ट्रैंड बना है ये न्यू वाला बना है। तो यहाँ पर देख लें ये हाइब्रिड ही डीएनए था। अब हमने इसको क्या किया हुआ है, या साइंटिस्ट ने इसको क्या किया हुआ था, सिर्फ N14 मीडियम दिया हुआ था। तो अगर आप इससे F1 से F2 की प्रोजनी लें तो इससे दो स्ट्रैंड बन रहे हैं। एक स्ट्रैंड ये स्टूडेंट्स ये वाला रेड वाला जो कि मैंने इधर ड्रा कर दिया है, और एक इससे कौन सा वाला बन रहा है, ब्लू वाला। तो यहाँ पर देखें इस रेड वाले के अगेंस्ट एक नया क्या बनेगा, ब्लू बनेगा, और इस ब्लू के अगेंस्ट दोबारा से एक नॉर्मल, यानी कि ये क्या है, N14 कंटेनिंग, इसमें N15 नहीं है, ये F2 जनरेशन है। और इसमें डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, N14 एंड N15 का हाइब्रिड है। जब उन्होंने F2 का यही प्रोसेस रिपीट किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने जब टेस्ट ट्यूब में देखा तो कुछ रिजल्ट यूं थे डियर स्टूडेंट्स कि एक जो डीएनए है F2 का, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये हाइब्रिड कहाँ पर आ गया, ये हाइब्रिड आपके पास सेंटर में आ गया, ये सेंटर में। बट ये जो लाइटर डीएनए N14
ये किधर आ गया, ऊपर आ गया। तो इस तरह से दो बैंड हुए, एक क्या था N14 N15 था, और दूसरा जो है वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या था, N14 था। अब डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट्स बाकी थे, वो क्या थे डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स थे। इन्होंने ये कहा कि जब हमने N15 वाले मीडियम में ग्रो करवाया तो बैंड नीचे बना, N14 में करवाया तो बैंड ऊपर बना। जब N15 को उठा के N14 के अंदर रख दिया मीडियम के अंदर, तो हमारे पास हाइब्रिड बना। सो इट्स मीन कि जो DNA है अब वो क्या करता है, जो उसको मीडियम मिला है नया, वो उसको क्या करेगा, उसकी नाइट्रोजन को यूज करेगा और एक सेंटर में बैंड देगा। और ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि N15 और N14 अगर दोनों का हाइब्रिड होगा तो वो N15 से हल्का N14 से भारी होगा, तो दैट्स वाई वो किधर आ जाएगा, आपके पास सेंटर में आ जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसेस कि इसी जो आपके पास ये वाला हाइब्रिड DNA था, इसकी F1 जनरेशन ली। तो F1 जनरेशन में आपके पास, जैसे कि मैंने ये आपको दिखा दिया है, दो हाइब्रिड DNA आए हैं, जो आपके पास ये बैंड बना पड़ा है। फिर F1 को इन्होंने क्या किया, दोबारा से ग्रो करवाया N14 मीडियम को। अब उसके रिजल्ट में क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, जो F2 जनरेशन बनी उसमें आपके पास एक जो स्ट्रैंड था वो क्या था, हाइब्रिड था, यानी कि जो एक DNA का स्पेसिफिक पोर्शन था वो क्या था, या DNA था, हाइब्रिड था। जो दूसरा था वो क्या था, नॉर्मल था। तो अब जो थे वो दो बैंड बने, एक सेंटर में बन गया, एक ऊपर बन गया। अब रिजल्ट इन्होंने ये दिए कि जो DNA है वो सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। कि जो वाटसन एंड क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन था वो ठीक था, इसमें आपके पास डिस्पर्सिव भी नहीं सही और कंजर्वेटिव भी नहीं सही। ये किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ F2 जनरेशन। जब ये F2 जनरेशन आई तो तब क्लियर हो गया कि एक स्ट्रैंड कंजर्व रहता है और उसके साथ दूसरा स्ट्रैंड जो है डियर स्टूडेंट्स वो बन जाता है। इसी तरह से ये देख लें, इसमें भी एक कंजर्व रहा था और एक आपके पास नया बन गया था। तो ओवरऑल रिजल्ट में क्या था, एक हाइब्रिड बना था और एक जो है वो नॉर्मल बना। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum, welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you the most important topic, the DNA replication. इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली DNA रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो DNA रेप्लिकेशन है उससे रिलेटेड मॉडल्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था, 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐬 एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो DNA रेप्लिकेशन है इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप कहते हैं द सिंथेसिस ऑफ two new double-stranded DNA, or we can say two new daughter DNA from the parental DNA is called DNA replication, or we can say these daughter DNA are replica of their parental DNA. So हम कहते हैं कि for example आपके पास parental DNA है और इस parental DNA ने two new daughter DNA के अंदर जो है वो तब्दील होना है, और वी कैन से कि पेरेंटल DNA ने टू न्यू डॉटर्स कॉपीज बनानी है। तो ये जो कॉपीज होंगी ये एग्जैक्ट रेप्लिका होंगी। आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आप एक पेज को फोटोस्टेट मशीन के ऊपर रखते हैं और उससे दो न्यू पेज निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिका और मेकिंग कॉपीज। ये आपके पास क्या कहलाएगा, DNA रेप्लिकेशन कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो बात है वो ये है कि रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, DNA ने अपने आप को डबल क्यों करना है, इसने अपनी कॉपीज क्यों बनानी है। तो क्वेश्चन है व्हाई DNA replicates itself। तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब जो सेल्स हैं हर सेल के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, DNA पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने डिवाइड करना है कैसे। एक सेल की अगर एवरेज लिमिट आप देखते हैं तो वो आपके पास कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि 3 मंथ्स हो सकती है, 4 मंथ्स हो सकती है। कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है या फिर हमें इंजरी होती है, कट लग जाता है, तो जो प्रोसेस होता है रीजनरेशन का या आप कह सकते हैं माइटोसिस का, और वी कैन से कि एक सिंगल सेल जाइगोट से जो पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ट्रिलियन सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो जाइगोट है, जाइगोट से
एक पूरे का पूरा जो इंडिविजुअल है उसके अंदर आप देखें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहे हैं, 46 रहे हैं, बट डियर स्टूडेंट्स हर सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। तो इट्स मीन कि एक सेल रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है तो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ रखा होगा। सेल साइकिल में आपने G1 फेज पढ़ी है, G0 फेज पढ़ी है, G2 फेज के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसमें जो S फेज होती है, सेल साइकिल बेसिकली है क्या कि एक सेल का 2 सेल्स में डिवाइड हो जाना, ये क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, सेल डिवीजन कहलाती है, और ये सेल साइकिल के अंदर हो रहा होता है। इसमें एक स्पेसिफिक फेज आती है, उसको बोलते हैं हम एस फेज। एस फेज के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डीएनए डुप्लीकेट करता है, और वी कैन से डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो अगर आपके पास रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो डीएनए जो है वो उसकी कॉपीज नहीं बन पाएंगी, डीएनए कॉपीज नहीं बना पाएगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। अगर आपको कट लग गया तो रीजनरेशन नहीं हो पाएगी। एक जाइगोट है तो वो उसी फॉर्म में रहेगा, उससे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, उससे फीटस नहीं बनेगा, उससे डियर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नहीं बनेगा, तो वो प्रोसेस वहां पर स्टॉप हो जाएगा। दैट्स व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज मच इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि डीएनए जो है उसने रेप्लिकेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही एस फेज स्टार्ट होती है, G1 फेज के बाद सिंथेसिस फेज, इसमें क्या होता है, डीएनए और वी कैन से क्रोमोसोम्स में स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओराए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। ये आपके पास क्या है, ओराए साइट्स होती हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस पड़े हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। और इनको ओपन कौन करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि पैक्ड फॉर्म में है। यहाँ पर एक प्रोटीन आएगी जिसका आपकी बुक में जिक्र नहीं है, डीएनए ए प्रोटीन। ये आके इस ओराए साइट पर बाइंड कर जाएगी। जैसे ये बाइंड करेगी, ये डीएनए में हल्की सी स्ट्रेच बनाएगी, जिससे क्या होता है कि ये सेंट्रल जो है एक छोटा सा बबल बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये छोटा सा जैसे ही बबल बनेगा तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस होंगे, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था कि फॉर एग्जांपल A ऑलवेज बाइंड विद T विद डबल बॉन्ड एंड G ऑलवेज बाइंड विद C विद ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो सीक्वेंस होता है ओराए, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं A एंड D, ये ज्यादा होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा इजी होता है। तो जैसे ही ये डीएनए प्रोटीन इस रीजन को डिटेक्ट करती है, वहां पर ये क्या कर देती है, डीएनए को खोल देती है। तो यहाँ पर ये सारा डीएनए स्टिल जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ी हुई है इसकी, बट इस पोर्शन पर क्या हुआ है, थोड़ा सा डीएनए जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, ओपन हो गया। दिस इज कॉल्ड ओराए साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर ये ओराए साइट एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जगहों पर हो सकती हैं, बहुत सारी जगहों पर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही ओराए साइट होगी। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही ये ओराए साइट बनेगी डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगी, तो यहाँ पर एक प्रोटीन आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज प्रोटीन, और वी कैन से डीएनए बी प्रोटीन, या हम इसको बोलते हैं हेलिकेज। ये क्या नाम है इसका, हेलिकेज। हेलिकेज यानी कि डीएनए के हेलिक्स को तोड़ने वाला, ये आपके पास क्या कहलाता है, हेलिकेज। इसका काम क्या है, डीएनए की अनवाइंडिंग करना। ये जो डीएनए आपके पास, इसकी अनवाइंडिंग करना और डीएनए को क्या करते जाना, खोलते जाना। तो जो पहला स्टेप है उसमें इनिशिएशन के अंदर सबसे पहली प्रोटीन जो थी वो कौन सी थी डियर स्टूडेंट्स, डीएनए ए प्रोटीन। उसके बाद कौन सी आई है, आपके पास आया है हेलिकेज। हेलिकेज के बाद जैसे ही हेलिकेज आएगा, इसने डीएनए को क्या करना है, खोलते जाना है और एक रेप्लिकेशन बबल बनवाना है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आएंगी जिनको मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। ये डीएनए को स्ट्रेट करके रखती हैं, दोबारा से वाउंड नहीं होने देती, दोबारा से जुड़ने नहीं देती। इन प्रोटीन्स का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन सी है, SSB प्रोटीन। तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर SSB प्रोटीन्स जो है वो आके इनके साथ बाइंड कर जाएंगी ताकि डीएनए दोबारा से रैप अप ना हो जाए। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा डीएनए गायरेज, इसको जायरेज भी बोलते हैं
ये जो डीएनए गायरेज है, इसका काम क्या होता है कि डीएनए ऐसे जैसे रैप अप हुआ है ना, इसने डीएनए को सुपर कॉइलिंग से बचाना है। तो इसका काम क्या है? अवॉइड सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग से बचाएगा। क्योंकि अगर डीएनए सुपर कॉइल कर जाएगा तो फिर उसको खोलना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये जो स्ट्रेट हो रहा है ऐसे, ये भी काम किसका होता है? डीएनए गायरेज एंजाइम का। फिर एट द एंड जो डियर स्टूडेंट्स है वो आपके पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3। जी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है और काफी बड़ा होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये कौन सा है? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। इसके ये 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक ऊपर वाले स्ट्रैंड के साथ और एक डियर स्टूडेंट्स नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। एक तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं? ये लार्जर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2। उसके बाद ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है, यानी कि ये डाइमर है। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है? ये क्या करता है? रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करवा देता है, बढ़ा देता है, शुरू करवा देता है। उसके साथ साथ इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है डियर स्टूडेंट्स? इट एड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। ये क्या है मैं अभी आपको बता देता हूं। और लास्ट में जो इसका काम है, इट डज नॉट इनिशिएट de novo synthesis of DNA, यानी कि डीएनए को जो है रेप्लिकेशन वो खुद से स्टार्ट नहीं कर, इसके लिए इसे एक एडिशनल एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज प्राइमेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? प्राइमेज। तो डियर स्टूडेंट्स अब कौन सा एंजाइम आएगा? एसएसबी के बाद आपके पास आया है डीएनए पॉलीमरेज 3, और लास्ट पे ये किसको बुलवाएगा? प्राइमेज एंजाइम को। अब प्राइमेज एंजाइम क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? प्राइमर ऐड कर देता है। क्या करेगा? ये प्राइमर ऐड करेगा। सपोज ये आपके पास इस जगह पर इसने क्या कर दिया है? प्राइमर ऐड कर दिया है। अब ये जो प्राइमर है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्राइमेज क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? एक चीज ऐड करता है जिसका नाम है प्राइमर। प्राइमर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्राइमर इज अ 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, और ये मिलकर किससे बना होता है डियर स्टूडेंट्स? आरएनए से। आरएनए का सीक्वेंस है राइबो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है। इसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमर बोलते हैं। अब ये जो आपके पास रेप्लिकेशन इनिशिएशन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। तो रेप्लिकेशन इनिशिएशन कैसे कंप्लीट हुई? सबसे पहले ओराई साइट को डिटेक्ट किया गया, उसको ओपन किया गया, फिर हेलिकेज एंजाइम आया, उसने डीएनए को खोल के क्या कर दिया? ऐसे स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने में हेल्प किसने की? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने की। फिर डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ? जब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ऊपर बंध गई तो डीएनए गायरेज आया, उसने क्या किया कि जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग है उसको क्या किया? कंट्रोल कर दिया, सुपर कॉइलिंग को खत्म किया। आप ऐसे समझ लें कि आपके पास एक रस्सी है जो बल खाई हुई, आपने दोनों उंगलियां उसमें डाल के उसको ओपन किया है, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे साइडों पर सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। तो अब डीएनए गायरेज क्या करता है? उस सुपर कॉइलिंग को खत्म करता जाता है और डीएनए को बिल्कुल स्ट्रेट करके देता जाता है। साथ साथ हेलिकेज जो है वो क्या करता जाता है? उसको डीएनए को ओपन करता जाता है। ये जो आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क का नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेप्लिकेशन फोर्क क्या है, आप कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। और यहाँ पर आपके पास ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। इसको हम क्या नाम देते हैं? रेप्लिकेशन बबल का नाम देते हैं कि यहाँ से क्या होनी है? डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है, और ये बबल बन चुका है।
जैसे ये बबल बनेगा डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होना है, डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जानी है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना है। वो कैसे होगा, यहाँ पर देखें जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या हो रही है, डायरेक्टली जो है वो हो रही है। कैसे हो रही है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जब ये प्रोसेस होता है, सपोज मैं इस डीएनए को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। ये देखें आप लोग समझाने के लिए, सपोज जो है वो आपके पास क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस जगह पर प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, मैंने आपको बताया ये खुद से डीएनए को सिंथेसाइज नहीं करवा सकता, खुद से डीएनए को सिंथेसाइज नहीं करवा सकता। तो इसको एक चीज की जरूरत होती है, उस चीज का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है प्राइमर। ये प्राइमर जो है जब प्राइमेज एंजाइम लगा देगा तो अब ये डीएनए क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या करना शुरू कर देगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये क्या करता जाता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है। तो ये आपके पास प्राइम कौन सी थी, 5 प्राइम थी, और ये आपके पास कौन सी थी, 3 प्राइम थी। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये आपके पास इस जगह पर डियर स्टूडेंट्स जो है वो पहुंच चुका है। तो इसने क्या किया है, साथ साथ ये डीएनए को क्या करता जा रहा है, सिंथेसाइज करवा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करवा रहा है। किधर करवा रहा है, टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क करवा रहा है। तो एक स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूसली बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, और एक स्ट्रैंड इसको आप क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है, जो बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क चल रहा है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या किए जा रहे हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। बट इसके बरक्स क्या हो रहा है, दूसरा जो है वो आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनेगा, उसके लिए मैं दोबारा से नीचे ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सपोज आपके पास ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है डियर स्टूडेंट्स, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये 5 प्राइम है, ये आपके पास क्या है, 3 प्राइम है। जो इसके ऊपर डीएनए बनना है वो कैसे बनेगा, देखें ये आपके पास 3 प्राइम में और ये इस तरफ बन रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5 प्राइम। तो अब हैरानगी की ये बात है कि मैंने पहले बात बताई है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। रीजन क्या है, जब भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर में भी एंड सेकेंड ईयर में भी, मैंने बोला था कि ये जो राइबोज शुगर है इसकी जो कार्बन नंबर 1 2 3 पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल, 1 पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेस प्रेजेंट है, और 5 पर क्या है, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है इसकी कार्बन नंबर 3 पर फ्री हाइड्रोक्सिल जो है वो प्रेजेंट है। अब इसी वजह से ये क्या करता है, 3 प्राइम में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। 5 प्राइम पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 5 प्राइम पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो रेप्लिकेशन होगी डियर स्टूडेंट्स, ये उस तरह से स्मूथ नहीं हो पाएगी, कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगी, ये डिसकंटिन्यूअस होगी। डिसकंटिन्यूअस होगी सो इट्स मीन इसको क्या किया जाता है, टुकड़ों में किया जाता है, छोटे छोटे पैचेस के अंदर। उन पैचेस को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। अब इसमें जो डीएनए बनना है वो कैसे बनेगा, ये आपके पास क्या है, अब ये क्या करता है, जैसे ही प्राइमेज आएगा, यहाँ पर प्राइमेज, यहाँ पर जी क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, प्राइमर ऐड हो गया है। तो प्राइमर में ये पोजीशन क्या है, ये 5 प्राइम है, ये आपके पास क्या है, 3 प्राइम है। तो अब ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर सकता है, 5 प्राइम में तो जो है वो नए सिरे से ऐड नहीं कर सकता। क्या नहीं ऐड कर सकता, न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी सपोज आपके पास क्या है, एक प्राइमर ऐड हुआ, उसकी भी ये 3 प्राइम है और ये आपके पास क्या है, 5 प्राइम है। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि ये जो
पोर्शन है स्पेसिफिक, इससे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करना है, एक प्राइमर से दूसरा प्राइमर हमने क्या करना है, इसमें डीएनए को सिंथेसाइज करवाना है इस टुकड़े को। तो ये किस डायरेक्शन में होगा डियर स्टूडेंट्स, ये इस डायरेक्शन में होगा। डीएनए तो इसने हमेशा याद रखे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करना है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपोजिट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरफ है, तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क के। अब यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट होना है तो दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड और वी कैन से डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये डियर स्टूडेंट्स इसके पास आएगा, कैसे आएगा वो मैं बना देता हूँ। सपोज ये भी आपके पास क्या है, प्राइमर है, तो ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब वो जो स्ट्रेट था वो कैसे हो चुका है, वो डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हो चुका है, कुछ इस तरह से हो चुका है। ये आपके पास क्या था, वही प्राइमर लगा हुआ है, उसमें ये 3 प्राइम है और ये आपके पास क्या है 5 प्राइम है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐड कर देगा इस डायरेक्शन। तो जैसे ही ये प्राइमर इस जगह पर पहुंचेगा, जैसे ये प्राइमर इस जगह पर पहुंचा है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, दोबारा से ये क्या कर देता है, रेप्लिकेशन को छोड़ देता है। अब ये क्या हो गई है, स्ट्रेट होगी। सपोज दोबारा फिर मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये क्या हो चुका है, स्ट्रेट हो चुका है। देखें कैसे, ये वो वाला प्राइमर था, इसमें ये जो आपके पास डीएनए लगा है ये ब्लैक से जो मैंने शो किया हुआ है, और ये जो है वो डियर स्टूडेंट्स जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई थी वो था। अब देखें ओवरऑल ये क्या है, ये आपके पास 5 प्राइम है और ये आपके पास 3 प्राइम, इसी तरह से ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब क्या होना है, एक नया फ्रैगमेंट अगर हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसने नया फ्रैगमेंट और ऐड करना है। तो वो किस तरह से ऐड करेगा, दोबारा से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्राइमर ऐड कर दिया जाएगा और इस प्राइमर में उसी तरह से ये ऐसे ये बल्क आएगा, ऐसे बल्क आके डियर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, इस तरह से नया स्ट्रैंड जो है वो ऐड कर देता है। अब आपके पास जो डीएनए बना है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि ये अब मैं पूरा बना रहा हूँ, डीएनए आपके पास कुछ इस तरह से बना है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, एक स्ट्रैंड जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास कंटिन्यूअस चल रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर ऊपर वाले की बात करें तो वो 3 प्राइम है और ये आपके पास 5 प्राइम है, इसी तरह से ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम, और जो इसके ऊपर डीएनए बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है फ्रैगमेंट्स की फॉर्म। डीएनए कुछ इस तरह से बनेगा, एक ये फ्रैगमेंट, फिर ये फ्रैगमेंट, फिर ये फ्रैगमेंट और फिर ये फ्रैगमेंट। अब ये फ्रैगमेंट कैसे ऐड हुआ है, 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐड हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल डीएनए ये 3 प्राइम और ये आपके पास क्या है 5 प्राइम। तो ये 2 स्ट्रैंड जो बने हैं, एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है। जो डिसकंटिन्यूअस है उसके ऊपर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में डीएनए जो है वो बना है, उन फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको डीएनए से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो है वो टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो इस बॉक्स में मैं लिख देता हूं। डियर स्टूडेंट्स टर्मिनेशन कैसे होगी कि जो पॉलीमरेज है इसके पास रिपीटेड सीक्वेंस आ जाएंगे। जैसे रिपीटेड सीक्वेंस आएंगे ये क्या करता है, डीएनए में मजीद न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना छोड़ देता है, इस तरह से टर्मिनेशन हो जाती है। बट टर्मिनेशन से पहले क्या होता है कि इन सीक्वेंसेस को दोबारा से जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको ठीक करना होता है। कैसे ठीक करना होता है, आप ये देखिए इसके अंदर ये आपके पास ये वाला पोर्शन किसका है, आरएनए का, डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए डीएनए, इस तरह से आरएनए। अब इस आरएनए को रिमूव करना होता है, तो इस आरएनए को रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, वो क्या करेगा, इन आरएनए के जो सीक्वेंस होंगे उनको ख़त्म करके क्या बना देगा, डीएनए का सीक्वेंस बना देगा। इस तरह से डीएस ये सीक्वेंस बना देगा।
आरएनए इसमें से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब ये क्या बन चुका है, डीएनए बन चुका है। बट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम रह जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये छोटा सा एक ब्रेक रह गई है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बन पाया, यहाँ पर भी नहीं बन पाया, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं। यानी कि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये नीचे वाले डीएनए के साथ तो जुड़े हुए हैं बट आपस में नहीं जुड़े हुए। इनमें क्या है, गैप है डियर स्टूडेंट्स, इनमें क्या है, गैप। इसको निक बोलते हैं। अब इस गैप को कौन भरता है, ये जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये क्या करता है, इट इज अनएबल टू मेक POC यानी कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फास्फोडाइएस्टर जो है वो नहीं बना पाता किसके दरमियान डियर स्टूडेंट्स, जब ये आरएनए को रिमूव करता है और उसकी जगह पर डीएनए का सीक्वेंस लगाता है प्राइमर को रिमूव करने के बाद, तो जो पहले वाला डीएनए होता है उसके दरमियान एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जो इसने नए ऐड किए उनके दरमियान ये फाइनल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना पाता। तो अब ये कौन करेगा, ये जो निक्स हैं इनको कौन रिमूव करेगा, या आप कह सकते हैं इन निक्स को कौन जोड़ेगा। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा। अब ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, लाइगेशन करता है। लाइगेशन प्रोसेस करेगा तो ये सारी की सारी निक्स जो है इनको रिमूव कर दिया जाएगा, ये जितनी भी निक्स होंगी, और इससे क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए लाइगेशन। ये आपके पास प्रोसेस क्या कहलाता है, डीएनए लाइगेशन का प्रोसेस कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल ये जो प्रोसेस था इसके अंदर हमने डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन पढ़ी है कि हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह। Answer B, Nile River. In which country is the Mount Everest located? Answer B, Nepal. Which is the largest ocean in the world? Answer A, Root. Like the video, if you answer first 3 correct, what is the capital city of the France? Dear students, today I'm going to teach you how DNA encodes protein structure. कि जो DNA है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने प्रोटीन बनवानी है और प्रोटीन का ये सीक्वेंस होगा और प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर होगा। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब भी हम प्रोटीन का नाम लेते हैं या प्रोटीन की सीक्वेंसिंग का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जिस बंदे का नाम आता है वो है आपके पास फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने 1953 के अंदर आपके पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है इंसुलिन, जो आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि ये पैंक्रियास से सिक्रीट होती है और इसका काम क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को लो करना। तो डियर स्टूडेंट्स इससे कोई भी बंदा आज ना वाकिफ नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर भी ये प्रेजेंट है डिफरेंट टैबलेट्स की फॉर्म में या फिर बॉटल्स की फॉर्म में, जिसके अंदर आप जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाती है, जो ऐसे पेशेंट को लगाई जाती है जिसको डायबिटीज हो। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम 1953 में फ्रेडरिक सेंगर ने इसको क्या किया, इसका सीक्वेंस मालूम किया। ये कहते हैं कि इसके पास एक अल्फा चेन है और एक आपके पास बीटा चेन है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो आते हैं 51। तो बेसिकली जो फ्रेडरिक सेंगर का काम था वो इन 51 अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में लिखना था, मालूम करना था कि ये अमाइनो एसिड किस तरह से जुड़े हुए हैं और इनका सीक्वेंस क्या है इस प्रोटीन के अंदर, ताकि फ्यूचर में ये काम दे सके। इसको आप कह सकते हैं कि सिंथेसाइज करवाने में हेल्प मिले, जैसा कि आज हम बैक्टीरिया से जो है इसको सिंथेसाइज करवा रहे हैं इसकी सिंथेसिस के लिए बेसिकली, ताकि ह्यूमैनिटी के लिए ये जो है काम करें। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, हीमोग्लोबिन के ऊपर भी काम किया। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं एंड
इसके अमाइनो एसिड जो होते हैं वो टोटल आपके पास 574। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, वर्नर इंग्रम ने 1956 के अंदर जो काम किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने क्या काम किया, इसने बेसिकली सिकल सेल एनीमिया की वजूहात क्या हैं, सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, उसकी जो बेसिक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स थी पीछे, उनको डिटेक्ट किया और वही कैन से मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके, डीएनए के लेवल पे जाके प्रोटीन एंड एज वेल एज मैसेंजर आरएनए तक पहुंचकर उसने सिकल सेल एनीमिया डिजीज के बारे में स्टडी की। सबसे पहले हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखते हैं। सिकल सेल का मतलब होता है लाइक सेल ऐसे बन गया है जैसे पहली रात का जो चांद होता है डियर स्टूडेंट्स, वो एंड उसके साथ साथ आपके पास द्रांति की जो एग्जांपल है, और वी कैन से ऐसे नोकीला, दोनों साइडों से नोकीला और सेंटर से थोड़ा सा मोटा, इस तरह से शेप हो जाती है आरबीसीज की। और एनीमिया का मतलब है आपको ब्लड डेफिशिएंसी, क्योंकि जब आपके सेल जो हैं उनकी शेप ऐसे हो जाएगी, दे अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन, इनके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तब ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। और ब्लड का हमारे जिस्म में मेन काम ही होता है कि उन्होंने क्या करना है, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है ताकि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज हो सके, सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं वहां तक ऑक्सीजन पहुंच सके, जिससे क्या हो, अल्टीमेटली रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो और हमें एटीपी मिले डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो। तो जब ये सिकल सेल, इसके अंदर क्या होगा, ये काम सेल करेगा ही नहीं, तो उससे क्या हो जाती है, बंदे की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो अब वर्नर इंग्रम जो था, इसने क्या किया, इसने हीमोग्लोबिन के ऊपर ही काम किया, क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज के अंदर मेनली आपको पता है कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज एचबी, हीमोग्लोबिन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसमें इसने क्या किया, इसने स्टडी किया कि जो इसकी 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 इसकी बीटा चेन है, जैसे कि आपको फ्रेडरिक सेंगर ने बोला था, इसकी इन दोनों में से जो एक बीटा चेन है उसमें एक स्पेसिफिक जगह पर, सिर्फ एक जगह पर क्या है, अमाइनो एसिड चेंज है। जो आपके पास अमाइनो एसिड है वो क्या है, चेंज है। जब उसने पहले वाली बीटा के साथ उसको कंपेयर किया या नॉर्मल बंदे की बीटा चेन के साथ कंपेयर किया, उसने कहा बाकी सारी तो ठीक है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड के अंदर डिफरेंस आया है। और वो अमाइनो एसिड के अंदर डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये नॉर्मल बीटा चेन का थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एज वेल एज ग्लूटामिक एसिड, ये नॉर्मल बंदे की जो है बीटा चेन उसका सीक्वेंस है। अब जिस बंदे को सिकल सेल एनीमिया था, जब उसने इसकी बीटा चेन को देखा तो उसमें था वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन एंड वेलिन। परेशानी आ गई कि इस बंदे में सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो गई है। तो एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है शेप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की शेप को डिटरमाइन करता है। अब जब तक, ये बात लाजमी याद रख लें, जब तक एक प्रोटीन अपनी प्रॉपर कन्फर्मेशन के अंदर या प्रॉपर शेप के अंदर नहीं आती, तब तक डियर स्टूडेंट्स वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं हो सकती। ये बात लिख लें किसी जगह पर। अब जब तक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ही नहीं ठीक होगा, तब क्या होगा, प्रोटीन अपनी प्रॉपर शेप नहीं बना पाएगी, प्रॉपर जो है उसकी कन्फर्मेशन नहीं हो जाएगी, लाइक वो अपना टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसको कंप्लीटली जो है उसको अटेन नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है, प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाती है, प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ये स्टूडेंट्स मेन क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटीन का सीक्वेंस डिटरमाइन कौन करता है, हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करेगा। तो उसके लिए आपको डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ना पड़ेगा, सेंट्रल डॉगमा के बारे में पता होना चाहिए। आप ऐसे ही समझ लें कि सेंट्रल डॉगमा आज से स्टार्ट हो गया है, आज इसका इंट्रोडक्शन है, कल इसका पहला लेक्चर होगा ट्रांसक्रिप्शन पे। तो देखें ये आपके पास क्या है, बेसिकली डीएनए है, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डीएनए के अंदर इंसान की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर है।
अब इस इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है। हम कहते हैं डीएनए इज अ कोड ऑफ लाइफ। इस कोड को डिकोड करना है हमने। अब इसको डिकोड करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा, आप कह सकते हैं, बंदा चाहिए या ऐसी चीज चाहिए जो इसको क्या कर सके, डिकोड कर सके। तो किसी भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप किसी एक डच बंदे के साथ हैं, आपको डच जो लैंग्वेज है वो नहीं आती, जर्मन की जो लैंग्वेज है, तो आपको एक तर्जमान की जरूरत होगी जो उसकी आवाज को सुनेगा, उसको डिकोड करके उर्दू में आपको बताएगा। तो सेम यही बात है, ये डीएनए जो है बेसिकली आपके पास क्या है, कोड है। इसको डिकोड किया जाता है। द सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है, डिकोडिंग कर रहा है फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये चीज क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब देखें इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि एक मैसेंजर आरएनए बन रहा है जो बेसिकली क्या कर रहा है, इस कोड को डिकोड कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इस मैसेंजर आरएनए से एक पॉलीपेप्टाइड का बनना, या वी कैन से प्रोटीन का बनना, ये चीज क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। उसी को दोबारा से क्या कर लिया जाता है, ट्रांसलेट कर लिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोटीन बनवाई जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा एंड एज वेल एज जीन एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर आप मुझे बताएं कि जो सीक्वेंस डीएनए का होगा वही सीक्वेंस डियर स्टूडेंट्स आपके पास कंप्लीमेंट्री किसका होगा, मैसेंजर आरएनए का होगा, और उसी सीक्वेंस के अगेंस्ट क्या बनाई जाती हैं, प्रोटीन बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखें एक जीन खुद को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो जीन का प्रोटीन बनाना ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन कहलाता है। तो अगर आपके पास इस डीएनए के अंदर किसी जगह पर म्यूटेशन है तो उससे डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो बेसिस हैं बेसिकली ए, टी, जी, सी, इन बेसिस के अंदर किसी जगह पर चेंजेस आ गई हैं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए के अंदर चेंज आएगा। मैसेंजर आरएनए के अंदर चेंज आएगा तो प्रोटीन के अंदर चेंज आएगा। अगर प्रोटीन के अंदर चेंज आएगा तो प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो अब हम दूसरे लफ्जों में जीन की डेफिनेशन करते हैं। जीन आपके पास क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है विच डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या हुआ, यहाँ पर देखें, जो कि वर्नर इंग्रम ने अल्टीमेटली डिस्कवर किया। वर्नर इंग्रम क्या कहते हैं कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से पूरे की पूरी जो प्रोटीन है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो आल्टर हो जाता है। अब जब मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखा गया, डीएनए लेवल पर देखा गया, तो क्या हुआ, ये दो सीक्वेंस आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर सिर्फ एडेनिन और थायामीन आपस में क्या कर गई थी, रिप्लेस कर गई थी। जब इन्होंने रिप्लेस किया तो जहां पर पहले वाला कोड जो था वो ग्लूटामिक एसिड के लिए कर रहा था, अब वो किसके लिए करेगा, वेलिन के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है इस केस में कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आ जाती है, जिससे क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस था वो चेंज हुआ। सीक्वेंस चेंज हुआ तो मैसेंजर आरएनए के अंदर सीक्वेंस चेंज हुआ। उसने कोड किया कि यहाँ पर आपने, इसने कोड किया कि यहाँ पर आपने ग्लूटामिक एसिड की इंफॉर्मेशन नहीं देनी बल्कि वेलिन की देनी है। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड ऐड किया अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए, इसने उसके अंदर वेलिन ऐड कर दी। तो जैसी वेलिन ऐड की तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये ना रहा, ये उसने सेल का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास इस तरह से कर दिया, एक प्रोटीन को नॉन फंक्शनल कर दिया। तो बेसिकली ये किसने आपके पास ये प्रोसेस सारे का सारा आपको बताया, वर्नर इंग्रम ने। तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, जब भी डीएनए के अंदर चेंज आएगा उस चेंज को हम क्या नाम देते हैं, म्यूटेशन का नाम देते हैं।
और इस केस में जो म्यूटेशन थी वो क्या थी डियर स्टूडेंट्स, सिंगल पॉइंट पर थी, बिल्कुल एक पॉइंट पर म्यूटेशन थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास इतनी बड़ी डिजीज जो है वो सामने आई। और ये जो प्रोसेस है सेंट्रल डॉगमा, इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूं। इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसके लिए मुख्तलिफ तरह के RNAs काम कर रहे होते हैं, और उन RNAs में जो आपके पास है बेसिकली वो कौन लिया है, बेसिकली काम ही इसका होता है क्योंकि इसने डिकोड करना होता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसफर RNA है, और उसके साथ साथ राइबोसोमल RNA है, rRNA हम बोलते हैं इसको। जो ट्रांसफर RNA है ये हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 45 टाइप्स की जो है वो प्रेजेंट है, जिन्होंने क्या करना होता है, अमाइनो एसिड को कैरी करना होता है। इंशाल्लाह ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। A coronary artery bypass. Healthy artery or vein from another part of the body is connected or wrapped around the body. Bypass the body. One or more coronary arteries may is performed to improve circulation of the heart muscle. जो सेकंड ईयर की बुक है ऑलमोस्ट मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, उसमें से हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 26। ये मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है कि उसमें आपको चीजें दिखा के विजुअलाइज करके जो है वो समझानी है। तो मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से वो चैप्टर भी समझा सकूं। और पूरी सेकंड ईयर की बुक पढ़ाने में मुझे जो आप लोगों का फीडबैक मिला, मैं उससे बेहद खुश हूं। मेरे चैनल ने ऑलमोस्ट जितने भी यूट्यूब पे बायोलॉजी के चैनल हैं उन सब से ज्यादा जो है वो सब्सक्राइबर्स लिए हैं, व्यूज बहुत ज्यादा आए हैं, लाइक्स की थोड़ी सी कमी थी, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। जब आप लोग देख रहे होते हैं तो आप काइंडली जो है ना वो लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें। इससे बेनिफिट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, इस लाइक करने से क्या होता है कि आपकी जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वायरल होने के चांसेस होते हैं। अब वायरल होने का फायदा क्या है, क्योंकि मैंने एजुकेशन की कैटेगरी जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट सर्च करेंगे मे बी आप लोगों के लाइक करने की वजह से किसी का फायदा हो जाए। क्योंकि जब बंदा सर्च करता है ना तो यूट्यूब जो मोस्टली लाइक्ड होती हैं या व्यूड होती हैं या जो चैनल जो ग्रूम कर रहा होता है उसी की वीडियोस जो है वो बच्चों के सामने जो है वो डालती है। इससे अगर आप लोगों को फायदा हो रहा था सेकंड ईयर वालों, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर वालों को भी हेल्प करनी है। आपने क्या करना है कि यही जो लेक्चर्स होंगे मेरे, ये अपने जो स्टूडेंट्स होंगे आपसे जूनियर, आपने मेरे चैनल के बारे में उनको भी बताना है। क्योंकि अभी मैंने क्या शुरू कर दिया है, मैंने सेकंड ईयर की बजाय फर्स्ट ईयर को स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह के विद इन 2 मंथ मैं अपना फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि सेकंड ईयर का सिलेबस जो होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, उसमें टिपिकल बातें हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, और फर्स्ट ईयर का उसकी निस्बत से जो है वो कदरे ईजी होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे पहले मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 11, इसके तीनों के जो लेक्चर्स हैं वो आपको E&D इकट्ठे के अंदर, सो इट्स मीन कि अगर आप ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो है 1 ईयर भी ले सकता है, 2 ईयर्स भी ले सकता है, 3 ईयर्स भी ले सकता है। लेकिन अगर आप इसको एंजाइम की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये रिएक्शन फ्यू सेकंड्स के अंदर जो है वो हो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हमने नाइट्रोजन को तोड़ना हो, जो गैस है नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि N2 को तोड़ना हो, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके ये जो है वो टूटेगा। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें H2O, इसको अगर तोड़ना हो तो इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ती है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। अदरवाइज अगर हम इसको वैसे इंडिपेंडेंटली कहेंगे ये टूट जाए, N2 जो है वो NN में अलग हो जाए, या वाटर जो है वो आपके पास H2 और O में जो है वो अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको आर्टिफिशियल मेथड के जरिए कराएंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन यही काम एंजाइम्स कर रहे होते हैं।
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखें कि फोटोलाइसिस होती है जिसमें वाटर टूट जाता है और इतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या कौन कर रहे होते हैं, ये काम किस तरह से हो रहा होता है, ये बेसिकली एंजाइम्स ही कर रहे होते हैं। सो इट्स मीन रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। वाटर को तोड़ने के लिए मे बी घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग करनी है, ऑक्सीजन गैस अलग करनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जो फोटोलाइसिस करवाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको फ्यू सेकंड्स के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं। इवन दैट आप कह सकते हैं फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, बहुत थोड़े से टाइम में इसको तोड़ देते हैं। सो नेट इफेक्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट जो है उसको एंजाइम डिस्टर्ब नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है, इसको एंजाइम ने क्या करना है, तोड़ना है। फॉर एग्जांपल तो इसको एंजाइम, ये एंजाइम है, इसने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। तो जो नेचर होगी प्रोडक्ट की उस पर कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा एंजाइम्स का, ये बात याद रखनी है आपने। ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये उसके साथ लगते हैं वैसे ही उसी शेप में ये बाहर निकल आते हैं। इट्स मीन कि इनका काम क्या है, सबस्ट्रेट को अटैच करना, अटैच करने के बाद उसमें कैटालाइसिस करवाना, कैटालाइसिस करवाने के बाद उसको प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील कर देना। सो इट्स मीन ये इफेक्ट नहीं करते उनकी प्रॉपर्टीज पे। उसके बाद हमने बात करनी है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेट अ ह्यूज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर एंजाइम मौजूद होंगे तो वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। ये बात मैंने इससे अगला पॉइंट लिखा है, स्पेसिफिक इन नेचर हैं। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, कि मैंने बोला कि थोड़ी सी अमाउंट भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को जो है वो स्टार्ट करवा सकती है, कंप्लीट करवा सकती है। लेकिन हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक एंजाइम है लाइपेज, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स को तोड़ना, लिपिड्स ब्रेक डाउन। इसके अलावा ये किसी और की ब्रेक डाउन नहीं करेगा। इसी तरह से आपके पास है एमाइलेज, इसका काम क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, सो ये कार्ब्स को तोड़ेगा, ये अब लिपिड्स को नहीं तोड़ेगा। इसी तरह से आपके पास प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसको तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, एंड सो ऑन। सो इट्स मीन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, खास किस्म के सबस्ट्रेट को पकड़ेंगे और उसी को क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देते हैं। फिर हमने फर्दर देखना है सेंसिटिव, बिल्कुल प्रोटीन है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑलरेडी बताया आपको। जब प्रोटीन होंगी तो सेंसिटिव तो होंगी, जैसे ये हमारे बाल हैं डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं। हमारी स्किन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन, उसमें 60% क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो बहुत सेंसिटिव होती है। प्रोटीन जो है वो किस किस चीज के से सेंसिटिव है, उसमें आपके पास एक आ जाती है पीएच, और उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। अभी मैं फिलहाल इन्हीं 2 फैक्टर्स की बात करूंगा कि ये सेंसिटिव है टुवर्ड्स द पीएच एंड एज वेल एज टेम्परेचर। एक थर्ड है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उस पर भी डिपेंड कर होती है, उसके लिए भी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अपना काम करते हैं ये खास पीएच के अंदर। ये हम 6 फैक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, और उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अगर पीएच ज्यादा होगी या कम होगी, एंजाइम अपना काम नहीं करेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, प्रॉपर वे में एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन है। हल्का सा भी अगर हम इन बालों को हीट करते हैं ना, थोड़ा सा भी ओवर हीट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाल जल जाते हैं। उसके बाद ये जो पूरे का पूरा एंजाइम है जो कि ग्लोबुलर होता है, इसको एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट की जरूरत होती है, जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। वो आपके पास क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। सो इट्स मीन कि कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन इन नेचर होता है। तो ये क्यों जरूरी होता है, बहुत सारे एंजाइम तो वैसे ही सिमिलरली उनको नहीं जरूरत होती, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनको कोफैक्टर की जरूरत होती है। अब कोफैक्टर जो है बेसिकली ये एंजाइम के एक्शन को रेगुलेट करने के लिए लगाए गए हैं। नेचर ने इनको लगाया है ताकि जब तक कोफैक्टर नहीं आए एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। सो इट्स मीन जैसे ही कोफैक्टर मिलेंगे देन एंजाइम अपना प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये इसीलिए रखा गया हमारी बॉडी के अंदर कि हम रेगुलेट कर सकते हैं, या हमारी सेल के अंदर हर टाइम ये नहीं है कि एंजाइम प्रॉपर अपना काम करते रहें। सम टाइम ब्लॉकेज भी करनी पड़ सकती है, उस रिएक्शन को रोकना भी पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर एक कैंसरियस सेल आ गया है, अब उसकी डिवीजन तो एंजाइम ही करवा रहे हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि छोटी सी ट्यूमर बनती है और फिर उसके बाद वो क्या अपना साइज जो है वो बढ़ा नहीं सकती। अब उसके रिजल्ट में क्या होता है कि सेल उस पर ओवरकम कर जाता है। ओवरकम करने के बाद वो जो ट्यूमर थी उसका साइज वहीं पे रुक जाता है। अब ये इस बात को किसने कंट्रोल किया, इस बात को सेल्स के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसने किया, और उसने वो खास किस्म के कोफैक्टर या वो एंजाइम ही नहीं रिलीज होने दिए जो फर्दर एबनॉर्मल सेल डिवीजन करवा रहे थे। सो इट्स मीन के कोफैक्टर इसीलिए काम करते हैं कि रेगुलेट करवा सके। फिर लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी,
जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक रिएक्शन है, इसको करने के लिए वैसे अगर विदाउट हम एंजाइम करें तो ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे तो फ्यू सेकंड लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। एक रिएक्शन है, उसको चलाने के लिए मिसाल के तौर पर अगर आप उसको नॉर्मली चलाते हैं तो हमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता है, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है। सो इट्स मीन इतना नीचे आ जाना। ऐसा क्यों है? एंजाइम क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन आसानी से जो है वो हो जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ये है कि पहले जमाने में जो बाइक्स थी उनको किक लगानी पड़ती थी, अब उसके लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल के जमाने में पुश बटन आ गया, सेल्फ स्टार्ट आ गए। ऐसा क्यों है? अब बेसिकली उन्होंने क्या किया है, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दिया। सिंपल एक बैटरी के स्पार्क से क्या हो जाता है, बाइक स्टार्ट हो जाती। पहले जो इतना जोर लगाना पड़ता था वो नहीं लगा रहा आजकल इंसान। तो सेम इसी तरह से, वो तो मशीनरी की बात है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसी तरह से ही लो करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की। ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसा काम हो रहा होता है। फिर फर्दर हमारे पास एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन इट्स एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म। या तो एक्टिव फॉर्म में भी सिक्रेट किए जाते हैं या डियर स्टूडेंट्स इनएक्टिव फॉर्म में भी सेल के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं। सो इट्स मीन इनएक्टिव फॉर्म में कैसे? अगर हम बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तो उसमें एक एंजाइम है पेप्सिनोजिन, इसको सिक्रेट किया जाता है। तो जैसे ही प्रोटीन स्टमक के अंदर आती है तो ये तब्दील हो जाता है पेप्सिन के अंदर। अब प्रोटीन जैसे जैसे आती है तो यहाँ पर एक और, यहाँ पे समझ लें आपके पास कोफैक्टर समझ लें, कोई ऐसा एक्टिवेटर समझ लें, या आप कहते हैं कि एंजाइम सेंसिटिव हैं पीएच के, तो काम अपना प्रॉपर स्पेसिफिक पीएच पे करेंगे तो हमारे मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही HCl होता है तो स्टमक की पीएच जो होती है वो कितनी हो जाती है, 2 से 3 हो जाती है। और पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था अब एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, पेप्सिन के अंदर आ चुका है। अब इसने क्या करना शुरू कर देना है, प्रोटीन की डाइजेशन करवाना शुरू कर देनी है, जिससे क्या होगा कि एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन तेज कर देते हैं और इसी तरह से डाइजेशन जो है वो जल्दी हो जाती है। उसके बाद हमने बात करनी है इसकी लोकेशन की, एंजाइम कहाँ पाए गए हैं। पहली बात तो है ग्लोबुलर हैं, इनसाइड द सेल होंगे। सो इट्स मीन कि साइटोप्लाज्म में भी होते हैं जी, फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सम टाइम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर है। सम टाइम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। बहुत सारी फंजाई जो हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को सेल से बाहर निकालती है। मिसाल के तौर पर ऑरेंज है, उसके ऊपर क्या आ गई है, फंगस आ गई है, फंजाई आ गई है। उसने क्या किया है, अपने सेल्स में से एंजाइम बाहर निकाले हैं जिन्होंने उस ऑरेंज की डाइजेशन स्टार्ट कर दी है, उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर दी है। तो डीकम्पोजिशन में एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर वाली साइड पे, सेलुलर का मतलब है सेल से। एंजाइम्स ऑलरेडी आप जानते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि सेल से बाहर सिक्रीट किए जाते हैं। उसके बाद हमने लास्ट पे बात करनी है कि ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके साथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, अटैच्ड हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये उसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक खास किस्म का एंजाइम, बहुत सारे वैसे तो होते हैं, मैं सिर्फ एक को कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। एक खास किस्म का एंजाइम जो है वो मौजूद है जिसको आपने F1 पार्टिकल का नाम दिया था। ये एंजाइम होता है बेसिकली ATP सिंथेज। इसका मतलब क्या है कि ये ATP को बनाने में हेल्प करता है। तो ये भी एक एंजाइम है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग नहीं होते। तो इस वजह से ये आपके पास क्या है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, फ्रीली फ्लोटिंग नहीं है, सेल के बाहर भी नहीं है, किसी खास ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है। सो ये उनकी लोकेशन होगी। तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि वेयर द एंजाइम्स आर प्रेजेंट, तो ये आप तीनों पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। फिर आप पेप्सिनोजिन और पेप्सिन का क्वेश्चन आ जाता है समटाइम, इसकी पीएच के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। फिर ये स्टूडेंट्स अगर सेंसिटिविटी के बारे में पूछा जाए, स्पेसिफिसिटी के बारे में पूछा जाए तो आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं, लाइपेज, एमाइलेज एंड प्रोटीएजेस। उसके बाद हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक बात याद रखें, एंजाइम पूरे का पूरा एंजाइम जो है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एंजाइम है, उसकी मैं एक खास पिक्चर बनाने लगा हूँ। ये जो हमारे पास एक एंजाइम है, ये ग्लोबुलर इन नेचर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोबुलर है। पूरे का पूरा एंजाइम, E फॉर एंजाइम,
पूरे का पूरा एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होता। इस एंजाइम में एक छोटी सी जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो जगह है ना, ये वाली सिर्फ, ये क्या है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी ने ही केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, रेस्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करवाता। तो ये जो कैटालाइसिस का अमल है, ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट जो है वो हिस्सा ले रही होती है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ऊपर मैंने बनाया है, ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है, ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट। ये पूरे का पूरा एक माल्टोज का मॉलिक्यूल है, माल्टोज का, माल्टोज। ये क्या है, डाइसैकेराइड है, इसको हम तोड़ने जा रहे हैं, इसका कैटालाइसिस करने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझाना है। तो ये किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं। अगर देखें आप इसको ध्यान से, तो ये जो जगह है ये इसके साथ रिजेंबल कर रही है, ये जगह इसके साथ रिजेंबल कर रही है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक खास किस्म की जगह बना लेते हैं जहां पर सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। बाइंड का मतलब भी क्या होता है, जोड़ने वाला। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। हमारी बुक होती है, अगर वो फट जाए तो हम उसको किसके पास भेजते हैं, बाइंडर के पास भेजते हैं, उसकी बाइंडिंग करके हमें दे देता है, उसको जोड़ के हमें दे देता है। अब देखें तो यहाँ पर बाइंडिंग साइट का काम क्या है डियर स्टूडेंट, सबस्ट्रेट को जोड़ने में मदद देना। और यहाँ पर ये जो है, ये वाली, ये आपके पास क्या कहलाती है, कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट, इट्स मीन कि इसने क्या करवाना है, कैटालाइसिस करवाना है। इसी ने ही आगे फर्दर सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करना है और कैटालाइसिस करवा के रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो इसके बाद क्या होगा कि ये सबस्ट्रेट ने अब इसके ऊपर आके लगना है। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा फिर बना देता हूँ, यहाँ पे ये आपके पास एंजाइम था, और अब इस पर आके कौन लगेगा, ये वाला मॉलिक्यूल लगेगा। ये मॉलिक्यूल देखिए इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा, ये जिसमें फिट बैठ गया है ये ऑक्सीजन। उसी तरह से यहाँ पर देखें आप, ये अब इसमें देखेंगे ये क्या है, एक माल्टोज का मॉलिक्यूल है। अब ये क्या बन चुका है, ये ऊपर सबस्ट्रेट है, नीचे एंजाइम है, तो ये बन चुका है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इट्स मीन कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि अब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। अगले ही स्टेप में क्या होता है कि ये जो जगह है इसने कैटालाइसिस करवा देनी, इसमें इसने वाटर ऐड करवाना है और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। ये आपके पास क्या बन चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बन चुके हैं। एक ये वाला अलग हो गया, प्लस ये आपके पास क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। सो इट्स मीन कि माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई, तो दोनों ग्लूकोज अब क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। अब जो एंजाइम है वो एज सच जैसे पहले था वैसे का वैसा ही आपके पास जो है वो बाहर निकल गया। एंजाइम में किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर देखें कि ये जो आपके पास बाइंडिंग साइट थी, ये बिल्कुल किसकी तरह थी, सबस्ट्रेट की शेप की तरह थी। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग सा जो है वो लेक्चर बनाऊंगा, लॉक एंड की मॉडल। जिस तरह से एक खास किस्म के ताले को एक स्पेसिफिक चाबी खोलती है, उसमें लगती है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स याद रखें एक एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, उसमें खास किस्म के क्या लगते हैं, सबस्ट्रेट आके लगते हैं, दूसरा सबस्ट्रेट उसमें फिट नहीं बैठ सकता। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। इस तरह से एंजाइम जो है वो अपना पूरा मैकेनिज्म जो है वो करता है। अब ये जो है रेड से ये आपके पास क्या बन चुके हैं, प्रोडक्ट। इस तरह से सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फर्दर उसको आगे किस में तोड़ देगा, प्रोडक्ट्स के अंदर। अब देखें इसने प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। जिस तरह से ग्लूकोज जुड़ी थी, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो उसके करैक्टर थे, इसी तरह से यहाँ पे टूटने के बाद, माल्टोज से ग्लूकोज सेपरेट होने के बाद डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली उसका वही मेल्टिंग पॉइंट होगा, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इट्स मीन कि यहाँ पर उसने उसकी किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को या फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया, किसी तरह से भी उसने सबस्ट्रेट के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं की। उसके बाद हमने देखना है कि सम टाइम एंजाइम जो होते हैं वो एक पाथवे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है ए, उसने प्रोडक्ट बी में जाना है।
फिर बी सबस्ट्रेट बन जाएगा, उसने प्रोडक्ट सी में जाना, और सी जो है इसी तरह से डी, और डी जो है इसी तरह से ई। आप मिसाल के तौर पर देखें, जो ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है वो एंजाइम है आपके पास E1। अब यहाँ पे ये E1 का क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स E2 का ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ध्यान से सुनिएगा। अब E2 इसको पकड़ेगा और इसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। इसी तरह से आपके पास है E3, इसके लिए ये सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्या है, E4। ये क्या बना रहे हैं, एक पाथवे बना रहे हैं। हर एंजाइम पिछले वाले एंजाइम से उसके प्रोडक्ट लेता है, अब उसके वो क्या बन चुके हैं, जो अब नेक्स्ट एंजाइम है उसके वो सबस्ट्रेट बन चुके हैं। सबस्ट्रेट को पकड़ता है और उनको प्रोडक्ट में डाल देता है। फिर नेक्स्ट एंजाइम के वो क्या होंगे, सबस्ट्रेट होंगे, और फर्दर उसके लिए वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो बना के आगे भेज देगा। तो इट्स मीन एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट्स को अपने सबस्ट्रेट बना के अपने प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है। तो ये क्या बनवा देता है, पाथवे बनवा देता है पूरे का पूरा। समटाइम क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एंड प्रोडक्ट है जी, इन सारे एंजाइम का एंड प्रोडक्ट है ई। जब ये ई बन जाएगा तो ये ई क्या करता है, ये ई खुद इधर आके एंजाइम फर्स्ट पर आके लग जाता है। इसको क्या करता है, अपना एक्शन ही नहीं करने देता। देखें, जब ए बी में नहीं तब्दील होगा तो बी सी में कैसे तब्दील होगा, सी डी में। इसका मतलब क्या है कि ई बजाते खुद, यानी कि प्रोडक्ट बजाते खुद क्या करता है, ए और बी के एक्शन को कंट्रोल कर देता है, इनहिबिट कर देता है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। ऐसा कब होता है, जब ई की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को रोक देगा। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, यहाँ पर उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। थायरॉक्सिन जब बन जाता है ना तो वो बजाते खुद जाके किधर, हाइपोथैलेमस के पास चला जाता है। वहां पे जाके वो एंजाइम जिसने खास किस्म के थायरॉक्सिन बनवाने के सिग्नल्स जो हैं उनको क्या कर देता है, वहां पर रोक देता है। कहता है भाई अब आपने नहीं बनाना, मेरी तो पहले ही कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज्यादा है। सो इट्स मीन प्रोडक्ट कंट्रोल्स इटसेल्फ इट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्ट खुद क्या कर रहा है, अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। अब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम बात करते हैं, दोबारा से एक टाइम आया तो यहाँ पर ई की जो वैल्यू है वो दोबारा से कम होना शुरू होगी। तो अब ये क्या करता है, फीडबैक इनहिबिशन नहीं करता, बल्कि क्या करवाता है, प्रिकर्सर एक्टिवेशन। ये इसके प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर क्या होता है, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे वर्ड लिखने लगा हूँ, अपना नाम ही लिखने लगा हूँ, AAMIR। ये जो आमिर पूरा लिखा गया है ना, ये इसके प्रिकर्सर्स क्या है, अल्फाबेट्स लाइक ए है, स्मॉल ए है, एम है, आई है, आर है, ये सारे मिले हैं तो ये वर्ड आमिर बना है। सो इट्स मीन ये ई के बनने के लिए ये सारे उसके क्या है, प्रिकर्सर है। तो प्रिकर्सर खुद जाके एक्टिवेट करता है कि भाई E4 को कि अब छोड़ दो। अब क्या है कि जिस्म में ई जो है आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है उसका लेवल कम हो चुका है, अब इसको बनने दो। तो फिर वो यहाँ से निकल जाता है, दोबारा से फिर जो है वो ए बी में कन्वर्ट हो जाता है, बी फिर सी में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डी में, डी सो ऑन ई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट ई में जो है वो तब्दील हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिकर्सर एक्टिवेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is lock and key model and as well as induced fit model. ये दोनों मॉडल्स जो हैं दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो प्रपोज किए थे, और इन दोनों के मुताबिक हमने जिस चीज को डिस्कस करना है वो है एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में अटैचमेंट। और अटैचमेंट डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी कि किस जगह पर होती है, एक्टिव साइट के ऊपर होती है। तो ये सारा जो लेक्चर है ये एक्टिव साइट के गिर्द ही घूमेगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले मॉडल को, लॉक एंड की मॉडल को। एमएल फिशर ने इसको प्रपोज किया और इसके मुताबिक जो है वो एक्टिव साइट जो है डियर स्टूडेंट्स वो एक रिजिड साइट है। एक्टिव साइट क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इट्स मीन देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट। अब देखें कि एक्टिव साइट ऐसी जगह है जहां पर क्या होना है, कैटालाइसिस होना है। इट्स मीन कि जो रिएक्शन है वो इसी के लिए
क्वेश्चन आप लोग देंगे वहाँ पे
Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is lock and key model and as well as induced fit model. ये दोनों मॉडल्स जो हैं दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो प्रपोज किए थे, और इन दोनों के मुताबिक हमने जिस चीज को डिस्कस करना है वो है एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में अटैचमेंट। और अटैचमेंट डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी कि किस जगह पर होती है, एक्टिव साइट के ऊपर होती है। तो ये सारा जो लेक्चर है ये एक्टिव साइट के गिर्द ही घूमेगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले मॉडल को, लॉक एंड की मॉडल को। एमएल फिशर ने इसको प्रपोज किया और इसके मुताबिक जो है वो एक्टिव साइट जो है डियर स्टूडेंट्स वो एक रिजिड साइट है। एक्टिव साइट क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इट्स मीन कि देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट। अब देखें कि एक्टिव साइट ऐसी जगह है जहां पर क्या होना है, कैटालाइसिस होना है। इट्स मीन कि जो रिएक्शन है वो इसी बोर्ड का पेपर आप किस तरह से अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें, या जो टॉपर्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स लेते हैं इसमें क्या करना चाहिए। इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम सारा साल पढ़ते हैं, मोस्ट को 10 to 11 मंथ्स अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम अकेडमी भी जाते हैं, स्कूल भी करते हैं, रेगुलर जाते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, टेस्ट वगैरह भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। आज के हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सके कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं या कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो उनको यूज करनी चाहिए जिससे वो अपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो आप पेपर जो अटेम्प्ट करते हैं वो आपने ड्रॉ बहुत अच्छे तरीके से करना है, कितने अच्छे से आपने ड्रॉ किया। क्योंकि जब जो एग्जामिनेशन रूम में जब आप जाते हैं, जब आप एग्जाम देके आ जाते हैं, उसके बाद आपका जब पेपर चेक होता है तो आप वहाँ नहीं होते, आपकी जब नहीं होती, आपकी मेहनत वहाँ नहीं होती, आपने कितनी सिंसियरिटी से आपने सिलेबस कवर किया और प्रिपरेशन की, वो वहाँ नहीं होती। तो उसका आपने प्रूफ देना है। जितना अच्छा आप प्रूफ देंगे वो आपके पेपर से आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से उसको पढ़ा। तो वो सारा आपके पेपर के अटेम्प्टेशन की बेस पे उस पर डिपेंड करता है, वहीं से ही पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक लेआउट बनाएं। आप पेपर पूरे पेपर को पहले उसको रीड आउट करें, तो उसके बाद उसका स्केच बनाएं। और हम अगर बात करें FAFSC की बात करें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास MCQs। You have to attempt 70 MCQs. Next question number 2 हमारे पास short questions का होता है question 3 and question number 4। तीन short question करते हैं। question number 2 and 3 से आपने 8 question attempt करने होते हैं and 4 से आपने 6 question। Similarly, next proportion है आपके पास question number 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके पास long question के होते हैं, 5 long questions होते हैं, you have to attempt 3 long questions। तो इसके लिए सबसे पहले आपने सिमेट्री बनानी है। अगर आप long question attempt कर रहे हैं तो आपने आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस हैं, long questions हैं, उनको सीक्वेंस से अटेम्प्ट करें। 5, 6, 7, 8, 9। अगर आपको 5, 6, 7, 8 आते हैं तो आप उनको सीक्वेंस से 5 आता है, 6 नहीं आता, 7, 8 आते हैं तो स्किप कर दें, 6, 7, 8 करें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपने सीक्वेंस से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेकंड प्रायोरिटी आपकी ये है कि अगर आपको सीक्वेंस से नहीं आते क्वेश्चंस के आंसर्स तो आप देखिए कि आपको सबसे अच्छे से कौन सा आता है, उसको जो आपको सबसे अच्छे से आए उसको आपने फर्स्ट में नहीं करना है।
इसी तरह फिर आपने देखना है आपको सेकंड नंबर पे कौन आता है, आपको थर्ड नेक्स्ट वीक लगना है। जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम भी जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हमें ये होता है कि इस बच्चे ने स्टूडेंट ने सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन उससे सबसे अच्छे से आता होगा वो अटेम्प्ट किया। तो सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट कीजिए, आपको सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे जो उसको आप फर्स्ट पे अटेम्प्ट करें, इसी तरह जो आपको फर्स्ट पे बहुत अच्छे से आता है उसको आप सेकंड पे अटेम्प्ट करें। तो जब एग्जामिनर चेक करेगा उसको वो फर्स्ट पे भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और सेकंड पे जो आप वो आपका वैसे आपको बहुत अच्छे से आता है उसका भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो तब तक एक टेम्पो बन जाता है एग्जामिनर का कि ये स्टूडेंट अच्छा है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप वो करें, तीन क्वेश्चन कुछ क्लासेस में 4 होती हैं, तो उसमें आपने फोर्थ नंबर पे 4 नहीं करना, जो आपको लास्ट में आता है आपने फोर्थ नंबर पे एवरेज करना है। और जब आपको लास्ट में अच्छे से नहीं आता उसको आपने थर्ड नंबर पे अटेम्प्ट करना है। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी बैड राइटिंग है या उससे कटिंग हो जाती है या क्वेश्चन हमारी स्पीड है वो स्लो है या हमें क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा। तो इसमें थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं कि आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, नीट एंड क्लीन आपका पेपर होना चाहिए। राइटिंग इतना मैटर नहीं करती, रीडेबल होना चाहिए। अगर रीडेबल नहीं है तो मार्क्स कटेंगे, रीडेबल है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आपने मेन हेडिंग देनी है, प्रॉपर हेडिंग देनी है, जहाँ हेडिंग मैंडेटरी हो वहाँ देनी है। हर जगह आपने हेडिंग नहीं देनी। इसके अलावा आपने जो गैर ज़रूरी जो स्पेस है वो नहीं छोड़नी। बातों का स्टूडेंट छोड़ देते हैं, दरमियान में जगह छोड़ देते हैं कि हमें बात याद होगा तो हम लिख देंगे, वो बैड इंप्रेशन देता है, बैड इम्पैक्ट देता है हमारे पेपर पे। तो ये नहीं करना। अगर आपको बाद में याद आता है तो बॉक्स बना के साइड पे उसको लिख दें। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कटिंग हो जाती है। कटिंग में बेटा आपने जो जितना क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो गए या आप ये मेरा रॉन्ग आंसर है या ये नहीं लिखना चाहिए था, रिमूवल यूज नहीं करना, आपने उसको रैंडमली इस तरीके से नहीं करना। उसको आपने लाइन लगानी है, उसकी लेफ्ट एंड राइट छोटा सा कट बनाना है और ऊपर उसको क्लोज कर देना है एक और लाइन लगा के। ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको नहीं पढ़ना, ये क्लोज हो तो एग्जामिनर उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिन लगाना है, प्रॉपर मार्जिन लगाना है। आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में कुछ भी होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने आपके होते हैं, राइट साइड पे आपने फर्स्ट मार्जिन लगाना है और ट्रांसलेट करें कि जो आपकी फर्स्ट लाइन में हम खत्म होती है, सेकंड थर्ड और बाकी जितनी भी लाइन्स हैं वो उसी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन आपकी यहाँ खत्म हो रही है दूसरी यहाँ खत्म हो रही है, फिर उसमें एक स्पीड भी होती है। The next point is आपने स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्पीड हमारी स्लो है तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो स्पीड स्लो इसके लिए स्पीड स्लो नहीं की रह जाती है या फिर बच्चे नहीं कर सकते, जिनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करें उसको, ताकि एग्जाम में आप उसको कंपनसेट कर सकें और अपना क्वेश्चन लिख सकें। इसका एक मेथड ये भी है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लास्ट में जो आपकी शीट है लास्ट में उसको रख के वहाँ पे आप पॉइंट्स बनाते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। जब आप एक आउटलाइन बना लेंगे तो आप ओरिजिनल कॉपी पे चले जाएंगे, आपके लिए इतना ईजी रहेगा। तो इस तरह से आपका टाइम बच जाएगा और आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो टॉपर्स में और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये डिफरेंस होता है कि टॉपर्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते
फर्स्टली आप उसको चैप्टर रिकॉल करेंगे, ये किस चैप्टर से है, उसमें एक डिफरेंस और लाइन लगा के वो से डिफरेंस को लाइन लगा के नहीं लिखते, पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं, वो आपका आंसर काउंट नहीं होता। इसके अलावा ये कोशिश करें कि जो डिफरेंस आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3 और 4 डिफरेंसेस लिखते हैं, डिफरेंसेस में भी एक सिमिट्री होनी चाहिए। यू हैव टू मेंशन द रिलेटिव डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप बायोसी में एनर्जी ऑफ इंडिया में डिफरेंस देते हैं, तो देखिए सेल वॉल की कंपोजिशन बता रहे हैं, तो इसके लिए आप सेल वॉल की कंपोजिशन बताएंगे, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहे हैं, जी बात फंगस का भी मोड ऑफ फर्स्ट पे जो रख रहे हैं उसी को आप फर्स्ट पे एलजी का जो रख रहे हैं फंगस का भी करेंगे, इसी तरह से जो पॉइंट रखते हैं फंगस का आंसर पूछ लेते हैं, खत्म हो जाता है। यहाँ पे 9 नंबर के तो ये हमारा आंसर फिर हो चुका है। इसके बाद अपने सेकंड क्वेश्चन पे तो इससे ये होता है कि आपके पर रीडेबल होता है एकदम में, तो टाइम नहीं लगता चेक करने में और इजीली चेक होता है और चीज़ें इजीली डिफरेंशिएट हो जाती हैं। जब आप पेपर कर लें तो उसको पढ़ें, अपनी हैबिट बना लें कि आप खुद नहीं पढ़ेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो एग्जामिनर मिस्टेक्स कर जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपना पेपर पूरा पढ़ें, मैक्सिमम मिस्टेक्स उसमें से निकालने की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा क्लियर हो सके। टू द पॉइंट आंसर करें, जो पूछा जाए सिर्फ उसी का आंसर करें, इररेलेवेंट आंसर नहीं करें, इधर का लिख दिया इधर लिख दिया, तो वो भी वेरिफिकेशन है। उसके बाद आपने मार्कर यूज़ करना है हेडिंग के लिए, ब्लू मार्कर आपने यूज़ करना है। इसके बाद इस सब के बाद आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने तैयारी भी बहुत अच्छी की हुई है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रिपरेशन भी है, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो टाइम तो आपका क्वेश्चन रह जाता है, टाइम को अच्छे से मैनेज करें। अब अगर हमने पेपर से भी बात देख करें तो उसके पेपर के उसका 17 एमसीक्यूज होते हैं, कोशिश करें कि 2 मिनट्स में 1 मिनट आप मार्जिन रखें तो 2 मिनट जितना आप अगर टाइम ज़्यादा अपने माइंड में रखेंगे तो आप उससे भी ज़्यादा रखेंगे, कम टाइम रखेंगे तो वो एवरेज में जाके उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो 17 एमसीक्यूज को कोशिश करें 1 मिनट में एक एमसीक्यूज करें, ज़्यादा करके आपके 20-25 मिनट्स इसमें कंज्यूम होंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन 2 से 8, 3 से आप 6 आपने 6 आपने क्वेश्चन नंबर 4 से करने होते हैं, तो उसमें आप कोशिश करें अपना मार्जिन रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मिनट्स। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका तकरीबन 1 और 10 मिनट्स टाइम लगेगा, तो 20 मिनट्स को 1 और 6 मिनट्स और 1 और 30 मिनट्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखेंगे, आपने यू हैव टू अटेम्प्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन इन 25 मिनट्स। आप 25 मिनट्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप 1 और 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप माइंड में यही रखते हैं कि 40 और 30 मिनट्स में मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी तो वो आपका एंड में टाइम नहीं बचेगा, आपका क्वेश्चन रह जाएगा। तो इस सबके लिए Scientists have found a single-celled microbe that can evolve into a multicellular organism. This breakthrough offers new insights into the origins of complex life. It could help us understand how life transitioned from simple to advanced forms. Stay tuned to Science Hub for more updates. The Earth's core is cooling much faster than scientists previously believed. This unexpected speed could affect tectonic activity and magnetic fields. It raises new questions about Earth's long-term evolution.
Could this hint at a future where the core solidifies sooner than expected? Science continues to unveil the planet's hidden mysteries. Dear students, in this video we will discuss the amazing facts of human kidney, that which function it can perform. The most amazing fact is that it can filter about 120 to 150 quarts of the blood daily. Next point is it can help to remove the waste material. It can regulate the blood pressure. It activates the vitamin D that is important to strengthen our bones. It also helps to produce the red blood cells and can also regulate the process of gluconeogenesis. If we discuss about the gluconeogenesis, it is basically the production of glucose produced as a result of metabolism from the non-precursors, basically the non-hydrated precursors like lactate, glycerol, and various amino acids. Thank you for watching. Stay tuned to Science Hub and subscribe to the channel for more educational content. Biochemistry is an important branch of science concerned with the chemical and physico-chemical processes and substances that occur within living organisms. Now we see the scope of biochemistry.
It has great importance in research and academia. It has great importance in healthcare and pharmaceuticals. It has vast application in agriculture and food sciences. It is very important in biotechnology and forensics. Thank you for watching. Stay tuned to Science Hub and subscribe the channel for more educational content. The discussion topic is an introduction of biochemistry. The question arises here is, what is biochemistry? The word bio means life and chemistry means chemical reactions inside living organisms. Now we talk about elements present in living organisms and their percentage. 65% of oxygen, 18% of carbon, 10% of hydrogen, 3% of nitrogen, 2% of calcium, and 2% of other elements present inside living organisms. Thank you for watching. Stay tuned to Science Hub and subscribe the channel for more educational content. Our topic is about biomolecules. The question here is, what are biomolecules and their percentage? Carbohydrate is about 1 to 5% of body weight. Protein is about 15 to 20% of body weight.